ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಲೈಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ, ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಿರರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಝೂಮ್ ಆಗಿದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿದೆ, ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಮೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬು ಆಮೇಲೆ ಝೂಮ್ ಎರಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಲೋ ಬಳಸಿದ್ರಲ್ಲ ಲಿಂಕ್. ಹಲೋ 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 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸರ್, ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಹಲೋ ಅಬೋರ, ಇದು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಾರ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ದು ಇವತ್ತು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ?
ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಬಂದಿದೆ 4-5 ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು Sir, first time you are coming to this auditorium? Yeah, Directorate of Minorities. ಫ್ಲಾಶ್ ಹೊಸ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೈಟು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೊಸ ಫುಲ್ಪೇಟೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕೊನೆ ಅದು ಓದಿರೋ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನು ಇವ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕು ಹಾಂ नोट भेजूँ उनकी तरफ से ಹೊಸ किसको भेजेंगे मैं किसका सर नಮ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ಕ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಂ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡ PMJVK ಡಿ ವೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ PMJVK DOM और तुम्हें इससे पहले तो आ जाता था सर मेल आई डी है ಝೂಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎರಡು ಲೈವ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಲೈವ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಇದು ಮೇಲ್ ಐ ಟಿ ಎಮ್ ಜೆ ಬಿ ಕೆ ಜೆ ಬಿ ಕೆ ಡಿ ವೈ ಎಮ್ ಸರ್ ಸರ್ ಡಿ ವೈ ಎಮ್ पानी का हमको देना इधर से सामने से लग जाना स्टेज पे पानी में ले लेकर सामने से इनको देना उधर में वो ले लेकर सामने से देना सर इनकेस एडिशनल क्वांटिटी इन्होंने चीफ गेस्ट वो मन से चेयर रहेंगे फर्स्ट ये वो भी खाली होगी तो मन से उठा लेकर ಸಾಮನೆ ಸರಿ ಸರಿ पैसे नहीं नहीं एक बार देख ले ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದ್ಸತಿ ರಕ್ಕಿಂದೆ ಬಂದಿರ ಬುಕ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಬಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಹೊಸ ಟೇಪ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀರಾ सर ये
ಸೊ ಅವಾಗ ಬನ್ನಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಮೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ You can check the YouTube. एक काम करो तुम्हें करो रोजन ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾನು ಹಲೋ 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 ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ
ಸಿರಾಜ್ ಮಿಲ್ಲತ್ತೆ ಕಲ್ಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಲೋ 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 ಶೆಲ್ ಹೋಗಿದೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಕೊಡ್ಸಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಟೆನ್ ಹಲೋ ಹಲೋ
ಹಲೋ ಒಂದಿದೆ ಎರಡು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶೆಲ್ ಹಾಕೋಣ ಆಮೇಲೆ ಹಾಂ जोश मैडम का अलग सोचे वो एक ऐसा हमारा
ನಾಲ್ಕು ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಲೈವ್. ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ತೆಗ್ದ್ಬಿಡಿ ಅದು. ಹಲೋ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಿಶಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 2 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಿರಾತ್, ನಂತರ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ, ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ, ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ ವಕ್ಫ್ ಮತ್ತು ಹಜ್ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಿರಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ನಾನು ಹಾಫಿಜ್ ಸೈಫುಲ್ ಅವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಫಿಜ್ ಸೈಫುಲ್ಲಾ. ಈಗ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಖಾದರ್ ಶಾ ಅವರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ. Honorable distinguished guest in dais, ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ
ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಒತ್ತಾಸೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಆದಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎ. ಸಲೀಂ ಸಾಹೇಬರು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಆನರೇಬಲ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆನರೇಬಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎ. ಸಲೀಂ ಸಾಹೇಬರು. ಸರ್, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ ಸರ್. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಈ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಸರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೂರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಡಿಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ ಮೌಲಾನಾ ಎನ್.ಕೆ.ಎಂ. ಶಾಫಿ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಜನಾಬ್ ಅನೀಸ್ ಕುಟ್ಟಿ, ರಿನೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನೀಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ದ things in these days. I will welcome you, sir. Another resource person, Major General K. Arjun Namuttan, ex-director, Karnataka Police, Terrorism Controlling Center and renowned author of Defense magazine. Sir, I will welcome you, sir. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಗಳಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಖಾನ್ ಪರ್ವೇಜ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಅವರನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಉಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರು ಏನೋ ನಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ 1981-82 ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ CET ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ತನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿವೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಶಿಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಡ್ರಗ್ಸ್ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಜಾ, ವೀಲಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಒಂದು ರೂಢಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಿಶೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ನಾಳಿನ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ನಾಳಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಲೀಂ ಸಾಹೇಬರು ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ದೇವರು ಯಶಸ್ಸು ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ MA ಸಲೀಂ IPS, ಅಡಿಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಇವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. In the name of Almighty, the most benevolent and merciful, good morning everybody. Today's chief guest and my dear friend Major General K. Arjun Mutarna sir, Chairman of the Wakf Board, Janab Maulana Shafi Saadi Sahab, Janab Sarfaraz Khan Sahab, Resource Person Shri Anish Kutti, and CEO of Wakf Board, Janab Parvez Khan Sahab, dignitaries and my dear young friends. First of all, it gives me immense pleasure to be here among so many young persons, that to a function organized by Karnataka Wakf Board, because I had a little association with Wakf Board when I was administrator of the Wakf Board way back in the year 2009-10. And also another way of happiness for me is the paradigm shift in the thinking of Wakf Board itself. Because generally Wakf Board, the moment of the word Wakf Board comes into the mind, it connotes management of mosques, management of mutawallis, dargahs, and all other properties, property disputes, encroachments, and so many other things. But for the first time, certain positive efforts are being made now.
which is a very, very welcome step, which should have been done very long back, is the development of the community and bringing them to the mainstream of the society. That is, I can say, that should be the main goal. And I hope these steps what has been taken now, particularly by the enlightened officials of the Wakf board, particularly Mr. Parvez Khan and his team, will definitely go a long way in developing some sort of insight into the modern thinking, as well as the way forward for most of the communities to have streamlined and also to merge with the common mainstream. And now coming to the subject today, that is the entry into uniform services. I don't call it as defense services, I call it as uniform services, because there are many different type of uniform services. Defense services is one, we have the paramilitary services, then the state police services, particularly the Karnataka state police, and also so many other semi police organizations which give or which provide good career opportunities for young people. Now, before I dwell on this, I would just like to ask a question to the young people here. You know, what is the purpose of life? Why we are living, or why we are striving, or why we are working, or why we are studying? Why we are working, or why we are studying? What is the purpose? Why? Can anybody answer this? Particularly young people on the other side, or the young girls. What is the purpose of life? ಅಥವಾ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? Sir, hello. Sir, the purpose of living the life is achieving your goals. First, we should set a goal in our life. First goal must be clear in your life, and you should follow by passion. Goals means it can be different, related to health or related to career. These two options are important. We should not go in the wrong direction. The direction should be straight and forward, sir. According to me, the life is what is my life purpose is I should follow my goals, sir. Okay, following goals or making goals and living up to those, to achieve those goals is what you are saying. Okay, little closer. Okay, any other person? Yeah, good. About education, if we learn something, we can gain knowledge, and that will help in our future. Education will give knowledge and confidence to our life, our person, one person. Yeah, to get education. Okay. Any other viewpoint? Different? We should do in our life, we should do goal. Great, excellent. Thank you. I appreciate. No, that's how one should get into or shed the stage fear, or I can say public speaking should come. It's like that. Okay, good. Okay. Okay, all right then. Good attempt has been made. But I personally believe that the purpose of life, or our endeavor, or our
entire activity should be to make this world a better place to live. That is, generally, everybody works, everybody is working hard, so many things are happening. But actually, ultimately, it is to make this world a better place to live. And also, individually, if you take, it should be for the pursuit of happiness. What we do is for our happiness. That is the ultimate goal of life. That we should be happy. We should live happily and make this world a better place to live. Because since time immemorial, I can say right from the Stone Ages, man has been struggling hard to make this world a better place. So much hard work has gone into that. Many people have done a lot of sacrifices, lot of hard work, with lot of commitment. That is the reason why today we have a reasonably good life. I can say comfortable life. Okay, just imagine 100 years back or 200 years back how the life was. It was not so easy. But our life is very easy comparatively. You can see today we are in the air-conditioned hall with light, with mic, with all these things. Somebody has done a lot of sacrifices to invent this. A lot of hard work has gone into that. Okay, and because of our foregone people who have done this, today our life is comfortable. Our life is much better. And now it is our duty to make sure that we make this world a much better place for the next generation, the people who are going to come next. So that is the ultimate purpose of life. That is why we are all working, we are all studying, our entire human activities, our endeavors are basically towards that. So to achieve these things, one has to develop, one has to grow. Okay, individually a person has to contribute, then he has to grow, he has to develop. That happens through lot of things. Education, building a good or great character and great personality. That is very important. How to education? Okay, education is nothing but knowledge, getting knowledge. But at the same time, one should also have a strong personality and strong character. Then only you can make a difference. Okay, so strong personality or strong character comes through you can say a bunch of great human qualities which you have to imbibe and acquire. And some of those qualities are basically integrity. That is financial integrity, moral integrity, intellectual integrity. Then belief in right values, truthfulness, okay, moral courage. So these are some of the human qualities which makes a strong character, which ultimately results in you becoming or you acquiring a strong personality, which you can make a difference. Because if you want to make a difference in this society and this world, then you should have a strong personality. And towards that, okay, one is education, second is going for a career, choosing a career. Now, as far as choosing a career is concerned, now is the main focus. What should be the career? Where you can aspire to change this world and your own goals, your own pursuit of happiness you can acquire. And generally, I always advocate my service, that is civil services. That is my generally, I always advocate young generation or young people to go for civil services, or take civil service examinations, particularly the UPSC for IAS or IPS, or KPSC also for other state services. So these should be the priority. And secondly, if you want to have, you can say, a good disciplined life, then uniform services are the next option. Uniform services, particularly defense services. Defense services, I think Major General Muthanna, who has served the
Indian Army for such a long time, he will be speaking on that, and he will be dwelling more on what are the modes of entry into defense services. Then the second thing is paramilitary services, like we have got a lot of central paramilitary forces like CRPF, BSF, ITBP, CASF, and so many. We have almost 10 different central paramilitary forces. And lastly is our state police, Karnataka state police, which currently I am part of the Karnataka state police. So these are the different uniform services where you can choose as a career. Particularly if you want to be a police officer, then there are 4 different levels of entry are there. One is of course civil service only through IPS. If you pass or if you get through the UPSC examination and if you opt for IPS, then you will be an IPS officer. That is the one level of entry. The secondly is through Karnataka State Civil Services exams, that is DYSP rank. That is through DSP you can join, and after that you will get promotion into IPS, and you will continue your career there. And third level of entry is the sub-inspector. Graduation is minimum qualification for that. Even for KPSC and UPSC, for IPS and direct KSPS also it is graduation only. Only thing is the level of examination will be different. Whereas PSA examination is, in PSA also you have a lot of civil police also is there, armed police, KSRP, KSISF, different organizations are there within the state police. So you can opt for any of these. And lastly is for police constable, which is PUC is the qualification for civil police, and SSLC is for the armed police. So this is the 4th level of entry, and any of these levels or any of these entry levels you can enter the state police. And it is one of the most challenging, I can say, challenging careers, because not only challenging career, but at the same time lot of, I can say, satisfactory, personally if you take, personally will be a lot of satisfying careers, I can say, to most of the people, because generally police is generally seen as a armed or the arm of the government, and also visible arm of the government, because generally it is the police which is mostly visible. Many times, other departments or other services, generally people are not visible. Many times, you have to go to those offices, then only they will come to know that there is such a certain department is there, some type of officers are there. But in police, it's not like that. You will be seen everywhere. And also, police generally, in every man's life, in every person's even day-to-day affairs also, many times police play a very important role, because the enforcement of laws or the implementation of laws is vested with the police department, and it is one of the most important arm of the criminal justice system. So that is the reason why police, once you are in there, if you are really want to do something for the society or for the can say for the state or for your city or for the environment in which you live, then police job is the best job, because there generally many people may be have that old type of thinking that policeman, in Urdu they used to say police wale ki na dosti achhi na dushmani achhi. Okay, so be away from police because of the I can say colonial mindset, because we were ruled by the British colonists, and they made a police force, a brutal police force, so that to perpetuate their own rule. That is the reason why police was very, very brutal or not very people friendly before 1947. But after 1947, after the independence, police is nothing but a service to the society. From the citizens only police force come, and they serve the society to protect the society, safeguard the society. That is the job. So protecting and safeguarding the people is, I can say, one of the most noble job, I can say, for the society as well as for every citizen. So choosing police as a career will be very exciting also. And most important thing is you will be, I can say, it is one of the well-paid jobs. In fact, even a police constable draws about 35,000 rupees per month in
the first salary itself will be 35,000 rupees per month in Bangalore city. In fact, I don't think even an engineer also will be getting so much emoluments at the beginning of service or the first year of his service. Okay, so that way the salary part and the compensation part is also quite good, and also you are taken care of very well also. And the most important part of or the most exciting or adventurous part of police service is that you will be given good 2 years training. One of the best trainings I can say, though it may not be so good compared to armed forces, but still for your fitness, for your physical fitness, for your discipline in life, that 2 years training will be really good, and you will be doing all what you want to. Some people maybe have some fantasies. Okay, some fantasies like I should do horse riding, I should do swimming and rock climbing. So many things. People have a lot of fantasies, but if you are a police officer, then these are things are part of your job itself, part of your training. You will get all these things: swimming, horse riding, and many other adventurous things. Okay, so that way people, particularly youngsters who want a very exciting career or who want to excel in physical activities, I think those 2 years training will take care of all your requirements. So kindly give a thought, though the CEO in the beginning itself was mentioning that our children are mostly going towards medical or engineering courses. Okay, of course, be a doctor also, be an engineer also, and as an engineer you can join police in the police force, sub inspector or DYSP or an IPS. Even medical students who have passed MBBS also can apply, and they can also join these armed forces. So with this, I feel that particularly there is a need to create an awareness in the particularly young people to join these forces. I think towards this end, what Wakf board have started today, the first step, I think is very commendable, and I hope that this will go a long way in creating good awareness, particularly among the minority community, that they should also be part of the uniform services, particularly in the police services or in the armed forces, and definitely they can serve the nation in a much better way. So thank you very much. Once again, I thank the Wakf board officials for inviting me here and giving me an opportunity to interact with you. Thank you very much. Thank you very much, sir. All of Karnataka admire you. I am sure all the students will take up your guidance and suggestions, and definitely they will come up in uniforms, inshallah. Moving on, I invite Shri Sarfaraz Khan, KCAS, Director Cooperative Audit Department, to share his views to this program. Thank you. Assalamu alaikum. Namaskara. It's a privilege to be here this morning. Honorable M.A. Salim Sahab, Special Police Commissioner, Bangalore City Traffic, Janab Maulana Shafi Sadi Sahab, Major General Sahab, Janab Parvez Khan Sahab, Janab Anis Kuti Sahab, CLO साहब जो भी यहाँ मौजूद हैं, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू से दैट जैसे सलीम साहब ने कहा कि वक्फ बोर्ड जो है ये प्रोग्राम पहले ही करना था, क्योंकि वक्फ बोर्ड में सिर्फ हम लोग कमिटीज़ फॉर्म करना, कमिटीज़ डिसॉल्व करना और जो डर्टी लेनिन जो है वो पब्लिक में वॉश करना ही करते आए हैं। वक्फ बोर्ड जो है बहुत ही बेहतरीन काम कर सकता है, तो हमारे परवेज़ खान साहब ने भी एक रास्ता दिखाया कि वक्फ बोर्ड में ये भी काम हो सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों को पहली चीज़ क्या है कि एजुकेशन में आना बहुत ज़रूरी है।
हमारे कम्युनिटी में चेंज आया सर सैयद अहमद खान साहब के ज़माने में, जो हमारे में जो ब्लाइंड बिलीफ्स थी वगैरह सब निकाल के उन्होंने मुस्लिम्स को मेन स्ट्रीम में उस ज़माने में लाया था। तो आज बहुत ज़रूरी है कि हम लोग मेन स्ट्रीम में आए। हम लोगों को मेन स्ट्रीम में आने के लिए एजुकेशन और सर्विसेज में जमना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल केरला स्टेट का देता हूँ मैं, जहाँ पर पुलिस फोर्स में काफ़ी मुस्लिम ऑफिसर्स हैं। मैं बोल रहा हूँ कांस्टेबलरी और द लेवल ऑफ सब इंस्पेक्टर्स में। गवर्नमेंट सर्विस में भी बहुत से लोग हैं। हमारे में एक एटीट्यूड क्या है कि हम लोग कैसे, अरे मैं इतना कमा लेता हूँ, उन्हें सब महीने क्या कमाता, गवर्नमेंट में तुम्हें कितना कमाती, उन्हें कितना कमाती। दिस इज नॉट अबाउट कमाने की बात नहीं है। यहाँ पर हमारा देश बढ़ाना है, देश को तंदुरुस्त करना है, देश को स्ट्रेंथन करना है। तो आप भी, हम लोग भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसके लिए। देश ये हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी कर्मभूमि है। हम यहाँ ही रहेंगे, यहीं मरेंगे। तो हमारे देश का जो यहाँ पर जो देश का जो हम लोगों को इस देश में और स्ट्रांगली और इज्जत से जीना है, तो हमको मेन स्ट्रीम में आना है। मेन स्ट्रीम में आना है क्या, एजुकेशन में आना है, सर्विसेज में आना है। हम देखते हैं कि हम जब व्हेन आई वाज एडिशनल कमिश्नर सिटी में, तो देखता हूँ कि वो स्पेशली टैनरी रोड में आप जाओ, रॉन्ग साइड में टोपी लगाए हैं, 4 बच्चे पीछे बैठे हैं सामने, कोई ट्रैफिक का कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला रोकता है तो उससे झगड़ा करते हैं। ये एटीट्यूड जाना चाहिए। ये किससे जाएगा, एजुकेशन से जाएगा। जैसे कि जब गंदगी लगती है तो दिमाग गंदगी को लगती है, अच्छी चीज को नहीं लगती। तो जब आप साफ सुथरे रहेंगे तो गंदगी आपको नहीं लगेगी बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं, सलीम साहब ने कंप्लीट डिटेल्स आपको बताया है कि सर्विसेज किस तरह से जाना है, कहां करना है। तो मेरी आजीजाना गुजारिश है कि आप लोग पढ़ें, अच्छा पढ़ें, सर्विसेज में आएँ, डिफेंस सर्विसेज में आएँ। और मैं मुतना साहब हैं यहाँ पर, उनकी स्मॉल कम्युनिटी के बारे में कहता हूँ कि हर आदमी वहाँ पर चाहता है कि मैं सिपाही बनूँ। आगे जाके बनता है नहीं है दूसरी बात है, लेकिन जब हर कुर्गी को देखिए आप, वो सिपाही की तरह काम करता है, देश के लिए काम करता है। हम लोग भी काम करते हैं। हम लोगों को दिखाना नहीं आता, हम लोगों को दिखाना नहीं आता। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेहरबानी करके अच्छा पढ़ें, देश की शक्ति बने, ताकत बने। इतना कहते हुए मैं मेरी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटक। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಐ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಅವರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀ ಶಾಫಿ ಸಾದಿ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ मुरसलीन. कन्नड़ा में बात करें तो सभी हमारा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं ना, कन्नड़ा में बात करें तो। उर्दू में बात करना है क्या, कन्नड़ा में 2 अल्फाज है, ज़्यादा नहीं बात कर। तो इधर तो ट्रेनिंग चल रहा है, इसलिए ट्रेनिंग को ज़्यादा टाइम देना है हमें। स्पीच का तो जगह भी नहीं है। इंशाल्लाह शाम को हमारा प्रोग्राम है, उसमें स्पीच भी करेंगे। एक 2-3 मिनट में कन्नड़ा में बात करें तो उर्दू में बात करना है क्या? ನೋ ಓಕೆ, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಕೇಳಿದರು, ಈ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕನ್ನಡ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ IAS ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋದೇನಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು TV9 ಮುತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದೇ ಮದ್ರಸದ ವಿಚಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಉತುಲುಬುಲ್ ಇಲ್ಮ ವಲೌ ಬಿಸ್ಸೀನ್. ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಹೋದಾದರೂ ಆ ಚೈನಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೀನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹುಜೂರ್ ಅಕ್ರಮ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಅರಬಿ ಎರಡು, ಅರಬಿಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮಕ್ಕಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏನು ಅಂತ ಮತ್ತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಲೀಂ ಅವರು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಲೀಂ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು
2 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, IPS ಆಫೀಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ADGP ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರುವವರು ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಸಲೀಂ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ನಾವು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಏಕೆಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದು ಈಗ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ MA ಸಲೀಂ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಮಾಗಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ IPS ಆಫೀಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು 90 ಲಕ್ಷ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದ್ದರೂ ಒಬ್ಬ ADGP ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರುವಂಥ IPS ಆಫೀಸರ್ ಈ ಸಲೀಂ ಸಾಹೇಬರು ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ 32 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ IPS ಆಫೀಸರು ಸಲೀಂ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂದರೆ ADGP ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂಥವರು ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 32 ವರ್ಷಗಳು ಕಾಯಬೇಕು. ಅಬ್ದುಲ್ ಅಹದ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರವರೇ, ಹಾಫೀಸು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಫೀಸು ಹೌದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ CCB ಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅದು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ಪ್ರೀತಿಯ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರೋದು, ನಮ್ಮ CO ಅವರು 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿ, ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ IPS ಸಲೀಂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಈ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರವರು, ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ಗಳವರು. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ದೊಡ್ಡ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ, ನಮ್ಮ CO ಅವರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಾಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮದರಸ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಲಿಯುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಸ್ಲಾಂ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೋಲ್ ಏನು ಅಂತ, ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಲಾಷೆ ಏನು ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಲಾಷೆ ಏನು? ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಲಾಷೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು, ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿರುತ್ತೆ. IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಫೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. CO ಸಾಹೇಬರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ CETಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ. ನನ್ನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 22 ಮಂದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. 22 ಮಂದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಲಿತಂತ ಮಕ್ಕಳು. ಈಗಲೂ ಅವರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕತರ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಬೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಯಾರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿನೇ 30,000 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ, ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಕುಲ್ ರಬ್ಬಿ ಜಿದಿನಿ ಇಲ್ಮಾ, ಹುಜೂರ್ ಅಕ್ರಮ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಓ ಪ್ರವಾದಿಗಳೇ, ರಬ್ಬಿ ಜಿದಿನಿ ಇಲ್ಮಾ, ನೀ ನನಗೆ ಇಲ್ಮನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಡು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು ದುವಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹುಜೂರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಹುಜೂರ್ ಅಕ್ರಮ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ का ज्यादा इल्म का जरूरत है क्या? फिर भी अल्लाह ने बता रहे, इरशाद फरमाते ದುವಾ ಕರೋ ರಬ್ಬಿ ಜಿದಿನಿ ಇಲ್ಮಾ, ಇಲ್ಮ್ ಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಲಿಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ. ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕಲಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ CO ಸಾಹೇಬರು ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು CO ಮತ್ತು ACO ಸಮೇತವಿರುವ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನನಗೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. CO ಸಾಹೇಬರು 1 ವಾರದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಇದು ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಮು ಬೇಕು. ಕುಲ್ ಹಲ್ ಯಸ್ತವಿಲ್ಲದೀನ ಯಅಲಮೂನ ವಲ್ಲದೀನ ಲಾ ಯಅಲಮೂನ್.
ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಕುಲ್, ಓ ಪ್ರವಾದಿಗಳೇ, ಹಲ್ ಯಸ್ತವಿಲ್ಲದೀನ ಯಾಲಮೂನ ವಲ್ಲದೀನ ಲ ಯಾಲಮೂನ್, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿ, ಇಲ್ಮ್ ಇರುವವನು ಆಲಿಮ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಹಿಲ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದವರು ಅವರು ಸಮಾನರೇ? ಅಲ್ಲಾಹನೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ಸಮಾನರಿಲ್ಲ. ಯರ್ಫೈಲ್ಲಾಹುಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಮಿಂಕುಂ ವಲ್ಲದೀನ ಊತುಲ್ ಇಲ್ಮ ದರಜಾತ್. ಅಲ್ಲಾಹನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಬರೇ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾಹನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇಜರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಜರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ അനീസ് കുട്ടി സോറി, ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കന്നഡ മനസ്സിലാവല്ലോ, മലയാളിയാണ്. ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಸಾಬ್, ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ನಾವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಇದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವರಿಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೀಸ್ ಕುಟ್ಟಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೇರಳದವರು, ಬೊಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಗರ್ ಅವರು. ഈ ಯಾವುದು ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ತುಂಬಾ നിസ്സീബರು. അനീസ് കുട്ടി ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ 2 മിനിറ്റ് ഞാൻ കന്നഡയിൽ സംസാരിക്കാം. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕು. ತಲಬುಲ್ ಇಲ್ಮಿ ಫರೀಲತುನ್ ಅಲಾ ಕುಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮಿನ್ ವ ಮುಸ್ಲಿಮಾತ್. ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಫರ್ಜ್, ಅದು ಲಾಜಿಮ್. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಂಬ ಭೇದಭಾವವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೈನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾದರೂ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಆವತ್ತು ಚೈನಾ ತುಂಬಾ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿತ್ತು, ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟಗಳು. ಆವತ್ತು 1400 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಚೈನಾಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಚೈನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿಬಹುದು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ. ಯಾವತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಲ್ಲಿ, ಹದೀಸಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಇಲ್ಮ್, ದೀನಿ ಇಲ್ಮ್ और ये दुनियावी इल्म अलग अलग करके काबी नहीं देख सकते. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ನೀವು ಇಲ್ಮ್, ಇಮಾಮ್ ಗಜಾಲಿ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು. ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇಮಾಮ್ ಗಜಾಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವುದು. ಅಬು ಸೀನಾ ಯಾರು? ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಇಸ್ಲಾಂ ಯಾವತ್ತು ಏನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೌಕಿಕ ಎಂಬ ಎರಡು ಭೇದಭಾವ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಪೇನ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ. ಈ ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಬ್ಬರಗಾಗಿಸುವಂತಹ ಈ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ತಾರಿಕ್ ಇಬ್ನ್ ಜಿಯಾದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ತಾಬಿ ಆದಂತಹ ತಾರಿಕ್ ಇಬ್ನ್ ಜಿಯಾದ್ ಮತ್ತು 12 ಸಂಗಡಿಗರು ಸ್ಪೇನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೇನಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಬಂದಂತಹ ಹಡಗನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ನಂತರ ತಾರಿಕ್ ಇಬ್ನ್ ಜಿಯಾದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹಡಗನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಶತ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಐನಲ್ ಮಫರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಭಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ವೈನ ವರಾಕುಮುಲ್ ಅದುವು, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುವಿದ್ದಾನೆ. ವೈನ ಅಮಾಮಕುಮುಲ್ ಬಹರ್, ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರವಿದೆ. ಆ ಕಡೆನೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂದೆಯೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೇನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 12 ಮಂದಿಯಿಂದ ಆ ಸ್ಪೇನ್ ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ತಾರಿಕ್ ಇಬ್ನ್ ಜಿಯಾದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ. ಅಲ್ಲಾಮಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರು ಅವರ ಹೃದಯವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏ ಗುಲಿಸ್ತಾನ್ ಉಂದುಲುಸ್ ಓ ದಿನ್ ಹೇ ಯಾದ್ ತುಜ್ಕೋ ನ ತೇರಿ ಡಾಲಿಯೋ ಪರ್ ಜಬ್ ಆಶಿಯಾನ್ ಹಮಾರ. ಓ ಸ್ಪೇನ್ ಎಂಬ ಹೂದೋಟವೇ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು. 800 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಆಳಿದಂತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಕುರ್ತುಬಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೇನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ಪೇನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಮುಸಲ್ಮಾನರು. ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ
ಒಗ್ಗೂಡಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತರಬೇತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. बहुत और से आप बैठना सुनना. हमारा लीडर्स जो बता रहे ट्रेनिंग मेजर भी है और अनीस कुट्टी भी है, इंशाअल्लाह उन्होंने आपको ट्रेनिंग देंगे. आप ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮಡಿಬೇಕಾದವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗಾಗಿ. ಈ ನಮ್ಮ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಹುಬ್ಬುಲ್ ವತನಿ ಮಿನಲ್ ಈಮಾನ್, ಪೈಗಂಬರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದು. ನಿನಗೆ ಸ್ವರಾಜ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಈಮಾನ್ ಒಂದು ಭಾಗ. ನಮ್ಮ ಈಮಾನ್ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಾ ಮದೀನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಾದಂತಹ ಭಾರತವೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು ಅದು ನಮ್ಮ ಫರಜ್, ಅದು ಲಾಜಿಮ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಡತಿ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾನೇ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ಬೇಕು, ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಈಮಾನಿನ ಭಾಗ. ಇಸ್ಲಾಂ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಅದು. ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದೆ, ವಿಷಾದಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಷಾದನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಿಒ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ವಾಖಿರು ದಾವಾನ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ MA ಸಲೀಂ IPS ರವರು ಮತ್ತು IPS ರವರು ಅವರ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಬೀನಾ CAO ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಭೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. MA ಸಲೀಂ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಸರ್ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯು ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಸರ್. Major General Arjun Muttanna, a second generation military officer, is an alumnus of Sainik School, Bijapur and Government College, Mangalore. He joined Indian Army Military Academy, Dehradun as a NCC entry candidate and was commissioned in the Garhwal Rifles in 1978. He belongs to the illustrious Kodandera family, which produced the nation's iconic military leaders like Field Marshal K.M. Karyappa and General K.S. Timmayya. He has been deployed in key border and insurgency terrorism affected areas such as Manipur, Jammu, Ladakh, Kashmir, Arunachal Pradesh, and was deployed in Jaffna as a part of IPKF. He was a head of operation and training in the Indian military training team in Bhutan. As Director of Foreign Training and Cooperation at the Army Headquarters, he was instrumental in giving flip to myriad international bilateral relations. He has visited Myanmar, France, Tajikistan, Sri Lanka, Kazakhstan, Thailand,
Russia as part of his duties. His academic qualification includes MSc and MPhil in Defense Studies. As a senior research fellow at United Services Institution of India, New Delhi in 2004-2005, his research work was published as a book titled Enabling Military-to-Military Cooperation as a Foreign Policy Tool, Option for India. Major General Muttanna was deputed to his home state, Karnataka, to enhance the counter-terror capabilities and set up a state police center for counter-terrorism and its counter-terror response force, Garuda Force, in 2010-11. He retired in May 2016 as additional DG of NCC for the state Bihar and Jharkhand. He is currently Director HR and Training of Trident Automobiles in Bangalore. As a Managing Trustee of Kodagu Educational and Social Service Trust, he is actively involved in improving opportunities for and condition of needy children and the families, and creating awareness and facilitating career options in defense and government for youth of his home district, Kodagu in Karnataka. In 2022, he also published 5 books, which are compilation of personal accounts of IPKF veterans titled How the Wind Blew, Operation Pavan, Valiant Were Their Deeds, Operation Pavan, IPKF and Undying Be Their Memories, Operation Pavan, The Brave Hearts of IPKF, Operation Pavan, For the Honor of India, IPKF, Operation Pavan. He has been awarded with Sena Medal for his distinguished services as Brigade Commander of the Rashtriya Rifles Brigade in Northern Kashmir. His military professional of over 37 years experience with varied experience beyond regular military exposures. It is an honor to have you here, sir. Thank you very much, sir. Now, I hand over this program to guide your very professional experience and guidance to our student community so that they can excel in their life. Yeah, Mike. Sir, will you be here or sir, you want a mic, sir? The PowerPoint. Color me kodla. Good morning, or should I say? Yeah, good afternoon, everybody. Interested, bored, gone to sleep, or full of energy? I will keep my talk. I'll try and keep it short. There's a lot of information. I will speak in a combination of Kannada, Hindi, and English. The aim is to keep it short so that if you have question answers, you can try and you can ask me question answers. My number is with Madam Sabina. Anyone wishes to contact me, any parent, any child wishes to contact me anytime, please feel free to give me a call, drop me a text or give me a call. If I can't answer your call, I will definitely return your call, whether boys or girls, feel free. I have a presentation and I will request, what's your name? Sagar. Sagar to put it on. Hello, PowerPoint. So डॉक्टर सलीम ने बताया था कि वह आईपीएस ज्वाइन करना है, गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करना है तो आपको सिविल सर्विसेज में जाना है. तो फिर मेरे लेक्चर या टॉक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया आपको कि भाई आप सिर्फ यूपीएससी के लिए ट्राई कीजिए. लेकिन डिफरेंस है.
There is a difference how you work. UPSC में आप जाओगे तो normally you get your designated state cadre, which could be any cadre, may not be your home state. You get a chance to go and do a deputation in your home state also. And normally you are stuck between that, your cadre state and your home state. But if you join a central force, whether it is the Indian Army, Indian Air Force or Indian Navy or any other force like the paramilitary forces, Central Armed Police Forces, you get to travel all over India. So my luck, other than Gujarat, I have seen all the states of Karnataka. I have served in all the states, I have gone to all the states. And normally I don't put the countries I visited, but I purposely put it here to show you what opportunities the Indian Defence Forces give you, where I get a chance to travel globally at government cost, at no cost to myself, and I get to see different countries, visit and meet different people. So whether it is from the Gurez Valley of Kashmir or from the Tawang Valley of Arunachal Pradesh or from the streets of Jaffna, I have made friends everywhere. I have gone, visited people, because as defense officers, it is not that you are always fighting people. It is not that, though we are fighting some people, bad people, but we have made excellent friends, very good friends. So I have served in Gurez, I have served in Kargil, I have served in Ladakh, I have served in Tawang, I have served in Assam, I have served in Manipur, and of course so many other places in between. So this is a great opportunity that the government gives you, all at cost to the government and not at cost to yourself. So I'll just start this presentation. Can you minimize this screen? You don't need my screen on this, no? No, only PPT is enough. You don't need that. Thank you. I have about 64 slides, so you can see the slide numbers here. So please keep track. I'll try and be fast. So as I say, it is a passion, it is a profession, it is a passion. We don't call it a job. Why I'm saying it's a passion is you're aspiring to join the military, whether it is as a Jawan or as an officer. You are going to be part of a team that will sweat with you, that will bleed with you, and that will be by your side for every minute of your life. I'm going to talk like this. I'm going to give you a brief introduction to the armed forces, what is very broadly, and why do you want to have a career in the armed forces, what are the types of entry. Anis Kuti, of course, Mr. Anis Kuti will go into greater detail, because I was just seeing his card. He covers all types of entries. Some preparation in which I will not focus on the written examination, because that Mr. Anis Kuti will do, and then we will have a question answer session. So as Dr. Salim said, we have the armed forces. These are under the Ministry of Defence, central government, and you have the Central Armed Police Forces, which are under the Ministry of Home Affairs. There is an entry system into both these, and they are different. You cannot apply for one exam for both. Bere system ide, bere ranks ge entry level ide. For example, IPS ge there is a different exam. If you want to join as a direct assistant commandant in any one of these forces, there is a separate UPSC exam. If you want to join as a constable or as a sub-inspector, there is a separate the SSC exam, what they call. So there is a lot of examinations. As Mr. Parvez said, there are 17 ways of joining defense forces, different exams. So you must understand this difference. The basic thing is these forces are generally known as police forces. They are always wearing khaki uniform, whereas the central forces will be wearing a different colored uniform, which is to identify the difference. What is the major difference? Defense ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. I am not authorized by law to operate in any place other than the border. That responsibility is only that of the police, and that is why the police wears a different uniform. They wear a khaki uniform. They work for the people, with the people. In defense, you normally work on the borders to protect the country.
in case you are expected to go and work in terrorism affected area, the local government or the district administration declares that area is disturbed. Why I am saying disturbed is, they say the police cannot handle it. They cannot handle the violence that is going on. So they declare the area disturbed, and then the army comes in to operate in that area. So today you have an area like Chhattisgarh, or you have an area like Jharkhand, some areas where you have a lot of Naxal problem. In that area the government says there is violence, but it is at a level which the police forces are able to manage, so the army has not been brought into those areas. But certain other areas, whether it is northeast, that is Nagaland, not Nagaland so much, but Manipur or Tripura, some parts of Assam, some parts of Jammu Kashmir, is where they feel that the level of violence is so much that the police cannot handle it, so you operate. Otherwise, normally you do not operate in these areas. You are supposed to be protecting your borders and training for the rest of the time. So normally in the army what happens, you do 2 years on the border, maybe Siachen Glacier or any other place, and then you come down to an area where you do again some more training, and again after you get after another 2 years you again go back to a border area. So it is normal tenure is border, peace, you keep doing that alternatively. So I'll just talk about Indian Army. Anyone recognizes this photo? Kargil, yes, and this was from my unit only. I was not there, but this is from my unit. Very brave soldiers. So the army is divided into combat arms. Infantry, I am from the infantry, and you have armored corps, you have other support arms, and you all get, everyone gets a chance. You can select an arm or you will be allotted an arm, you go and work in this. And you have these services which give you logistic support. Supplies will give you ration, food, ordnance will give you ammunition, clothing, repair and maintenance will do all your vehicle repair. I mean, the name is not repair maintenance. We have electronics and mechanical engineers. They do your support for your vehicle, or your weapon is damaged, they will repair your weapon, repair your vehicle, repair your any computers, any equipment that is there. And of course you have the medical force. And generally this is how the structure of the army is. The most important person is here or here. Who is most important? Chief of Army Staff or the Jawan? Why? Boss man is always important, no? Who is most important in the school? Principal or student? Good, very right. So this is how the structure of the army is. We have a chief army headquarters, we have a chief of army staff. Under him there are 5 commands, northern, eastern, different. Under each command is a very senior lieutenant general. He has got 2 to 3 corps, they call it. CORPS is pronounced as corps. So each corps will have about maybe about nearly 1 lakh soldiers approximately. Then under that is a corps. Under the corps he has divisions, and under that each division will have about 20,000 troops, different type of troops, 20,000 troops. And under the division you have a brigade which has some battalions. Under the battalion you have companies, and finally you come down to a Jawan. But this changes, so I am not going to confuse you, because once you come into it, if you see it, there is a lot more that is there. This is the infantry battalions, just to show you how our battalions were. The one in yellow is my regiment. We are now 100 and how many years? Anyone do the math? 1887 to 25 years. Here, 1887, 1987, 100 years plus 135 years. Oh, or Dr. Anis Kuti is a mathematician. So we have different regiments. The newest regiment, as you can see, is Sikkim Scouts, which is based in Sikkim. Though their headquarters are, for now they are in Lucknow, but they will also shift to that area later on. So there are different regiments. The nomenclature in defense काफ़ी अलग अलग हो जाता है, तो उसमें मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि इन्फेंट्री में हम रेजिमेंट बोलते हैं, लेकिन बटालियन भी बोलते हैं, आर्टिलरी में हम रेजिमेंट बोलते हैं, आर्मर्ड कोर में कुछ और बोलते हैं, तो उसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है. लेकिन आपका अगर कोई रिश्तेदार है फौज में, उनसे पूछिए कि भाई आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, उसमें पता चलेगा
जैसे when I was in service, when I was serving in Gadwal Rifle, so my address was that time Colonel Mutanna, 12 Gadwal Rifles, care of 56 APO. तो उसमें क्या यूनिट कौन सा है? 12 Gadwal Rifles. एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, care of 56 APO. 56 APO मतलब एनीवन, आर्मी पोस्ट ऑफिस. तो आप कहीं भी हो इंडिया में, उसमें आप 56 APO लिख दो, चिट्ठी पहुंच जाता है हमारे पास. Navy is divided into different branches. Executive branch, engineering, electrical, education, medical. इसमें इंजीनियरिंग, जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनता है, अगर बड़ा पोस्ट में जाना चाहते हैं तो यू शुड बी ज्वाइनिंग द एग्जीक्यूटिव ब्रांच. Engineering branch very important, electrical branch also important, because on a ship, if you don't have engineering and electrical, the ship will not move. But who is the man who controls it? It is the captain of the ship. Captain will be from the executive branch. So you have in the Air Force also, you have flying branch, technical branch and ground duties branch. Very broadly I am saying. So here also, if you want to be boss man in Air Force, you have to be from the flying branch. Pilots. Pilots are the most important people in the Air Force. So why do you want to join the army? Dr. Salim said you can make a difference. Mr. Sarfaraz Khan also said, join the services where you can make an impact. As a Jawan in the army, can you make an impact? Yes or no? ಮಾಡಬಹುದಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಸ್ ಎ ಜವಾನ್? ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬ್ಲಿ, enjoying our food in McDonald's and doing Swiggy and I don't know what. I love eating golgappas. What about you all? Yes? All those who like golgappas, put your hand up. Up here. Only girls like golgappas. I also like golgappas. I love golgappas. How many can you eat maximum? Challenge. Come to my, near my house is a very nice golgappa guy. We'll have challenge. Okay, so Dr. Salim very correctly said that serving the community, the civil services is the best because they are within the community. IAS agli, IPS agli, state service agli, KS agli, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜನರನ್ನ. ಅದು ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಲಾ ಇದೆ, ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಆದರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅಲೌವಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್, ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿ ಎನಿಮೀಸ್ ಅವೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ನೋಬಲ್ ಕಾಲಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ brings in something very special, because this is one force that is willing to risk or even lay down their lives for the rest of the citizens of the country. Most other forces, I won't say no other force will do that. There is either controlling you or they are going to do some, they are only administrating you. Nobody goes out in the morning or in the night knowing that there is a good chance that they might be killed by the enemy or shot dead by the terrorist. That is, no other force does that. The benefits, great benefits, what Dr. Salim said, you join as an organization, immediately you get a status. If you join IPS, immediately people say, oh, avru IPS avru. Similarly, as a young officer, you join and you say, you walk into a crowd and you say, I am Captain so and so, people will look at you a little differently. And with these boys or girls, it doesn't make a difference. You walk in and say, I am Captain so and so, or Major so and so, that's automatic status is there. That status is attached to your rank, which is why when Mr. Sarfaraz and later on Maulana ji were saying, calling me Major, I was okay. I mean, I'm used to it in Karnataka. But then you have degraded me by about 5 positions. Okay, so it is very important to know what the rank is. You enter on your own merit. There is no reservation in the armed forces. Zero reservation. Not one paisa is to be paid. Anyone comes to you and says, "Nan sales biಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಡಿ 1 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ," nothing.
0 paisa. If anybody is asking you money, please come and tell me. We will make sure that man is taken and sent off to jail. You don't have to pay a paisa. Normally ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಟೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, they will come to you. I guaranteed entry ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, give me 2 lakhs. Especially ಜವಾನ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ನಿಮ್ಮದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಹವ್ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಾಬ್ಗೆ he will put the money into his pocket. And if you don't get selected, he will come and return the money to you saying, sorry appa, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ. But rest assured, the recruiting people do not get your money. Government, army system especially, has become so neat, clean and transparent. Nobody will take money. The only person who takes money is one dalal or one broker who will come and try and take advantage of you. There is a personal development. You have seen me. I have got an MSc or an MPhil. That is only because I was serving in the army. I got a chance to attend different courses. I got a chance to study on my own. So personal development in terms of education, like how Maulana ji said, ilm is most important. If anybody wants to join the army or defense forces and they say, I don't want to study, I will go and become Rambo there, you have a lot of studies to do in the defense. Okay, all places you have to study, especially if you want to improve and rise in your profession. Salary package, when you go into training, I will show you later on also, if you are going into training as an officer cadet, your stipend is 58,000 rupees. Plus everything is free. Food is free, medical free, clothing free. Of course, you have some other small expenses are there, but that is the type of package you get. As a Jawan, if someone wants to join as a Jawan and you're joining as a Jawan, today you have women also joining as Jawans. Anyone can tell me which branch? Training is in Bangalore only. Women joining Indian Army as Jawans. The Indian Army has started. Can we take in between Okay, yeah, sure. Okay, I'll do it. So Indian Army has now started inducting women into the military police, and the training happens in Bangalore itself. So we're going to have a short break after 5 minutes. I will just take you through these couple of slides and we will go to that. So the salary package is good as a Jawan. If you are joining, while during training itself, you get your recruit pay, as they call it, with everything free. So your actual expenditure is 0. You get all the benefits. You get medical cover, you get insurance, provident fund, pension, and most importantly, pension. Today I am here, I get a pension which is, I won't tell you, it is secret, but I can tell you it will buy me at least 1 lakh Golgappas or little more than that also. So you get a very good pension, and not only pension, even after retirement you get medical benefits, and of course you come and get a chance to interact with young people like you all. And I think this is, for me, most important, a network of comrades. Today I need to get any work done anywhere in India. I know that I have a friend, a military friend. I have to just call somebody, he will connect me to somebody, and I can travel anywhere in India because I have this network of friends. As a matter of fact, when Miss Sabina called me and she said program is on 24th, I said thank God, because 25th I am going to Pune to attend my friend's son's wedding. Who is this friend? We were together in Sri Lanka facing bullets of LTT together, and he was telling me, he says, my son is getting married, you must come. And I have seen that boy, I have seen that boy from when he was a baby, but that is the type of network of friends that we have. This is, I think, for me, most important. You will never get such type of friends anywhere else, because you have sweated together, you have possibly bled together, you have faced danger together, you have been through hardship together, so you will be the best of friends.
And if you come back to Karnataka after some time, after serving in the defense for some time, Karnataka has state reservation in all posts. KAS, that is administrative service, in police service, in all other departments, there is reservation for defense personnel. You write same exam, but you are competing against only a small group of people, not against general public or with the other quotas. You have professional course, lot of programs, lot of training. During the course you have operational activities, adventure. Dr. Salim was saying that if you want to do adventure, all this is at whose cost? Government cost, not your cost. So you can do so many things. I mean, as you can see all the photos that are there. You get rations nowadays, you get medical facilities, canteen facilities. The normal insurance does not work. So army has one group insurance. So if something happens to the person, family gets decent, very good amount of money because it's a group insurance, and you have a group provident fund also. You get leave, you get air travel, you get accommodation, everything else. For children, you get, every army station has got a army school. Have you seen in Bangalore army schools? Every station has got army schools. In Bangalore itself, I think there are 4 army schools. So ASC, one is near Commercial Street, there is one in Munireddy Palya area, one near, one in ASC, that is. Service hai, profession hai. Currently it is 60 days of annual leave plus 30 days of casual leave. So normal aim is to split it, especially if you are in border area. The aim is that every 3 months you can get about 15 to 20 days to 30 days of leave, so that you can go home, attend to family and get back. Because you normally, if you are in border area, you will be away from your family. So that challenge is there. So normally it varies slightly. And in addition to having these schools, I am saying opportunity for children. The army has a sponsored Army Institute of Technology for children of, not army, but of all defense personnel. This is Army Institute of Management, Army Institute of Law. So you are only competing within your own group, and these institutions are amongst the best institutions in our country. So it is not only a benefit for you, but it is also a benefit for your next generation, for your family. So this, of course, this last point someone has I have written here, higher to all other central services and protocol. People might have different understanding about this, because someone might say, no, IPS is more powerful and they are more this thing. That's a question of perception, how you want to see it. If you are joining, especially if you are joining as an officer, you are going to get access to all this. This is what Dr. Salim was saying, horse riding, swimming, shooting, you get everything that is there. And everyone talks about CSD facility. It is a very good facility. You know what is CSD facility? It's a canteen facility. You can go and buy item, toothpaste, toothbrush, this, that, other things. I will not tell you about the naughty things that we all buy, because in Islam you will say, sir, why are you talking about the other part of the CSD? But the concept of CSD was, if you are in border area, you don't have shops, so you get, the army used to provide these items to you near the border area. You know, toothpaste, toothbrush, soap, hair oil and all that. But in addition to that, they provide you many more other items. You can buy fridge, TV, so many things there. I was telling you about the different schools. Bangalore has got one hotel management institute in Bangalore for children of defense people, army people, etc. And this is where today people get a chance to travel abroad. I used to be director of foreign training. I must have sent about 200 officers and about 150 Jawans to different foreign countries for training, for interaction, for cooperation, so all over the world. I myself was posted for 2 years in Bhutan. So I was, best posting for me, I asked my wife and children, they said, Papa, best posting was Bhutan. Lovely place, nice location. So you get that again at whose cost?
Okay, so for the family, you get good areas to live in. All cantonments you have seen, all cantonments are neat, clean, tidy, well managed. So your family grows up in a very secure, good facility. Your children have access, especially as officers, your children have access to everything, like right from swimming pool to all badminton court, squash court, horse riding, you name it, it is there. You don't have to go and stay in some fancy place, you just join the defense. So I was telling you, as a Jawan, you get your recruit training. On completion of training, you are getting 30,000, and then you are getting everything else is free. In the police, what happens is that you get a salary, you get quarters also, but in the army, you stay within the campus. In the police, you stay outside the campus. So that is the difference. If you are in a field area, you get, of course, a higher salary. As an officer, you start with 58,000 rupees as a stipend, you earn about 85,000 rupees, you go to nearly 1 lakh, and all the many other benefits that you get. So money is not the main thing. There are so many other things that are connected to that. So I'll just rush through these about 4 or 5 slides, then we'll have a short break, and then we will come back here. So you can see what all happens. This is the photo of the best cadets who have completed their training. And in the last batch in the Officers Training Academy, there was a lady cadet who was awarded the Sword of Honor for being the best all-round cadet in the entire academy in that batch that is passing out. So there are a lot of adventure activities. So you can make out who this is. Is it a boy or a girl? It's a lady officer. She is posted in the United Nations. You can see one white vehicle behind United Nations. Dr. Salim said, swimming pool. So Dr. Salim said, and what else is there? Okay. You paragliding, you can do mountaineering. How many of you have seen snow? There's one lady just saying yes. Cold, very cold. I always felt cold in snow. I prefer Golgappas to snow actually. We have a motorcycle display team. Bangalore also has a motorcycle display team. Only difference is they don't do wheelies, but they do this thing, this type. And I was just talking to Major Ramya Venkat, who's posted in Bangalore. She was part of this team. So I was asking her, did you also do the fire jump? She says, no sir, I didn't do the fire jump, but I have done the glass breaking. They ride the bike through glass. I don't know if you have seen that demonstration sometime. You can Google and see on you can Google on YouTube. I think they call them the Tornadoes, the Bangalore motorcycle display team. So this, I've done this, what they have shown here. Parachute. And this is our professional training. You can see they're all there. Who's the boss in the middle? The lady officer is here. So they're doing, there is some training session which they have taken a photograph. So you can see a map and what they're doing for their training. Yeah, we'll have a break now, Sabina. All of us are on a deadline. You're not on a deadline? I have to go and eat Golgappas. Yeah. It is 12:54. Can we assemble at 1 o'clock? Because I have to leave after that. Yeah, 6 minutes break. More? 15? ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಊಟ ಸಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಊಟದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. Okay, yeah, please, we'll have a break. Please assemble at 5 past 1. I think about 9 minutes is good enough. ಆಮೇಲೆ
I request all the students to please be seated. बुला लीजिए ये girls have come. Start. Honorable Secretary CWC is also online with us. I request all the online viewers to join with us and request General Mutanna sir to please continue. Thank you. Mic is off. So you checked what is for lunch? नोड़िद्रा काय भी नहीं है, क्या भी नहीं है, हाँ? गोलगप्पा तो था नहीं उधर, मैडम ने खिलाए नहीं हमको, हाँ? ओके, शुरू करें? They say a hungry person is an angry person. So I hope you are not too hungry now. But they also say a well-fed person is normally a sleepy person. But I am very impressed with the young people. All are wide awake and very attentive. Good. So there are different types of entry into the armed forces. Okay. First of all, if any one of you have tattoos, please be. This is one major issue for us. Tattoos are this cricketer type of tattoos are not permitted in the armed forces. Some basic tattoos which you find in many places, North India, they will write some name here, mother's name, or some religious, some name, something Om or something else they will write. So that is permitted, but it has got to be only that is permitted. But this type of tattoo definitely not permitted. So please be careful. If at all you are wanting to get a tattoo, it should not be visible. There are different websites. It is nowadays everything has gone online, so you can go to these websites. I hope the organizers will share it with you all. Please go to these websites, familiarize yourself, because it takes some time. You can see the website. It will take you through the entire process, what opportunities are there in the armed forces. So as you can see here, it's not very clear, I'm so sorry, but there are different ways of joining the army as an officer, and not only army, Air Force, Navy, anything. There are different ways of joining as an officer and different ways as joining as a Jawan. And in all these services, they also permit you to join as a Jawan. From Jawan, you can always try and join as an officer also. So what is the difference? A Jawan is the basic foundation of the armed forces. But then if you want to contribute, if you want to make a difference, if you want to do something and you aspire to be a leader, then it is you become an officer and you aspire to be a leader. So this brings me to the example of my very dear friend's daughter. This young lady was studying in the Army Institute of Technology many years ago. She got an excellent CGPA, very outgoing. She got an initial placement offer in Infosys. So this young lady, her name is Nazia. She said, I don't want to join Infosys. Anybody can join Infosys. And then she opted to join the Air Force. Today she is wing squadron leader Nazia, and she is flying AN-32 aircraft, my very dear friend's daughter. She is flying AN-32 aircraft presently posted in Jorat.
So options, opportunities are there. It is a question of you being interested, one. Secondly is knowing how to join. So as I said, you can join. Nowadays you have the new Agniveer program, and after joining as a Jawan, you have an option to apply and join as to become an officer subsequently. The army also has a direct class 2 gazetted rank officer known as JCOs, Junior Commissioned Officers, and you will be surprised to know in the army we have something known as a religious teacher. So as you can see, all religions, anyone, I mean in the army, in all the units, we have all religions, and in most cases, all units, you have something known as a Sarva Dharmsthal. All religions are together. For an officer, his troop's religion is his religion. So if you are, irrespective of your own personal religion, you join, and what your troops pray will be your religion. So you have a situation where the senior officer could be Hindu, Muslim, Christian, anything. So if he is attending the unit is a unit where there are more Hindus, so there will be a mandir parade, there will be some puja, so he will be the one doing the aarti and everything else. Similarly, if you have a unit where you have Muslims, many units are there where you have Muslims, so when you have your namaz, all officers will join and they will also do the namaz along with their troops. If there is during your Ramzan also, you will find all officers of the unit will also participate and follow the fasting protocol that is there. So your Jawan's religion is your religion. Your own religion is something that you do in your room, wherever you have to do it. So irrespective of whichever unit you join, you do that. So you also have in some cases national level sportsmen. As of now, no women, but national level sportsmen can join directly as Havaldar, and then they get promoted. So the latest person you have seen, who is the javelin thrower, who got gold medal? Neeraj. So Neeraj joined directly as a Havaldar, and then because he won Olympics, he's now become a Subedar. I mean, to join as an officer, you can join short service option, where you serve for 10 years, extendable by 4 years. You might be eligible and you can apply for permanent commission, or you can join as a permanent commission officer also. So institutions are different, how the system is different, there's many options are there. And very funnily, as compared to other government jobs, in the army or in the defense forces, you only get your appointment if you successfully complete your training. ट्रेनिंग पूरा नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, तो अपॉइंटमेंट नहीं, घर चले जाओ. बाकी में क्या है, आप आईएएस में शामिल करोगे, पहले आपको अपॉइंटमेंट बनाएंगे, आपको ट्रेनिंग कराएंगे, 3 साल प्रोबेशन रखेंगे, प्रोबेशन के बाद रेगुलराइज हो जाता है. यहाँ पे डिफेंस में नहीं है, क्योंकि डिफेंस का मुद्दा ये है कि आपको लीडर ऑफिसर बनना है या जवान बनना है या लीडर बनना है, आपको वो जो ट्रेनिंग देते हैं उस ट्रेनिंग को आप सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहिए. अगर आप ट्रेनिंग में पास नहीं होते, चाहे फिजिकल स्टैंडर्ड हो, चाहे रिटन में हो, एकेडमिक्स में हो, अगर आप पास नहीं हो पाते हैं तो बोलते हैं भाई हमें इस कैंडिडेट नहीं चाहिए, तो घर भेज देते हैं. सो प्रोसेस बेसिकली इज देयर एज ए ऑफिसर, एज ए जवान. डिफरेंस क्या है, अगर आपको एज ए जवान अप्लाई करना है, यू कैन बी हाई स्कूल graduate, you can be not graduate also, but basic qualification is high school graduation, 10th standard in some cases, 12th standard in some cases. As an officer, you have to be a graduate, could be any graduation, you could be in hotel industry, hotel management, it could be in architect, you could be anything, you can join as an officer, but there are also some options to join soon after school. I will come to that. So when you are doing your after 12th standard also, you can apply for certain academies, certain places. So basically क्या होता है, आजकल हर चीज़ आपको डिजिटल हो गया है, तो आपको वेबसाइट में जाके आपका एलिजिबिलिटी चेक करना है. तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए खास तौर पे 11th स्टैंडर्ड के बच्चे आप उसमें जाके एंट्री कर सकते हो,
10th हो या 11th, इवन 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड, उसमें आपके 2-3 डिटेल इनपुट करना पड़ेगा कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो उस प्रकार से बोलेंगे आप इस डेट ऑफ बर्थ और इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या है, आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो या कौन से पोस्ट के लिए आप ट्राई कर सकते हो। तो उसके बाद होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसेस है, माय रिकमेंडेशन आप कहीं डेस्कटॉप पे ऊपर कीजिए जहाँ पे अच्छा इंटरनेट हो। उससे पहले आपको गाइडलाइन देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार रखना पड़ेगा, चाहे फ़ोटो हो, चाहे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड वगैरह हो, वो सब चीज़ आपको आपके सिस्टम के ऊपर रखना पड़ेगा। एंड इट हैज़ टू बी इन दैट एक्सेप्टेबल साइज़, यानी कि नॉर्मली होता है 1 MB के नीचे होना चाहिए। इट हैज़ टू बी सेव्ड इन दैट रिक्वायर्ड थिंग, यू हैव टू कीप ऑल दैट रेडी। एंड आप एक बार रजिस्टर करते हो तो आपका ईमेल आईडी पक्का होना चाहिए, डोंट लूज द पासवर्ड, और आपका फ़ोन नंबर भी पक्का होना चाहिए, बदली नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस ईमेल आईडी और इस टेलीफोन के ऊपर आपको अपडेट्स मिलेंगे कि आपका अभी एप्लीकेशन खुल गया है, इसके लिए अब नोटिफिकेशन आ गया है। सो यू विल बी अलर्टेड एंड देन यू कैन गो एंड चेक द वेबसाइट। फिर नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के बाद आप अप्लाई करो, अप्लाई के बाद रिटन एग्जाम, जैसे भी डिफरेंट सिस्टम है। एंड ये एक बड़ा अजीब किस्म का इंटरव्यू होता है ऑफिसर के लिए, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये बेंगलोर में भी एक हमारा सेंटर है, कहाँ पे है, कबन रोड पे है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो इसमें क्या होता है, ये 4 दिन का इंटरव्यू होता है, और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से आजकल स्टेज 1 और स्टेज 2 कर दिया। तो स्टेज 1 में कोई तरतीब है, वो क्या क्या इंटरव्यू करते हैं, क्या क्या पूछते हैं। हाँ, ग्रुप डिस्कस, आप भी गए? हाँ, सबीना मैडम गई है, शी हैज़ ऑल्सो गॉन फॉर SSB। तो SSB में क्या होता है कि स्टेज 1 स्टेज 2 होता है, सिस्टम होता है। तो बेसिकली मैं इसके ऊपर जोर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये ओरिएंटेड नहीं है, ये आपके पर्सनालिटी मतलब बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किस प्रकार से आप ट्रांजैक्ट करते हो, हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल टू योर अदर पीपल, टू द पब्लिक, टू योर फ्रेंड्स, टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सो SSB आई विल कम टू दैट लिटिल लेटर। तो ये दोनों होने के बाद SSB के बाद मेडिकल होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा है तो एक मेरिट लिस्ट बनता है। तो मेरिट लिस्ट के आधार के ऊपर आपको एंट्री मिलता है टू डिफरेंट एकेडमीज, आई विल टेल यू विच एकेडमीज, एंड देन ऑफ कोर्स यू डू योर ट्रेनिंग विद अ स्टाइपेंड, सक्सेसफुली कंप्लीट योर ट्रेनिंग, यू गेट एन अपॉइंटमेंट एज ए लेफ्टिनेंट और एज अ फ्लाइंग ऑफिसर और एज ए सब लेफ्टिनेंट इन द नेवी। ये हो गया ऑफिसर के लिए। जवान के लिए सिमिलर प्रोसेस, लेकिन इधर थोड़ा फ़र्क है, ये जो लाल में लिखा है ये प्रोसेस, इधर इसमें से फ़र्क होता है। रैली होता है साल में एक बार, स्पेशली लाइक से बैंगलोर में रैली हो गया तो 1 साल में एक बार होगा। सो आपका एज रिस्ट्रिक्शन है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपने ठीक से अप्लाई नहीं किया तो आपको चांस मिस हो सकता है। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट का था, कूर्ग से एक लड़की थी, तो उन्होंने ये स्पोर्ट्स हॉस्टल की थी लड़की, तो उसने बोला सर मैंने अप्लाई कर दिया है विमेन पुलिस, मिलिट्री पुलिस के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है। तो मैंने पूछा, तो जिस दिन इंटरव्यू हो रहा था, उस इधर रैली चल रहा था, उसके लिए मैंने पूछा उसे कि आप रैली में हो कि नहीं हो, कहता नहीं सर मेरा तो अगला हफ्ता है। तो मैंने ये कैसे हो गया भाई, आप तो लेडी हो, आज तो लेडीज़ का सिलेक्शन हो रहा है, फीमेल सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको क्यों नहीं आया? नहीं मेरा तो डेट अगले हफ्ते का है। तो बेचारी अगले हफ्ते गई तो बोलता है कि भाई आपने इधर जेंडर गलत भर दिया था, आपने फीमेल के जगह आपने मेल भर दिया, तो आपको क्या है कि हम मेल का डेट आपको दे दिया, तो बेचारी उस पिछले वाला चला गया। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज शी इज ओनली एलिजिबल फॉर नेक्स्ट ईयर्स रैली, एंड बाय दैट टाइम शी वाज ओवर एज, सो शी कुड नॉट अप्लाई। सो जो कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन में करते हैं, बहुत ध्यान से करना पड़ता है, विद ड्यू प्रिपरेशन। गाइडलाइंस पढ़िए फर्स्ट, गाइडलाइन पढ़ने के बाद फिर उसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रैली हो जाता है। रैली के बाद अगर आप रैली में, जवान का रैली में क्या होता है कि फिजिकल टेस्ट होता है,
आपको 1.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है इतने टाइम के अंदर, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ इतने टाइम के अंदर आपको दौड़ना पड़ता है, इतना पुशअप करना पड़ता है, कुछ जंपिंग है, कुछ वो सब कुछ करना पड़ता है। अगर आपने सही कर दिया वो सब कुछ और आपको सही टाइमिंग से कर दिया, सही मार्क्स मिल गए, फिर आप प्रोग्रेस करते हो मेडिकल एग्जाम। और मेडिकल एग्जाम में फुल बॉडी एग्जाम होता है, आंख से लेकर आई साइट सही है, हाथ वाथ ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं, एक चीज देखते हैं, आपका फोर आर्म में अगर आपका डिविएशन है, आई डोंट नो, यू कैन हैव अ लुक। ये अभी मेरा हाथ कभी सीधा लग रहा है, सीधा है, तकरीबन सीधा है, क्या टेढ़ा है? बहुत टेढ़ा है, थोड़ा सा, कितना डिग्री टेढ़ा होगा? सो अगर ये ज्यादा टेढ़ा हो गया, इससे ज्यादा टेढ़ा हो गया, यानी कि आई थिंक 11 डिग्री या 12 डिग्री से ज्यादा अगर ये बाहर निकल गया तो आपको अनफिट किया जाएगा, आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली आपका नॉक नी जानते हो, जहां पे आपका जो ये नीज जोड़ते हैं, अगर वो होता है तो उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर फीट आपका फ्लैट हो गया, एकदम फ्लैट हो गया, यानी कि आप जब चप्पल पहनते हो या कहीं पानी के बाद आप चलते हो, देखता है ना, जब आपका पैर का निशान में कोई गैप होता है, तो अगर वो फ्लैट हो गया तो वो भी नहीं लेते। तो कंडीशन है, फ्लैट फीट हो गया है या नॉकनीज हो गया है या मेरे जैसे है, मेरा पैर अलग है और 2 सेंटीमीटर होने से फिर मैं सेलेक्ट नहीं होता। फिर दिस इज नियरली एट दी बो लेग्स, नियरली एट दी extreme end of that selection. So there is a medical test for both officer and men. There is a medical test. जवान के लिए क्या होता है कि मेडिकल, ये फिजिकल और मेडिकल के बाद रिटन एग्जाम होता है। एयरफोर्स में थोड़ा सा अलग होता है अभी। सो एयरफोर्स में पहला टेस्ट करते हैं, फिर बाकी चीज करते हैं, और फिर मेरिट लिस्ट आता है, फिर ट्रेनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग के बाद आपको जहां यूनिट में असाइन होना है वहां पे असाइन हो जाता है। सो नाउ दिस माइट बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू। फॉर ऑफिसर एंट्री, आप जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में हो, आप तब अप्लाई कर सकते हो इन एंटिसिपेशन ऑफ पासिंग योर 12th स्टैंडर्ड। इफ यू डोंट पास 12th स्टैंडर्ड, यू कैन नॉट अप्लाई। तो बॉयज एंड गर्ल्स, यू कैन अप्लाई फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। बॉयज कैन अप्लाई फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी। सो यू गेट 3 years, यू गेट ए डिग्री, देन यू गेट सर्विस एकेडमी में जाना पड़ता है। सर्विस एकेडमी बाद में बताऊंगा क्या है। और अगर आप डायरेक्ट नेवल एकेडमी में जाते हो तो आप 4 साल का ट्रेनिंग विथ ए बीटेक, आपको नेवी में बीटेक मिलता है। बट दिस एंट्री फ्रॉम हाई स्कूल इज परमिटेड ओनली फॉर मेल्स। एज ऑफ नाउ एनडीए इज परमिटेड फॉर मेल एंड फीमेल। सो एनडीए में आप जाते हो, आपको डिग्री मिलता है। सो जैसे आपने मौलाना जी ने बोला था इल्म की जरूरत है, तो फौज में बोलता है to be a leader, to be an officer, you must be knowledgeable, you must be educated, you must be aware, you must have understanding of various factors. So they will give you, make you do academics and also give you a degree. ये मेल के लिए है, ये एक नया स्कीम बना रखा है इन्होंने, टेक्निकल एंट्री स्कीम फॉर मेल्स ओनली। आपका 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम के बाद आप JEE के पेपर देना पड़ता है। जो CET होता है, JEE सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। यू अप्लाई फॉर एंड JEE के रैंक के मुताबिक आपको कॉल किया जाता है। कॉल के बाद आपको SSB में जाना पड़ता है, एंड आफ्टर SSB यू गेट इट। बट इसका प्रोग्राम देखिए अलग से है। आप स्कूल के बाद आप जब जाते हो, so technical entry scheme is considered now the best scheme for males, because इसमें क्या होता है कि आप फौज ज्वाइन करने के बाद you get an engineering degree also, and your last 2 semesters you do as a lieutenant, यानी कि you are earning a lieutenant salary। आप एज एन इंजीनियर आप लास्ट आपका 7th and 8th सेमेस्टर करते करते आपको लेफ्टिनेंट का तनख्वाह मिलेगा, विच इज डेयरली अबाउट nearly 65,000 to 70,000 rupees. Can you imagine, to do your 7th and 8th semester you are getting a salary as a lieutenant? So that is the type of thing is there.
और एक और स्कीम है, दिस इज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. In 12th standard, you have to apply for NEET, take the NEET exam. After the NEET exam, you can apply to the Armed Forces Medical College to become a doctor. At whose cost? That is the best benefit I can say that you will get here. Your parents don't have to go and buy your seat or don't have to spend money. आपको आजकल CET का इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको CET का भी सीट के लिए आपको साल में करीब nearly 70,000 rupees you have to spend as a CET seat. If you want a management seat, we will not talk about that. That costs much more. Huh? Yeah, can you hear me now? Okay. So in this you have also a category, sorry. You have a category known as nursing officer in the army. For women only, you get a BSc nursing degree and appointment as a lieutenant in the army. You are more in a leadership role in the hospital, where you are while you are a nursing officer, you have to do nursing duties, but you are more in a leadership role in the managing the ward. You will be the ward in charge as the nursing officer ward in charge. So it's a very good entry, both AFMC and this thing. And the interesting thing in all these studies is all at no cost to the parent, zero cost. So after graduation, so that was after high school. So this is after graduation. So what you have to do in anticipation of getting your degree, you can apply. Like when I was doing my final year degree, my exam was in month of that time in the month of May 1977. So in 1976 I applied to join the army, and the process took place, and I finished my examination, and I finished my exam in May. My results came in June, and in July since I had passed my graduation, I could immediately go and join Indian Military Academy. So this process starts actually more in advance. You can't say that now I have finished, abhi mera 10th standard, 12th standard ho gaya, abhi मैं apply करता हूँ. No, you can do it in anticipation of passing. लेकिन आप select हो गए और 10th और 12th standard pass नहीं हुआ, तो फिर आपको वो सीट नहीं मिलेगा. सो यू हैव डिफरेंट एंट्रीज. इंडिया के अलावा ये यूपीएससी का एग्जाम होता है. ये सेम यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम करते हैं, वो भी ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम करते हैं, सीडीएससी. कॉमन पेपर होता है. एंड देन यू हैव एंट्री इनटू डिफरेंट प्लेसेस. इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो गया, ये ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, नेवल एकेडमी एरीमला जो केरला में है. और अलग इसके यूपीएससी के टेस्ट के अलावा यू ऑल्सो हैव टेस्ट द एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, एंड इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट. और अगर आप एनसीसी में हो तो एनसीसी का भी रूट है जो मैंने अपनाया. मैंने कॉलेज के बाद एनसीसी के थ्रू एनसीसी के जो एंट्री है उस एंट्री में मैं आईएमए में गया था. सो यू हैव दैट ऑल्सो. आप सी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो सीनियर डिवीजन में होता है. एंड एनसीसी में अगर बाई चांस आपके स्कूल या कॉलेज में एनसीसी नहीं है, अगर अगल बगल स्कूल में है, तो आप उधर जाके एज एन ओपन वैकेंसी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमें इधर एनसीसी का सीट एक दे दीजिए, मुझे ऐसे ख्वाहिश है कि मैं फौज में जाना चाहता हूँ, तो वो भी हो सकता है. सो मैं बता रहा था आपका सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में जो 4 दिन का इंटरव्यू होता है, तो इसमें ये सारे क्वालिटीज चेक करते हैं, अलग अलग क्वालिटीज. हमसे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये एसेसर जो है उनको बताया गया कि आपने चेक क्या करना है. हमें क्या मतलब है कि हम कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वहां पे इंटरव्यू के दौरान. और इसके लिए मेरे तरफ से जो मेरा तजुर्बा है कि आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा. एंड दिस प्रिपरेशन विल हैपन
by participating in extracurricular activities in your school or college. अगर स्कूल और कॉलेज में आप फैसिलिटी नहीं है तो आपको अपने तरफ से आप एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाइए और अपने तरफ से आप कुछ उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करना चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे आपके यहाँ आपके ऑर्फनेज का नाम क्या है? मुस्लिम ऑर्फनेज है. तो एज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आप एक वीकेंड में जाइए, आप विजिट कीजिए ऑर्फनेज, बच्चों से मेल मिलाप कीजिए, उनके लिए गेम्स ऑर्गेनाइज कीजिए, दूसरा दिन कहीं और चले जाइए. तो ये बेसिक क्या है कि आपको थोड़ा एडल्ट एक्सपोजर जिसमें आप लोग एज ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आप ये कार्रवाई कर सकते हैं. तो उसमें क्या होता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा होता है, आप ऑर्फनेज में डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, आपको यू विल हैव टू रीच आउट टू द एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे मिलाप करना पड़ेगा, उनसे डिस्कस करना पड़ेगा, वो आपको बताएंगे, फिर आप अपना प्लानिंग करेंगे, आप अपना तैयारी करोगे, फिर वहां जाने के बाद आप एक्शन करोगे. तो वो सब चीज में क्या होता है, आपका ग्रुप एक्टिविटीज का प्रिपरेशन देता है. सो ये जो क्वालिटीज है इसमें सब आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसे एक ट्रिप किया, फॉर एग्जाम्पल एक तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको ऑर्फनेज में जाना, दूसरा आप कहीं ट्रेकिंग जा सकते हो, अगल बगल में है सावन दुर्गा है, किसी और जगह में 10-15 बच्चे चले जाइए, उसमें एक एडल्ट किसी को साथ में ले जाइए एज एन एस्कॉर्ट, आप जाइए अपना ट्रेकिंग करके आइए. तो इसमें ये सब चीज आ जाता है कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, आप किस प्रकार से प्लानिंग करोगे, किस प्रकार से लोगों से मोटिवेट करोगे कि चलो हम सब लोग निकलते कहीं जाते हैं, आपके पेरेंट्स को आप कन्विंस करोगे, आप किससे करोगे, पावर ऑफ एक्सप्रेशन से. और आप उनको रीजन दोगे, उन्होंने बोला उधर कि भाई आप जाओ मीटिंग, तो आप रीजनिंग एबिलिटी करोगे, आप एनर्जी दिखाओगे उनसे बात करने से, ये सब एक्टिविटीज इसमें आ जाएगा. आपका सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, स्टैमिना, सब चीज इसमें डेवलप होता है. तो आजकल आपको एसएसबी का कोचिंग एकेडमी भी होते हैं, वो कोचिंग करते हैं, लेकिन मेरे तरफ से मेरा तो यही राय है कि आप प्लीज डोंट गो टू एनी एसएसबी कोचिंग एकेडमी, क्योंकि वो आपको एक शॉर्टकट मेथड समझाते हैं कि एसएसबी को कैसे क्लियर करना है, तो उसमें काफी कुछ कंफ्यूज हो जाता है. सो पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. आपका स्कूल में कॉलेज में मौका है, गो एंड participate in these sports, participate in your debating team, participate in your chess tournament, indoor sport tournament हो गया, उसमें participate कीजिए. सिर्फ not only as a competitor, you can also be as an organizer. कल आपके स्कूल में कोई इवेंट हो रहा है, आप वॉलंटियर कीजिए, एज ए वॉलंटियर जाके उसमें पार्टिसिपेट कीजिए. कॉलेज या स्कूल में फेस्टिवल होता है तो उसमें आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में शामिल हो जाइए. कभी हो सकता है कि आप सीनियर क्लास में आते हो तो आपको चेयरमैन या चेयरपर्सन बना देंगे उस कमेटी का. तो उसमें क्या होता है कि आपको ये जो ग्रुप एक्टिविटी का तजुर्बा मिलेगा, और ये आपको इट विल हेल्प यू इन योर एडल्ट लाइफ ऑल्सो. टुमारो यू आर गोइंग टू गेट ए जॉब or you want to start a business, all this will give you the benefit of there. So these are the same qualities. ऐसे लिस्ट करते हैं, तो एसेसर इसको एसेस करते हैं, हमसे अब कोई उसे मतलब नहीं है. हमारा तरफ से क्या है, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करके हम पूरे तैयारी के साथ जा सकते हैं. एसएसबी में एक चीज है, आपको इंग्लिश या हिंदी मालूम होना जरूरी है. So you cannot go with Kannada or any other regional language is not acceptable, because everyone will not speak that language. So you have to either know, I mean English preferred, but Hindi is also acceptable, 2 languages. So these are how the tests are: screening test, there's a psychological test, group task and interview. More about that anytime later. So as I was coming to this aspect of preparation, academics में ज़्यादा नहीं बोलूँगा. डॉक्टर मिस्टर अनीस कुट्टी आपको पूरे, मैंने उनको देख रहा था कि वो तो सारा एक एग्जाम ही नहीं छोड़ा उन्होंने, सब सारे इंस्टीट्यूशन के लिए बता रखा है. सो एक तो आपने अगर फैसला कर लिया कि आई विल, दीज आर माई ऑप्शंस एंड दिस इज द प्रोसीजर एंड आई विल टेक ए डिसीजन, आई वांट टू ट्राई फॉर दिस, लेट अस सी व्हाट वी डू. सो यू हैव टू डू द एकेडमिक्स. आपका खुद का जो कॉलेज या स्कूल का एग्जाम है वो तो पास करना है आपने. देन रिटन एग्जाम की तैयारी करना है. रिटन एग्जाम के लिए प्लीज टेक कोचिंग. यू हैव इंस्टीट्यूट्स, बैंगलोर में एक कैवेलियर है, आई डोंट नो इफ डॉक्टर मिस्टर अनीस कुट्टी हैज ऑनलाइन सेशन, बट यू कैन गो टू पूना, नाइस सिटी, यू कैन ज्वाइन हिज एकेडमी देयर.
तो इसमें क्या होता है कि आपको फोकस के साथ उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो, बिकॉज सैम्पल पेपर होगा, पास्ट सॉल्व पेपर्स होंगे, फिर आप किस प्रकार से तैयारी करना है उस प्रकार से आप कर सकते हैं. बट मेरे तरफ से आई वुड रिकमेंड टू यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इंटरव्यू फॉर दिस सिलेक्शन बोर्ड, उसका आपको लॉन्ग टर्म तैयारी करना है. इफ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन द डिफेंस आफ्टर कॉलेज, यू शुड स्टार्ट रीडिंग ए न्यूज़पेपर टुडे. Your general awareness, your situation awareness, everything should be there. और इस awareness में मैं समझता हूँ आपको both sides you must know. What are the two aspects of it? What is a कोई भी topic ले लो अभी, for latest क्या है कि economically weaker section के लिए reservation किया है, उसका positive क्या है, उसका negative क्या है, आपको दोनों होना चाहिए, फिर आप अपना एक you can make your own opinion about that. Any issue, it could be, I'm just giving one issue, it could be any other issue. So this is a long term preparation. तो कई बच्चे आते हैं कि सर मेरा रिटन एग्जाम पास हो गया, मैं अगला हफ्ता एसएसबी के लिए जा रहा हूँ, कुछ टिप्स दीजिए. You cannot prepare at that time. This SSB preparation has to be long term, where I would recommend to parents, teachers, I don't know if there are other people online, any educators, please expose your children to extracurricular activities and help them to organize the activity. Let them organize it. Help them so that they can develop their group skills, they can develop all the qualities that are required to be leaders. So as I said, जवान के लिए अगर कोई जा रहा है तो फिजिकल फिटनेस तो मुख्य है. You have to do physical fitness. उसमें तरतीब है कितना डिस्टेंस भागना है, कितना टाइम है. There are 100 marks for physical test. 60 marks for running. If you can run 1.6 kilometers within 5 minutes and 10 seconds, you will get 60 out of 60. Then you have to do certain other exercise. So if you get 100 out of, it is easy to get 100 out of 100 in physical. So they will combine, as a Jawan, they will combine your physical marks plus your written exam marks, and the merit list is prepared. So it is very important as a Jawan, if you are planning to apply as a Jawan, especially for army, physical fitness is very important. And of course written exam, I will not pass this exam, this is of nearly 10th standard, but it is a very wide ranging paper. इसमें science भी होता है थोड़ा, I mean थोड़ा I'm saying general knowledge में आजकल गाइड बुक मिलते हैं, आप कहीं भी जाओ आपको गाइड बुक मिल जाता है, तो गाइड बुक से आप पढ़िए. थोड़ा लंबा सा है, एटलीस्ट महीना 2 महीने. जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम फ्री कोचिंग करते हैं बच्चों के लिए, कोई भी आए, किसी भी what to say, any child can come. एग्जाम से पहले हम लोग इनका फ्री कोचिंग कराते हैं, नियरली अबाउट 1 month फ्री कोचिंग. हम वी हायर द टीचर्स एंड उनका हम कोचिंग कराते हैं. तो बच्चे उसमें तैयारी करते हैं. पहला एक हफ्ता कष्ट होता है उनके लिए, बिकॉज देयर इज मैथमेटिक्स, लिटिल साइंस, लिटिल फिजिक्स, जनरल नॉलेज, एवरीथिंग इज देयर. बट विद द कोचिंग देन चिल्ड्रन आर सक्सेसफुल. You need to study. Now when I saw the last paper, I realized I will not pass this exam. So you have to be careful. Now for officers, more important is your long-term preparation. Academics, of course, if you know that you are going to try for NDA, what is the NDA paper pattern, what is the question paper sample, how do you want to, what you have to study, and in all officer exams you have mathematics. So even if you are not a math student, you can still take some private coaching and take it. They don't need your high school certificate maths. You could be a commerce student or an art student, but you need to pass the maths paper. Except in one case, for Army Officers Training Academy, that is Short Service Commission, you do not need mathematics. But all other papers you need. So you must prepare that. And now this is the second thing that I was mentioning, where you have to prepare yourself as an officer. पेपर पढ़ने का आदत डालिए, प्रिफरेबली इंग्लिश, नहीं तो एनी, यू कैन रीड एनी पेपर. चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्या है कि आजकल आप व्हाट्सएप करते हो, आप या इंटरनेट में भी आप किसी एक टॉपिक गूगल करते हो, तो अगले बार उसी बायस का आपका आर्टिकल आ जाता है, तो आपको बैलेंस्ड व्यू नहीं मिलता है. अभी कल परसों मैं किसी एक लड़की का मैं थोड़ा मेंटरिंग कर रहा था, और उस लड़की से मैंने पूछा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टैचू ऑफ यूनिटी? सुना है आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी? सुना है?
Anyone has heard of what is the Statue of Unity? World's largest statue. What height? Sardar Vallabhbhai Patel statue, height of 182 meters. कितना हुआ? 182 meters. So मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई व्हाट डू थिंक अबाउट दिस स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो इसने पता नहीं कौन सा आर्टिकल पढ़ा, लेकिन मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा था। उन्होंने बोला सर 3000 करोड़ खर्च हुआ इसमें, हम इतने स्कूल कर सकते थे, इतने कॉलेज कर सकते थे, इतने IIT कर सकते हैं, काफी कुछ उन्होंने बोला। मैंने ऐसे लुक एट इट फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव, isn't it something fantastic that your country has created? When Taj Mahal was being built, did the king ask कि खर्चा मैं इसके बजाय मैं क्या क्या और कर सकता हूं मैं? He built it and today you go and you look at it. Have you seen? Anyone has seen Taj Mahal? अरे एक स्कूल बनाए ना, एक प्रोग्राम बच्चों को ले जाओ। Say yes, no? जोर से बोलो ना। हाँ सुने, सब लोग सुन रहे इधर। हाँ so I mean I'm saying कई चीज ऐसे जब बनते हैं, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आईफल टावर ले लीजिए। कहाँ पे आईफल टावर? पेरिस में। अरे वो जानते हो, स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं जानते हो आप लोग? वाह वाह वाह। तो आईफल टावर जब बना था तो सब पूछ रहे थे कि ये क्या बेवकूफी है ये, लेकिन आजकल देखो आप कहीं भी दुनिया में जाओ, अभी हम लोग इधर बैंगलोर में बैठे, हमें मालूम है कि आईफल टावर कहाँ है। क्यों? क्योंकि इतना शानदार है। खैर आई वॉज फॉर्चुनेट, मैंने खुद अपने आंखों से देखा, मैं देखता ही रह गया। भाई गॉड, इतना बढ़िया सा दैट इंजीनियरिंग मार्वल मैं बोलता हूं उसको। तो उस टाइम उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई पैसा खर्च होगा, क्योंकि उसमें एक उनको एक प्राइड हो गया उसमें कि भाई हमने ऐसी चीज बनाया। कब बनाया ये? 1800 एंड एनीवन हैज द डेट्स? सम 1890 एंड उस टाइम में बनाया उन्होंने। सो your current affairs is very important. Please read the newspaper, watch news. और न्यूज में मैं मेरे तरफ से I will recommend to you, please watch दूरदर्शन। ये बाकी तो सब बिग गे पे, all other channels are doing their own agenda, अपना अपना जो करते हो। Watch your channel of your choice। किसी को मसाला अच्छा लगता है TV9 देखिए, हाँ इंग्लिश में मसाला अच्छा लगता है NDTV देखिए, लेकिन आपको ज्ञान चाहिए तो प्लीज आप दूरदर्शन देखिए। ऑफ कोर्स दूरदर्शन में रहता है कि गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है, लेकिन यू मस्ट हैव ए बैलेंस्ड व्यू। बैलेंस नहीं, बोथ व्यूज यू मस्ट हैव, कि भाई ये भी है ये भी है बोल के, वॉट एवर इज द व्यू इज देयर। एंड आई एक्सप्लेन टू यू, ऑफिसर के लिए आपको बेसिक फिजिकल फिटनेस, ज्यादा फैंसी नहीं बनना है, क्योंकि वो ट्रेनिंग में सेट कर देंगे आपको, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। और ये है, आई एम सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया इसमें स्लाइड में, आई कैन ओनली ब्लेम दिस ऑन इंटरनेट बिकॉज आई सेंट इट वाज राइट। तो आपको ऑप्शंस है, अगर पेरेंट्स यहाँ पे हैं, अगर आपको शौक है आपका बच्चे को अभी से आपने डिसिप्लिन करना है, लेट मी सी द नेक्स्ट वन, ओके विल गो बैक टू दिस। क्लास 6 के बच्चे के लिए सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जैसे अपने डायरेक्टर ऑफ ऑडिट सरफराज खान साहब जो है, वो बैंगलोर मिलिट्री स्कूल के हैं। बैंगलोर मिलिट्री स्कूल देखा आपने? जॉनसन मार्केट के पास होसूर रोड के ऊपर बैंगलोर मिलिट्री स्कूल के हैं वो। तो उसमें क्या होता है, आपने उन्होंने देखा उनका कैसा फिजिकल क्या शानवान है। तो कहाँ से हुआ वो? तो फिर सरकारी राशन खा के, किसका राशन खाया उन्होंने? गवर्नमेंट का राशन खाया। हाँ भाई, मैंने भी गवर्नमेंट का बहुत राशन खाया। हाँ, सो सैनिक स्कूल इधर हमारे स्टेट में बीजापुर और कोडगू है, और इधर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जहाँ पे सरफराज खान है बेंगलोर में, और बेलगाम में भी है। ये आप एडमिशन ले सकते। इसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अभी के लिए बॉयज ओनली, लेकिन सैनिक स्कूल में गर्ल्स का भी 10% सीट्स है। तो बीजापुर हो या कोडगू में आपको ये सीट मिलते हैं। और क्लास 8 के लिए आपको RIMC देहरादून का है, ये हर स्टेट में एक सीट है। ये भी अभी फिलहाल गर्ल्स के भी हैं, लेकिन कितने सीट कैसा है मालूम नहीं है, लेकिन मिस्टर अनीस कुट्टी विल टेल यू, बिकॉज उसके एग्जाम के लिए भी वो तैयारी कराते हैं। और सैनिक स्कूल में भी आप क्लास 9 में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन वैकेंसी। लाइक लास्ट ईयर कोडगू में क्लास 9 का वैकेंसी था नहीं, और इसके लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर एक मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है, और जनरल नॉलेज होता है पेपर, थोड़ा तैयारी करना पड़ता है। और एग्ज़ाम होता है हर साल इसका सैनिक स्कूल का,
क्लास 6 या क्लास 9 का, ये हर साल जनवरी में होता है, फर्स्ट संडे को होता है, कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दिल्ली। सो पेपर है, उसमें थोड़ा तैयारी करने से, एंड ऑफ कोर्स क्लास 6 में 90 सीट्स फॉर बॉयज एंड 10 सीट्स फॉर गर्ल्स, तो उस प्रकार से आपको तैयारी करना पड़ेगा। ये एनडीए का शेड्यूल है, ये इसलिए मैं डाल रहा हूँ, इसको आपको दिखाता हूँ मैं, आप कितना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ता है और लॉन्ग टर्म अवेयरनेस और नॉलेज होना जरूरी है। जैसे ये एग्जाम है, अभी ये एनडीए का खुलने वाला है, दिस इज बाय यूपीएससी, और एनडीए एंड सीडीएस, एनडीए फॉर क्लास 12, अभी आप क्लास 12 में हो, इस एग्जाम के लिए भी आप इन एंटिसिपेशन ऑफ पासिंग क्लास 12 आप ये एग्जाम ले सकते हो, और सीडीएस है ग्रेजुएट्स के लिए। सो आप 3rd ईयर डिग्री में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। सो ये देखिए आपका नोटिफिकेशन निकलता है 21st ऑफ दिसंबर एंड क्लोजेस लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज बेयरली 3 वीक्स। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए देना पड़ेगा। सो दैट अवेयरनेस इज देयर। अभी एग्जाम कब है? अप्रैल, इसके बाद एसएसबी, और ये कब ज्वाइन करेंगे आप लोग ट्रेनिंग के लिए? जनवरी 2024 में। व्हेन? जनवरी 2024। कार्रवाई कब शुरू हुआ है? तो ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं अभी कॉलेज कर चुका हूं, अभी कंप्लीट कर दिया, मैं अभी अप्लाई करता हूं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यू हैव टू प्रिपेयर एंड बी नॉलेजेबल एंड डू इट अर्लियर। अभी ये देखिए सिस्टम, इसी का मैंने लिया अभी एनडीए का, इसी बैच का। एनडीए 1 दैट इज एनडीए फर्स्ट एग्जाम एंड एनडीए सेकंड एग्जाम होता है लेटर ऑन। जैसे इधर आपने देखा है, ये एनडीए सेकंड एग्जाम है जो सितंबर में होता है, और ये इसका ज्वाइनिंग होता है नेक्स्ट ईयर जून में। सो इफ यू लुक एट दिस, notification in December, application January, exam in April, results by June, SSB 4-5 months में, and then finally you will join only in January 2024. So parents, आप जिसको इंटरेस्ट है, बच्चों को जो इंटरेस्ट है, आपका ये अवेयरनेस होना चाहिए कि आप पहले से आप अप्लाई करना, प्रोसेस पहले से शुरू करना पड़ेगा। This is FCAT, this is our Air Force Common Admission Test after graduation or just before completing your graduation. ये है शेड्यूल, आप देखोगे तो इसका भी तकरीबन नियरली 1 year long शेड्यूल होता है इसमें। दिस इज फॉर द नेवी, नेवी का भी एक टेस्ट होता है, तो तकरीबन ये भी 1 साल लंबा प्रोसेस है। So this I will not going to tell you because Mr. Anis Kuti will tell you about all this. So this is one saying that I found somewhere which I liked very much. It glorifies the soldier. It says that he is the one who has given you all these rights because he has protected your country and kept you safe to able to do whatever you wish to do within your country, within of course the law, within the law of the country. I am now open to questions. I am okay for time. किसी के लिए और कुछ खबर, कोई भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, माई नंबर इज अवेलेबल विथ Sabina madam, or I can announce it now. Please feel free to call me, text me, anything. I feel that our children are our future. Today you are the future of India. How well you perform is how well our country will perform. जैसे Mr. Sarfraz ने बोला था, ये हाँ है हमारा देश. It is a question of how well you can grow your country. So my number is available, or I can announce it if you want to write it on. Oh, that's a good one. I don't know if they'll see it. Okay. Those who are not looking at it, my number is 968 1962 war, 1971 war, and 311. Anyone has question, can please ask. Can you see it? Is it? I have a better handwriting than this actually. Okay. Any questions? Everyone is hungry. Yes, sir. Sir, thank you so much. I appreciate this program. You have really
given a lot of awareness to our students. Normally our students, they're scared of going to the defense in our community because I know this. Your community from Karnataka, I will show you hundreds of Muslims who are there in the defense. Yeah. Because I myself the victim. When I was doing my engineering, when I was in third year, I studied from UC, so I was selected for SSB. I had been to Allahabad. I stayed there for 4 days, and I was selected. Everything was done through. When the question of submitting the documents, my parents said, "No, you don't go into this thing." It was an army SSB. So that's the way. Now because normally what they think defense means they have to go to the border, you have to fight this, that, and all that. That's not the thing, and that's not the way. Really, you have given the complete picture. What are the services that we can avail in the defense? And apart from going to the border, becoming the Jawan, there are so many other options are there. So my request to all my dear students to come out of this, get into the programs. It is very easier. If you have the caliber, if you have the capacity, if you have the knowledge, if you have the intelligence, it is very easy to get into this program. Alhamdulillah, every student of ours, they'll have the good physics. They don't have any kind of diseases or anything of that kind. Easily they can get into the program. Now my question is, how the students must be aware. They have seen that this thing definitely something is going on. That this thing it's a new concept. Normally, as our delegates also they said that engineering and the medicine is the only option. They don't think of other options, though they have UPSC or KPSC. This thing, a lot of struggle to get into this one. This is quite easy. Only thing is you have to just procedurally you should follow things. As you said that it's all 1 year program, not like 3 months, 2 months. So my this thing is how to approach, where to contact. Is it an online? And if it is an online, what is the website? And if it has to, we have to appear physically into any office or any. If you can just give us some details. Thank you, sir. Good question. You will be surprised. We were talking about minority community in the armed forces. Karnataka, it's not only Karnataka. Most people in Karnataka, even my own district, at one stage, every family had one person in the military. Today, single child, one mic is off. Mic is off. They can hear me. I think they're all looking very easy. Yeah, they can hear. No, it's going online now. Hello, sorry. So the point is, as I told you, there is no ban on any religion or any caste or anybody joining. Especially as officers, there is absolutely no reservation. When I look at the UPSC list, I see there that person's name is written bracket, they will write SC, they will write ST, they will write OBC. In the defense, there is nothing like that. Especially if you are joining as an officer, you are all Indians and you all apply for any post. There is nothing and no money. Interestingly, the Army has got Army and Air Force, Navy has also got a number of entries where your aspirations to become engineers or doctors can also be fulfilled at whose cost? You can do an MBBS spending 0 rupees. You can do a Bachelor of Technology or Bachelor of Engineering, not only getting 0 rupees, but as I told you, you will get paid in your last 7th and 8th semester, you will be paid something like 80,000 rupees to do engineering. Otherwise, you have to pay to do your engineering. So, you're giving me the PPT, please. Sagar? Yeah, just put it on slideshow. This is one side. No, this is study material. Okay, you will have to go back.
Sagar just hit 40. Okay, anyway, let us see. This is the website. These are the three sites. One is Career Air Force, Join Indian Army. This is Alpha is for officers, Bravo is for Jawans, and Join Indian Navy. Please go to the sites that show you either nic.in or gov.in. Don't go. There are a lot of other sites. All these academies that run coaching. Byju's has also joined this drama because they know it is good business. So Byju's has also got an online program. It's got, I don't know if they have a contact program. A lot of institutions have this program. So these are the registered official websites. It can be confusing. Spend some time on it. And if you have doubts, please feel free to call me. I will do my best to clarify your doubts. So these sites are the best sites. Others are all advertisement sites or institutions are there. That information is also good. I'm not saying it is bad, but this is authentic. That one you cannot do your application based on that form because ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम 100% सही हो. Yes, please. Students after doing their SSLC exams or the PUC exams. Normally, they'll be preparing for the NEET program. Suppose after doing the 12th standard, they get into some program in this defense services. After that, can they continue their studies? Not really, because no, you cannot do that. You can't, if you have joined, say, NDA, for example, today boys and girls can join NDA after class 12. Or if you are joining, boys can join the technical entry scheme of the army. Once you join that, you can opt out. You have to withdraw from there and go. You cannot say that I'm studying I'm in NDA and I'm also going to try for something else. That the NDA will not give you the time, but however, if you are good and you pass, you have to resign, you have to withdraw, leave NDA, and then the Gundi comes. For all that the government has been paying, they will charge you nearly 10,000 rupees per week, which amount you have to now return to the government. So that is there. Getting into this defense program, will they get any reservation in the NEET program or the engineering program or anything of that kind, sir? No, there is, if you are joining NDA, you will get a graduation. But if you are joining NDA as a naval cadet, at the end of 4 years training, you will get an engineering degree. Because the Navy today says that all their officers have to be engineering graduates. So you have to have an understanding of at least physics, chemistry, maths to join Navy. So reservation, like for example, if you are joining NDA as an army student, as an army cadet, you do 3 years of training, you get a BSc degree from JNU, and after that you are allotted, say, signal regiment, or you are allotted, you have been allotted the electronic and mechanical engineering branch of the army. Then army, as a captain, you will get 3 years to go and do engineering. As there, and then after doing your engineering, there is also an opportunity for you to do post-graduation, MTech from the army. So army gives you salary, they pay the fees to IIT, whichever IIT you are going to do your MTech, and you do your MTech while you are in service itself. That is at the government cost, right? No cost to yourself. And of course you are getting a salary, of course. But you can't say that I will join NDA and now I also want to go and join, say I want to do my NEET studies. That you cannot do. You have to withdraw from NDA. See, as you said that there is a short service commission of once you are joined the program, it will be like 8 years or 10 years or 15 years of short service commission. So after, for example, a child getting into the program at the age of 22 or 20, after 15 years, he will come out of the program and he'll become the pensioner, I think. No, they don't become the pensioner. Okay, after this, after the 15 years of the short service commission, when they go, they'll become the ex-service man, like ex-service person.
So if that person goes to any program like the KS, UPS, for them, any reservation of age limit for them? I did mention that. Today, if you are joining in Karnataka, in Karnataka state, there is 7 to 10% reservation in all government jobs. This is other than the SC/ST. There is one defense category. So whether it is for KS, for direct DYSP or direct KS, that is Assistant Commissioner post or Tashildar post, there is a reservation about 10%. So suppose there are 40 seats, 4 will be reserved for defense, ex-defense. So ex-defense means you could be a Jawan. A Jawan has to spend minimum 15 years and he gets a pension. He gets a pension of about 15,000 rupees per month pension. I mean, maybe 10,000 rupees a month as pension he will get for life. And when he dies, his wife will get. So as an officer, you have to do minimum 20 years of service to get a pension. So if you do 20 years of service, you are likely to get a pension of about maybe 50,000-60,000 rupees pension you will get, plus little other benefits. And in the army, there is a directorate of resettlement. So everyone who is about to leave the army gets a chance to undergo a resettlement program. It could be in fire, security, it could be in entrepreneurship, it could be in poultry, beekeeping, many courses. Courses are run in any place. You go and attend on that course. If you find it good, you can use that course to build your second career. The army for officers offers a 6 months executive MBA program in all good MBA institutions. And after that, today, if you go to Electronic City, lots of retired defense officers or short service officers are working in corporate life. There's no reservation for that. You have to struggle on your own. Today, for example, your SP Kodugu, Mr. Ayappa, what's his name? Whatever his name. Okay. Ayappa, I think. So he is a short service officer. He was a captain in the army. He left the army, finished his 5 years in the army. That time he was 5 years. He finished 5 years in the army, came out, took KS exam, cleared the first paper. He was section officer in Vidhan Sauda. Then in his second attempt, he got a direct DYSP. Then there was some condition whereby he got the benefit of being elevated to IPS. So today he got elevated to IPS, and minimum he will retire as additional DG in the IPS. So there is reservation in the state government, not in central government, state government. And now for Jawan, of course, you are joining as Agniveer. So all Jawans now, that is what my understanding is. I could be a little mistaken. All Jawans will join for 4 years, and after 4 years, you will be joining and earning a salary of 30,000 rupees, plus everything else, of course. Ration, accommodation, everything else paid for the government. After 4 years, you leave, you come, you get a lump sum amount of some 10 or 15 lakhs you will get, and then you can opt for a second career. Out of the people who join in Agniveer, 25% will be retained for full-time career. So they will be the. They will give some benefit, not all benefits, because it depends on some states give benefits, some states don't give benefit. Like for example, in Karnataka, in educational institutions, children of certain defense people get benefits, like widows, people who have died in operations, or who have been injured in operations, or who have got awards in operations. Their children get little reservations. Yeah. Any questions? You have one? Hopefully, you also have, Mr. Anis. Yeah, 1 second. Actually, sir spoke almost everything. I'll be elaborating what sir has said, but I don't know whether you noted. Sir said that he joined he is a Sainik school product. How many of you know that Sainik school is there in every state? But Karnataka has got 2 Sainik schools. You know this? Karnataka has 2 Sainik schools. कहाँ है Sainik schools Karnataka में? कर्नाटक में सैनिक स्कूल किधर है? बीजापुर में भी है और कोडग में. सर कोडग से है और बीजापुर सैनिक स्कूल पढ़े उस समय इतना. और ये आपको ये भी पता होना चाहिए, हमारे अक्सर जनरल है ना यहाँ सर के गांव से, कोडग से. रश्मिका मंडाना कहाँ से है? अरे वो जल्दी है, मौलाना कोई मालूम है कहाँ से.
रश्मिका मंडारा भी कोर्ट से, उनके खानदान के सब लड़ाकू कौम है, वो लोग जाते हैं। दूसरी बात सर का ये देखना था, सर ने एक बात बताया कि वो सर एनसीसी का एग्जाम देके गए। कितने लोग को एनसीसी के बारे में मालूम है? एक एनसीसी कितने लोग को मालूम है? खड़ा होके बताओ एनसीसी कितने लोग को मालूम है? खड़ा होके बताओ हमको एनसीसी क्या है। हिंदी मालूम? I don't know Karnataka. National Cadet Corps. Do you have NCC in your school? No. See the Wakf board should see that all our children should be going into schools which has got NCC. NCC has got special entry now. आपको कोई एग्जाम क्रैक करने की जरूरत नहीं है। आप एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लाए तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू को बुलाते। मेरे समझ में आ रहा है मेरे को सब? हाँ, but no, not that. I think sir will speak on that. Sir just left out that. That is what I wanted sir to speak. He is the NCC entry. There is one more entry which is called as CW entry now. Very few people not sir. You can elaborate on CW entry also. Those SSR people, sailor who are worthy of getting an officer, they are also getting a chance. In service. In service. I mentioned that all Army, Air Force, Navy have got an in-service promotion where as a Jawan you get a chance to become an officer. You have to apply for that. Yeah, you had a good question. One mic here, please. Yes, please. सर मुझे पर्सनली 2 क्वेश्चंस के आंसर होना सर। जो हमारे फ्रेंड सर्कल में जो डिस्कस होता सर, 2 प्रॉब्लम्स हैं सर। इसके सोल्यूशन अगर आज तुम्हें बोले तो सब कुछ क्लियर हो जाता सर। आज एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में हमें नॉलेज हुआ सर, डीप से डीप नॉलेज हुई, कैसा प्रोसेस है, कैसा हमें एक अचीव कैसा एक पर्सनली फील्ड के बारे में नॉलेज हुआ सर। बस 2 क्वेश्चंस हैं सर, अगर तुम्हें वो सॉल्व करे ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम जो अग्निपथ, जो पहले थोड़े दिनों पहले या महीने पहले सर जो प्रॉब्लम आई थी अग्निपथ की, एक सोल्जर 4 years of duty sir, he's just doing 4 years of duty and after that government is saying leave the job, do whatever you want. First thing is this sir, this we are fearing sir, if we choose this career, if we are going in this career, what is the permanent job? This is a little bit of fear sir in our friend circle, in my discussion. जब हमारे दोस्तों में ऐसी बात होती है ऐसे कुछ बनेंगे क्यों, जब आपको एक फील्ड में एक परमानेंट जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है सर, आई एक्सेप्ट गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होती है, लेकिन ये जो अग्निपथ का आया था इससे फीडबैक हुआ। सेकेंड जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी हमारे फ्रेंड सर्कल में जो डिस्कशन होती है कनेक्शंस के बारे में सर। अभी मुझे पर्टिकुलर मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ, फिजिक्स टेस्ट दे रहा हूँ, मेडिकल टेस्ट दे रहा हूँ, यहाँ पे सीधा जाके दे रहा हूँ सर। तो वो क्या कहते हैं, हमारे कोई कनेक्शन, हमारे कोई जान पहचान वाले, हम करा देंगे आपका टेस्ट, ये वो ऊपर नीचे, मेनली करप्शन से ही सर। ये जो प्रॉब्लम है वो करप्शन की है सर। ये 2 प्रॉब्लम, एक अग्निपथ से जो आई थी वो एक प्रॉब्लम और एक कनेक्शन सर। थैंक यू, वेरी वेरी वैलिड कंसर्न। वो डर आपका एकदम जाहिर है। प्लीज सिट डाउन। सो नंबर 1, अग्निपथ का स्कीम क्या है? बेसिक स्कीम ये है कि जो नॉन टेक्निकल कैटेगरीज के लिए अग्निपथ है। सो अभी तो फिलहाल अभी 1 साल 2 साल वो सिर्फ अग्निपथ की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। सो इवॉल्व होना है। एक्चुअली किस प्रकार से उन्होंने अनाउंस किया, ये ठीक तरीके से उन्होंने अनाउंस किया नहीं। उसको शुरू में होना था कि अग्निपथ वॉज टू बी ए ट्रायल स्कीम, एक पायलट स्कीम। इसमें सिस्टम क्या, भी ये सिर्फ हमारा देश नहीं है, बाकी कई देशों में ये सिस्टम होता है कि लोग आते हैं 1 2 3 साल सर्विस करते हैं और वापस चले जाते हैं, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ योर नेशनल सिटीजनशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी टू, नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज एन ऑनर टू गो एंड सर्व इन योर मिलिट्री। आप अमेरिका में जाइए और 1 2 साल सर्विस करते हैं और बोलते हैं हम तो वेटरन हैं, एंड वो फिर आते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, बड़ा ड्रामा होता है ना, थैंक यू फॉर योर सर्विस, ये वो सब उनको बोलते हैं, क्योंकि उनके यहाँ उनका रिवाज ये है कि उनको इज्जत देते हैं कि भाई जो भी मिलिट्री में जाता है। तो अग्निपथ का स्कीम ये है कि भाई किसी को शौक होगा कि मेरा एक्चुअल मुद्दा कुछ और है, लेकिन मैं 3-4 साल के लिए थोड़ा देश सेवा करना चाहता हूं, तो मैं वर्दी पहन के जाके आगे सियाचिन देखना चाहता हूं या बॉर्डर एरिया देखना चाहता हूं, ऐसे चीज मुझे शौक है बोल के। तो अग्निपथ का स्कीम क्या है कि अगर 100 कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं और प्रोसेस कार्रवाई में शुरू हो जाते हैं,
उसमें से 25% हार्ड कोर प्रोफेशनल में डेवलप किया जाएगा। तो आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि मेरा छूट जाएगा 4 साल के बाद। आपका ये मुद्दा होना चाहिए कि मैं वो 25% में सेलेक्ट होके फिर मैं परमानेंट आर्मी में रहूंगा एज ए फुल टाइम कैरियर। किसी को शौक होगा यार मैं छोड़ो, मैं क्यों फुल टाइम, आई डोंट वांट टू गिव माय फुल लाइफ टू द आर्मी। मैं कई ऑफिसर को जानता हूं जो 5 साल शॉर्ट सर्विस ही करके छोड़े, अप्लाई किया उन्होंने, 5 साल ही नौकरी किया और उन्होंने छोड़ दिया। उनको क्या वो शौक था कि मैं वर्दी पहनना है, सर्विस करना है, और उसके बाद छोड़ के उन्होंने आकर कई लोग घर में खेती बाड़ी कर रहे हैं, कई लोग कॉर्पोरेट में चले गए, कई लोग किसी गवर्नमेंट सर्विस में चले गए। जैसे अभी मैं एसपी कोडगू की बात कर रहा था, और वो भी 5 साल किया उन्होंने बाद, उसके बाद केएस के एग्जाम लिया, उसमें आप डीवाईएसपी में सेलेक्ट हो गया और आ गए। तो आप अग्निपथ करके आइए, अग्निपथ करने के बाद आपको पैसा भी मिलेगा, आपको 6 महीने 1 साल के एक विंडो मिलेगा जिसमें आप अपना वो सेविंग के साथ आप तैयारी कर सकते हो। यू क्रैक योर केएस एग्जाम एंड यू कैन टुमारो 1 साल के लिए आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो एंड डिफेंस कोटा लेते हुए you will straight away, you might even tomorrow be assistant commissioner. क्यों? अग्निवीर, and you can be assistant commissioner also. So the point is, अग्निवीर एक ट्रायल है, अभी पता नहीं 5-10 साल के बाद कैसा चलेगा. So that is that. Second is recommendation. मैंने आपको ये भी बताया था, all entry to the armed forces is purely on merit. अगर कोई आपको आकर बताएगा कि भाई मेरे पास, मैं रिक्रूटिंग ऑफिसर को जानता हूं, मुझे 2 लाख दीजिए, मैं आपका रिक्रूटमेंट कर दूंगा, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको टोपी पहना रहा है। क्योंकि वो क्या करता है, आपसे पैसा लेगा, चुपचाप बैठेगा, आपका तैयारी करेगा। ये लोग कोचिंग भी करते हैं, आपको दौड़ वौड़ कराते हैं, रिटन टेस्ट सब कुछ कराते हैं, और आप अपने बल पे, अपने ओन मेरिट, अपने ओन कैपेबिलिटी में आप सेलेक्ट हो जाते हो, वो पैसा रख लेता है। देयर इज नो रेफरेंस। आर्मी का सिस्टम, एयरफोर्स, नेवी, सबका ये सिस्टम है। अगर रिक्रूटिंग आज बैंगलोर में रिक्रूटिंग हो रहा है तो यहाँ पे रिक्रूटिंग टीम बैंगलोर का नहीं होता है, यहाँ का रिक्रूटिंग आता है, रिक्रूटिंग टीम आता है चाहे चेन्नई से, चाहे दूसरे जगह से। सो लोकल लिंक या लोकल जुगाड़ नहीं होता है, क्योंकि टीम इटसेल्फ बाहर से आता है। फिर ऑडिट भी होता है उसमें टीम का, किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ, कहीं आदमी गलत हो गया, कहीं बाद में पता चला कि किसी ने पैसे दे के आया है। पैसे किसको देता है? बेसिकली दलाल को देता है, वो ब्रोकर को देता है। रिक्रूटमेंट टीम 99.99% पैसा नहीं लेता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 99.99, हम सब इंसान हैं, तो एक कोई बेवकूफ़ मिल सकता है कहीं भी। अभी आप देख लिए, अभी आपने, इन्होंने बोला, सरफराज खान ने बोला था कि पीएसआई, सॉरी सलीम साहब ने बोला था कि पीएसआई का ट्रेनिंग, पीएसआई का एग्जाम हुआ था कर्नाटक में। मालूम है क्या कांड हुआ है? मालूम है? पेपर नहीं पढ़ते आप लोग? पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम का पेपर लीक हो गया, वो सेटिंग वेटिंग हो गया और सब कुछ हो गया। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोसेस थोड़ा अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक यूपीएससी हो, उसमें नीट एंड क्लीन होता है। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको जाके सब मेंबर से मिलना पड़ता है, थोड़ा उसमें आई विल नॉट ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि आप अपने तरफ से मेहनत कीजिए। कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज शुड बी एब्सोल्युटली नो रीज़न फॉर दैट। और सब आते हैं हमारे पास, सर आप फौज में थे, हमारे रिकमेंडेशन लिखो, वो ज़माना गया अभी। No recommendation. You have to join at your own merit. I hope there are no more questions because I can see Ms. Sabina here and it is lunch time. Yes. Lunch is getting cold. I hope there is good lunch. Thank you, sir. Well, one last question. Any one of the girls? Yes, very good. Today they have to be marching. Yes. Myself, Muskan Begum. I am from Knowledge Woods Public School, managed by the Muslim Orphanage. Sir, I have one confusion. If we want to join defense force, we can be from any of the field, like science or commerce. It's necessary to be from the arts field or? Yeah, it depends on what category you are applying for. Today, Navy, if you are joining the Navy as an officer, you have to be from science stream. But if you are joining Air Force ground duties,
you don't have to be from science stream. If you are a pilot, you must have high school science, that is 12th standard science, but you could be an arts graduate also. So today, if you want to be a pilot, you want to be a pilot? Inshallah, I will. Inshallah, I agree to you left it to the Almighty. But what is your desire? First, don't leave it to what is your desire. That is we are all at the mercy of the Almighty. The Almighty will what His power, their power they will do. What is your desire? my desire was before I was not having fixed aim, but now I will join in defense force. Oh. Thank you, sir. Oh yes, there is a medical issue. So I have started wearing specs at 55 only, but there is a condition of how much eyesight, what power you can have. If you are joining after graduation at the age of 21 plus, LASIK surgery is permitted. You understand what is LASIK? That is permitted. But if you are joining NDA, you cannot join with no LASIK surgery is permitted. So there is a power requirement. But if you are, it is only certain categories that you should not be wearing specs. For example, like I'm very happy you didn't say you want to be a pilot, because pilot eyesight has to be 6/6 or has to be neutral. If you are wearing glasses, you obviously cannot join as a pilot. But you can join as an army officer, because we are allowed to wear glasses. So that is not a problem. Thank you so much. I think, Sabina, we should end it here. Yeah. Thank you, sir. It is on the initiative and the teamwork of our CEO and Wakf board staff. We have tried to conduct this program, and when sir told we have contact any army person, then I contacted sir. He wholeheartedly accepted our invitation of joining here and guiding the students. He said whenever it comes to the point of training the student, he is always available. Thank you so much for that, sir, and coming here and guiding the student. Saying it is not a matter of job, it is a passion to serve in the armed forces, and what benefit we are getting from the armed forces, what disciplined life we are going to be dealing with the life, how disciplined we will be, all these things he has said, and there is no reservation, and the comradeship, what is mainly important, what he has said. And it is not, defense services are different from other services, and it is much beyond all uniform services, what he has said. And after the services, armed services, we can join the KAS, and there will be reservation also. All these things he has cleared. So we are very thankful to you, sir, so elaborately guiding our student community. So it is an honor for sir to be here and guiding our student community, and our Central Wakf Council Secretary Shadan Zeb Khan, he is also watching live from 11 o'clock, and we are very grateful to you also, sir. And with great patience and with great enthusiasm, you all people are here and listen to the sir. We are thankful to all of you. Thank you. And now it is a lunch break, and student can proceed for the lunch, followed by teachers, educators. Please go in queue. Thank you. First girls. And reassembly कितना बजे? 3 o'clock? 2:45, 15 minutes. All should reassemble at 2:45, please.
आप अनीस कुट्टी गूगल करो, यूट्यूब पे मेरे बहुत वीडियोस मिलेंगे। 650 बच्चे मेरे अफसर हैं इंडिया के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। और अफसर बनने के लिए आपको मैथ्स आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है? 11 स्क्वायर कैसे करेंगे? 11 का स्क्वायर 1 लिखेंगे। ये 1 का डबल क्या होता है? ये 1 का स्क्वायर क्या होता है? बताइए। 1 लिखा। 2 का डबल बताइए। 2 का डबल पक्का? 2 का स्क्वायर 4 4। 31 का बोलो। 31 का 1 लिखेंगे। 3 का डबल 3 का स्क्वायर। अच्छा 41 का बोलो। 41 का वेरी गुड। 51 का बोलो, देखते हैं। 10 है तो 0 लिखे 1 कैरी। 0 लिखे 1 5। हाँ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 कैसे आया? 61 का बताओ। 1 लिखा। 6 का डबल 1 कैरी। कितने लोगों को पहली बार आया? पहली बार सच्ची बोलो। पहली बार? पहली बार ना? ऐसा पहली बार हुआ है। जोर से बोलो। और एक आइडिया है, याद रखो। किसी भी 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए किसी भी शॉर्ट ट्रिक है। कितने लोगों को सुनना है शॉर्ट ट्रिक? सबको सुनना है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? सेट 6 का स्क्वायर क्या है? 1 का स्क्वायर, लेकिन उसको 2 डिजिट में लिखना है। 2 डिजिट्स। ऑलवेज राइट इन। नाउ देन डोंट राइट एनीथिंग हियर। व्हाट इज 1 into 6? 6 2s are right 12 and just add. कितने लोगों को समझ में आया? नहीं आया? देखो और एक बार। 17 का स्क्वायर है। 17 का 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 का स्क्वायर कितना आएगा? डबल डिजिट में लिखने का। यहां पे कुछ नहीं लिखने का। 1 into 7 1 into 7 7 2s are and now add. Understood? कितने लोगों को पहली बार समझ में आया? पहली बार? हाँ बोलो, जोर से बोलो। ऐसा 18 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर बताओ। 18 का स्क्वायर बोलो। 64 1 8 जा 8 8 2 जा। What is the answer? All of you understood? Now rub this. You want to copy, you can copy, or don't rub. Write till 30. Actually one more. Till 15 हो गया ना? Who wrote till 15? Now you write. Write 16 and 16. Then 17. बताओ, उसको हेल्प करो। अभी मुझे ये बताओ, कितने लोगों को ये पता है कि कुरान के अंदर भी नंबर्स है? मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो है, नेटवर्किंग इज माइनिंग, 2 घंटे का वीडियो है। और एक मेरा वीडियो है हज हाउस पे, मैथमेटिक्स एंड कुरान। मैथमेटिक्स एंड, कितने लोगों को पता है कि कुरान के अंदर मैथमेटिक्स है? हाँ, कुरान के अंदर कोडिंग है। कोडिंग 2 नंबर आपको कुरान में बहुत ज्यादा मिलेगा, 7 और 19। क्या मिलेगा? कितने लोगों को ये पहली बार मालूम पड़ा? सच्ची बोलो। हाँ बोलो बोलो, और एक बार बोलो। ऐसा कौन सी आयत है हुफ़ाज़ इकराम, कौन सी आयत है जिसमें 19 मेंशन्ड है? 19 का लफ्ज कुरान के अंदर है। कहां पे? कौन सी आयत? कौन सा सूरा? एनीवन? अच्छा 7 तो तवाफ कितने मरतबा करते हम? आसमान कितने हैं? 7। तो 7 का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 7 70 7 लाख, ये तो कुरान के अंदर है। 70 का मल्टीपल्स में बहुत ज्यादा मिलेगा। उसी तरह से 19 का भी कोडिंग है। जब इसके बारे में कहा गया ना, मक्का के बारे में कहा गया, तो कितने मरतबा मक्का के बारे में कहा है अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर? अरे बताओ। 9 3 मरतबा। 2 मरतबा मक्का का है और 1 मरतबा बक्का का है।
हुफ़ाज़ इकराम है, मैं मेरे पास टाइम कम है करके मैं वो आयत वगैरह नहीं पढ़ता। अगर वो बक्का 3 मरतबा आता ना तो कोडिंग टूटता था। उसके लिए जानबूझ के अल्लाह ने बक्का का है, मक्का का दूसरा नाम बक्का है, और वो गोल्डन रेशियो है। क्या है वो? पेन है क्या? किसी ने ये सुना है मैं जो लिख रहा हूँ गोल्डन रेशियो? और काबा जो है गोल्डन रेशियो पॉइंट है। काबा क्या है? 3 चीज है कुरान में। कुरान के अंदर 3 चीज है जिसको मैंने मैथ्स में यूज किया। एक है रिंग स्ट्रक्चर, एक क्या है? दूसरा है कोहेरेंस, ये लिख लो, और तीसरा है सिमेट्री। अभी मैं बोलेगा मैं कुरान सिखाने के लिए नहीं आया, मैं आपको मैथ सिखाने आया कि अगर आपको एनडीए में ऑफिसर बनना है ना तो एनडीए में 120 क्वेश्चन आपको 150 मिनट में लिखना पड़ता है। 120 क्वेश्चन कितने मिनट में करना पड़ता है? 120 क्वेश्चन कितने मिनट में? मतलब एक क्वेश्चन को कितना मिनट मिलता है? 1 मिनट। उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है। कितने लोगों नेगेटिव मार्किंग समझता है? हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में किसी बच्चे को 120 में से 60 क्वेश्चन राइट दिया है आज तक। आज तक किसी बच्चे को 60 क्वेश्चन राइट नहीं आया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और टाइम कम है। इसलिए सट्टा मेरे खुद का, मेरा इन्वेंशन है। ये जो सट्टा है ना, मेरा खुद का इन्वेंशन है। एफोरिज्म, जो इंग्लिश का टीचर, एनीबॉडी हु इज एन इंग्लिश टीचर हियर इन द ऑडियंस, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज एफोरिज्म? एफोरिज्म इसको बोलते हैं ना, किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में बोलना। उसको तू वीडियो बना, उसको मेरा पैम्पलेट डाल बांटने में। किसी भी चीज को शॉर्ट में समझाना, उसको एफोरिज्म बोलते हैं। मेरे और आपके जो रोल मॉडल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी भी चीज को जो क्या करते थे, शॉर्ट में समझाते थे। जामे क्या बोलते थे उसको? बच्चों के पास टाइम नहीं है, घंटों का काम मिनटों में पढ़ाना आना चाहिए, तो ही वो बच्चा आगे बढ़ सकता। अटेंशन स्पैन बच्चों का बहुत कम है। 90% टीचर, माफ करना कितने टीचर्स हैं, पढ़ाना नहीं आता। उनका ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने का है तो आपको बच्चों को घंटों का काम मिनटों में कराना पड़ेगा। मैंने आपको बोला ना 120 क्वेश्चन कितने में? 150 मिनट। ये जो छोटे छोटे ट्रिक मैंने बताया आपको, ये आपको गूगल पे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं इसको कैलकुलस में भी यूज करता हूं। आप मेरे वीडियोस देखो तो आपको समझ में आएगा। छोटे बच्चे बैठे करके कैलकुलस का एग्जांपल ले देता। कैलकुलस समझता है? कितने लोग कैलकुलस समझता है? सेट, रिलेशन, फंक्शन, लिमिट्स, डेरिवेटिव, मतलब 11th और 12th के जो बच्चे एनडीए के लिए पढ़ते हैं ना, उसमें भी हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। सवाल से जवाब नहीं, जवाब से सवाल। और ये सारी चीजें हमारे पास है। हम यूरोप की तरफ देखते हैं, लेकिन हमको अरब से मिला है। जीरो कहां से मिला? जीरो, हाँ, इंडिया से मिला है। 1 to 9 एल्जिब्रा जो है ना, एल्जिब्रा, वो भी मिला है। देखो अभी ये बच्चों को कितना टाइम लगा सॉल्व करने के लिए। टाइम लगा ना 1 to 30 का। अभी मैंने इनको क्या शॉर्टकट बताया था कि ये 14965 नंबर रिपीट होता है। अरे होता है ना, यहां भी बताया मैंने, 14965 रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? आगे भी देखो 14965 रिपीट हुआ। यहां पे भी देखो, ये 24 है ना बच्चों लोग। 1496 रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? मैथ से तो सबको नींद आ रही है। चलो बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं, यहां देखो, बैठ जाओ, चलो थोड़ा सा। आपका नाम क्या? 30 into 30। स्टैंड एंड एक्सप्लेन यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बहुत ध्यान से मैं क्या बता रहा। दोनों के लिए ताली बजाओ, खदीजा और दूसरा। हाँ, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं। व्हाट इज दिस नंबर? जोर से बोलो। सबको बोर्ड दिख रहा है? थोड़ा बोर्ड आगे लो, बोर्ड आगे लो। बोर्ड दिख रहा है सबको? अब वो पीपीटी स्टार्ट करो। ये 41 है, दिख रहा सबको 41? अच्छा, इसी लाइन में 41 कहां दिख रहा है आपको? नीचे कितने को दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? अच्छा, अभी ये बताओ, ये नंबर कौन सा है? बोलो 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 जल्दी। 84 दिखा कि नहीं दिखा?
कितने लोगों को पहली बार दिखा? सच्ची बोले, पहली बार सोचा ऐसा? ये क्या दिखा नंबर? तो ये क्या नंबर है? ये क्या नंबर है? ये क्या नंबर है? ऐसा कभी तुमने सोचा था कि मैथ्स में? सच्ची बोलो, 10th पास, 12th पास, कोविड पास, सब पास, लेकिन कभी हमने ये सोचा नहीं। सोचा? हाँ, ये कुरान के अंदर है, ये चीज कुरान के अंदर है। सूरह यूसुफ कितने लोगों को पता है? सूरह यूसुफ अल्लाह ने कितने नबियों का जिक्र किया है? हाँ, जितने भी नबियों का जिक्र किया, मैं उस पर जाता नहीं, लेकिन सूरह यूसुफ में ऐसा है कि अल्लाह ने उस सूरह में सिर्फ सूरह यूसुफ के बारे में बताया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। और अगर आपने 1 to 12 पार्ट्स, 1 2 3 ऐसा लिखा है ना, कहां तक लिखने का? नहीं 12 तक। घर जाओ, आज देखो, चेक करो, सूरह यूसुफ को 12 पार्ट्स में डिवाइड करो। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? उसका फर्स्ट पार्ट और 12th पार्ट सेम है, मीनिंग के साथ। सेकेंड पार्ट और 11th पार्ट सेम है। थर्ड पार्ट और बोलो, फोर्थ पार्ट और, फिफ्थ पार्ट और, सिक्स पार्ट और, बोलो जोर से, ऐसा? तो हम लोग कुरान को भी समझते नहीं ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। लोग उसको रिसर्च करते, लोग अपना थ्योरी बनाते, नाम कमा लेते, सब चीज मिलेगा कुरान में। तो ये 3 चीज लिखा, मैंने जोर से बोलो, क्या क्या बोला? रिंग स्ट्रक्चर, क्या बोला? और ये हाँ, ये सारे के सारे चीज आपको कुरान में मिलेगी, और इससे मैथ्स डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है? और जादू सीखने का क्या पास हो गया? अभी 41 to 50 लिखो। इधर आ, 50, उसका चक्कर किधर है? उसको दे, ये बोर्ड में जो डस्टर ले। 41 to 50 लिखो, लास्ट जादू बता था। हाँ वो मैं, हाँ इधर हो जाए, वो नंबर्स बता, ये सब बता। 50 और आप 51 to 60 लिखो, सब लोग लिखो, आप भी लिखो। और उसमें क्या जादू है बताओ? 41 का स्क्वायर से लेके 50 तक स्क्वायर लिखो। लिखो 41 का स्क्वायर कितना था? राइट खदीजा, फास्ट, वी डोंट हैव टाइम, आई हैव गॉट ओनली 1.5 hours टू स्पीक। चलो 41 का स्क्वायर बताओ बच्चों। 16, गलत 1681। मेरा आइडिया यूज करो ना, मैंने क्या बोला? कोई भी 2 नंबर का स्क्वायर कैसे करेंगे? मेरा आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? 51 का स्क्वायर कैसे करते हैं? 51 का स्क्वायर 1 0 1 लिखते हैं ना। 5 का स्क्वायर क्या लिखते हैं? 5 to 1 5, 5 2 10, एक नंबर छोड़ के 10 लिख देंगे। अंडरस्टूड? हाँ, एनीबडी? चलो बच्चों लोग, जादू, मैथमेटिक्स, मैथमेटिशियन है, मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। कुछ मिला? 42 का बोलो, 42 का 1764 किसने बोला? वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। 52 का स्क्वायर, अरे बच्चों लोग नींद आ रही क्या? बताओ 52 का स्क्वायर। वेरी गुड, राइट, 2704। बॉयज में से किसी ने बोला? क्यों, किसने बताया? आपका नाम? मोहम्मद जाहिद, स्कूल मौलाना आजाद। वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। फोर्टी 43 का रॉन्ग लिखा बच्ची ने, क्या आना चाहिए? 18, क्या नाम है तेरा? हाँ, कुबरा खड़ा रहे। इधर देखो, सुनो, अभी वो बच्ची ने बोला ध्यान दो मेरे पास। कितने लोग मेरे पास देख रहे हैं? मेरे पास थोड़ा सा साइड। कितने लोग मेरे पास देख रहे हैं? कुबरा, यहाँ देख, ये क्या है? जादू देख रहे हैं? जादू, ये क्या है?
जोर से। ये क्या है? तो ये क्या है? तो इसके नीचे क्या होना चाहिए? इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। बोलो ऐसा? पक्का ना? चाहिए आगे आगे सुनना है ना, आगे सुनना है ना। ये क्या है? ये क्या आना चाहिए? वेरी गुड। किसने बोला 36? भाई क्या नाम तेरा? हाँ अजान, जरा खड़े रहो, ताली बजाओ उसके लिए। 36:25 तो क्या आएगा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। कितने लोगों को समझ में आया? पक्का? ऐसा? स्क्वायर 9 का स्क्वायर 8 7 6 5 4 3 2 1 0। इधर बोलो, ये किसका? ये नंबर क्या है? ये नंबर क्या है? ये नंबर क्या है? तो आगे का नंबर क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? क्या समझ में आया? मैथ्स इजी है क्या हार्ड है? पढ़ाने को आना चाहिए, ऐसा? तो मैथ्स अगर पढ़ाने को अच्छे से आएगा ना, तो मैथ्स के जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं। अभी मार्केट में 3 चीज चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने उसका डेफिनेशन बताया, उसको मेरी तरफ से चॉकलेट। वक्फ वाले बताएगा, मैंने दूंगा। MI, AI, ML और DS का मतलब क्या है? किसको आता है? मैं इसको अमर अकबर एंथोनी बोलता हूं। AI, ML और DS का मतलब क्या? अमर अकबर और, अरे तो बताओ ना उसका मतलब क्या है? AI मतलब व्हाट डज AI स्टैंड फॉर? वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बोला? हाँ वेरी गुड मैम। यू आर अ टीचर और स्टूडेंट? फैंटास्टिक, गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन। विच क्लास? विच क्लास? हाँ, सी दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, this is machine learning, and this is data science. Without maths you cannot have a job in the market, and without maths you cannot study this. अगर आपको AI, ML और DS पढ़ना है तो आपको मैथ्स आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है? अगर मैथ्स नहीं आता तो ये AI, ML, DS, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग ये नहीं समझ में आएगा। कोडिंग, कोडिंग के लिए 8th और 9th का ज्योमेट्री आना चाहिए, इसलिए मैथ्स बहुत चलने वाला है। अगर हमने उसको नहीं पढ़ा तो मुश्किल है। ये सबको समझ में आया मैंने क्या बताया? Somebody who can start my PPT. Ma'am, you can introduce me so that I know I can continue. Thank you. Clap for the girls. Girls. 1 second, Sagar. Let me call Sagar. PPT start करना। 1 second. You can ask me, अभी जो भी मैंने बताया ना, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। You can ask me anything. Anything under the sun you can ask me, I'll help you to answer it. My name is Anis Kutti and I'll write my mobile number. You can join my YouTube videos or you can ask me on WhatsApp. In 24 hours, I'll reply to whatever questions you ask. You can ask me anything under the sun. My number is 9890-826-344. 9890-826-344. Dalo. Three double four. Yes, अभी जो कुछ पढ़ा है आपको कुछ पूछना है?
सब समझ में आया? Good afternoon, everybody. Assalamu alaikum. Sir Anis Kutti sir, when we thought of organizing this career guidance counseling program for the young students, we contacted Sir CEO Sir Khan Parvez sir told Anis Kutti sir, who is a very well renowned person, who is well versed in the mathematical area and for the defense forces career counseling. He is a very resource person, we can call him up. So we contacted sir, he wholeheartedly accepted our invitation of being part of this program, and it is an honor to have you here, sir. Anis Kutti sir, he is a founder and director of ADCI, mentor and coach, defense career counselor, which is the, he has got his Anis Kutti classes in Pune, which is the top ranking institute for the coaching of NDA and other defense forces classes. He is a teacher and trainer. He is awarded the best teacher training institute to 2022. He is the member of DNI Dubai, and he does coaching classes in Dubai also. And he is very belovedly called as mathematician with the student community. Students love to call him as a mathematician. Like now what you have said, he did all the tips and tricks, how to easily grasp the maths and do it fastly, okay? And he has got polymath, a person of wide knowledge of learning, a forest, a person who uses the mind and creativity concisely. Anis Kutti was born in Kerala and later brought up in Pune, Maharashtra. In 1988, one second, sir. He started his Anis classes in Pune, and more than 500 students have entered into defense forces because of his coaching classes. He provides coaching classes for Sainik School, Navodaya School, Military School, RIMC, RMS. Things. Move karo na, next slide dalo sir ka. And in today Anis classes is spread over 11 locations in Pune. He has got a very wide experience of 33 years, and he has got his trust named Evergreen Education Foundation, who caters to help and educate the underprivileged children. Today over 1,000 plus successful students have entered into defense services, the NDA, technical entry, CDS, IMA, OTA, AFCAT, and over 400 are officers in the army. He also has his own unconventional techniques for teaching mathematics and has even given them unique names: Jugalbandi, Chandal Chaukadi, Amar Akbar Antony, Mara Mari, a few of them. Besides Evergreen Foundation, Anis Kutti has also co-founded mstartup.biz and the Indian Muslim Entrepreneur Forum. So, sir, we are here. Okay. So, sir, very thankful to you, sir, to be here and guide our student. In the meanwhile, Mohammed Mohsin sir, IAS Special Commissioner Revenue Department has arrived. We welcome you, sir. Can we? Sir, please come over the stage and accept our token of love. Sir, please.
I call upon our CEO, Khan Parvez sir also. Can I continue, ma'am? Please continue, sir. PPT, please. PPT, Sagar. So, we'll start with Evergreen Education Foundation. See, in Quran it is written Ikra. So it is very necessary that we provide education to everyone. So Evergreen Education Foundation stands for Education for Employment. बोलो मेरे साथ क्या बोला मैंने? Education for everyone. Education for everywhere. And education for entrepreneurship. That is important. Now, these are the various things, and we have to understand this. Read the line, what is written. Nowadays, school is not teaching you things by which you will be able to clear a competitive exam. जैसा स्कूल में रीजनिंग नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं पढ़ाते हैं, लॉजिक नहीं पढ़ाते हैं, मेंटल एबिलिटी नहीं पढ़ाते हैं. अगर ये सारी चीज अगर नहीं आए ना तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते. तो ये सारे पढ़ना जरूरी है. Enough? So Times of India had rated as the best coaching classes for NDA. What is NDA? National Defense Academy. कहाँ पे है NDA? अभी जो सुबह सर ने मेजर जनरल साहब ने बताया ना, मैं उसी को रिवाइज कराओ. NDA जो है वो पूना में है. कहाँ पे है? 11th और 12th के एग्जाम के बाद बच्चा एग्जाम देता ना, वो एग्जाम को क्लियर करेगा तो वो NDA में ऑफिसर बनेगा. तो वो इंस्टीट्यूट जो है वो पुणे में. आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, तीनों का ट्रेनिंग पुणे में होता है. 4th ईयर में अगर आप आर्मी में है तो देहरादून जाते हैं, अगर आप नेवी में हैं तो आपको एड़ीमाला जाना है, केरला से हूं मैं, और अगर आप एयरफोर्स जाना है तो दिंडीगुल जाना पड़ता है. पहले 3 साल का ट्रेनिंग आपका NDA में खड़कवासला में होता है. बहुत बेहतरीन जगह, आप गूगल कर सकते हैं NDA खड़कवासला. 1988 में मेरा क्लास स्टार्ट हुआ. बहुत सारे बच्चे 650 प्लस ऑफिसर्स हैं और IAS भी बन सकते हैं, IPS भी बन सकते हैं. जैसे सर हमारे IAS ऑफिसर है. तो ये NDA का जो एग्जाम 12th में है ना, ये UPSC कंडक्ट करती है एग्जाम. कितने लोगों को UPSC का फुल फॉर्म पता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सारे एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल में लेते हैं. एक ही एग्जाम लेती है जो प्री ग्रेजुएट लेवल पे है, वो NDA का एग्जाम है. तो एक बच्चा अगर NDA के लिए तैयारी करता है ना, अगर किसी वजह से नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह वो CDS या फिर कोई गवर्नमेंट कर्नाटका का पब्लिक सर्विस कमीशन या UPSC क्लियर करेगा. तो ये मिनी UPSC है. एनीबॉडी व्हाट इज अ पॉलीमैथ? लाउडली, जिसको पता है पॉलीमैथ क्या होता है? एनीबॉडी हु नोज व्हाट इज अ पॉलीमैथ? गूगल करके फाइंड आउट करो. उसका मैथ से कोई लेना देना नहीं है. व्हाट इज प्रैग्मेटिक थिंक टैंक? आज हमारे कम्युनिटी में थिंक टैंक की बहुत कमी है. सोच नहीं है लोगों के पास. मैं मेंटर भी हूं, मेंटर होना बहुत जरूरी है. मेंटरशिप नहीं रहेगा ना तो हमारा डायरेक्शनलेस हो जाता है, कहां जाना है पता नहीं होता. मैंने कहा मैथमेटिशियन, मैजिक देखा ना मेरा, आप यूट्यूब पे जाओ तो और मैजिक मिलेगा. डिफेंस करियर काउंसलर है. स्पेसिफिक इज टेरिफिक. बोलो जोर से बोलो. स्पेसिफिक इज टेरिफिक. लाउडली. हाँ, somebody Khudeja, where is she? Khadija, come on the board, rub the board and write what I'm saying. Come. Specific is terrific. ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. सब कुछ नहीं करना, पहले हमने देखना कि हमको क्या आता है. हमका हमारा पैशन, हमारा जो पैशन है ना, उसी को हमारा प्रोफेशन बनाना है. वापिस से बोला, मैंने क्या बोला? हमारा पैशन को हमारा प्रोफेशन बनाना है. मेरा पैशन है मैथ्स करना, तो मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता था स्कूल लाइफ में, तो मैंने उसको प्रोफेशन बनाया. मुझे मैथ्स से पसंद ही नहीं है तो मुझे नहीं करना. मेरे घर के सारे लोग जा रहे हैं नीट करने के लिए, तो मैं भी जा रहा हूं नीट. मुझे बायो पसंद ही नहीं है. नहीं, बाजू की लड़की जा रही ना, तो मैं भी जा रहा हूं साथ में. आजकल क्रेज है फार्मेसी. क्या कर रहे हैं फार्मेसी? तो पूरा मोहल्ला फार्मेसी कर रहा है. तो वो नहीं चलेगा. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. टीचर ट्रेनर, मैंने पहले ही बताया, आई रिपीट, कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है लेकिन फिर भी मारूंगा. 90% टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता. तो पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है.
एफोरिस्ट किसी भी चीज को शॉर्टकट में बताना, उसको एफोरिज्म बोलते हैं। ये ड्रीम डेस्टिनेशन है जो अभी सुबह मेजर जनरल साहब ने बताया ना, ये सारे चीज को मैं रिवाइज कर रहा हूं। इंडियन एयरफोर्स कहां है आपका? इंडियन एयरफोर्स दिख रहा है क्या? स्लाइड दिख रहा है क्या? अरे ये इंडियन एयरफोर्स कहां है? इंडियन एयरफोर्स बेलगाम कहां है? बेलगाम कर्नाटक में है ना। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भी कर्नाटक में है, लेकिन किसी बच्चों को नहीं मालूम कम्युनिटी के कि ऐसा भी कुछ स्कूल होता है। पूरे इंडिया में 5 स्कूल है जिसको मिलिट्री स्कूल बोलते हैं। 5 में से 2 कर्नाटक में है, एक बेलगाम में है और दूसरा बैंगलोर में है। कितने लोगों को मालूम बैंगलोर में है? कौन है आपका? कोई रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपके मोहल्ले का कोई बच्चा जो आरएमएस में पढ़ता है? पढ़ता है क्या? इसलिए औकाफ वालों ने बुलाया मुझे। बेलगाम में भी है, उसका एग्जाम होता है, 6th में होता है, 9th में होता है। पूरा खर्चा गवर्नमेंट करती है। हमारे टीचर्स, हमारे थिंक टैंक, हमारे कम्युनिटी लीडर्स ने ये सोचना चाहिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि बिरयानी में और मीनार बनाने में पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। हमारे मस्जिदों में, मैं तो बाकी कम्युनिटी को बोलता, मंदिर में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में नवोदय का, आरएमएस का, सैनिक स्कूल का, आरएमसी का एंट्रेंस कोचिंग रखना चाहिए। इसके लिए अगर कोई मोहल्ले का बच्चा बहुत आईएएस होना जरूरी नहीं है, 12th के बाद डीएड किया ना तो वो बच्चा ही पढ़ा सकता, उसको पेमेंट भी मिल सकता मस्जिद कमेटी से। उसका ट्रेनिंग हम लोग पुणे में फ्री कराएंगे, खाना पीना रहने के साथ। बात समझ में आओ, ये रेवोल्यूशन लाना है, इसलिए आपके पास है इतना दूर से। नवोदय हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, एक नवोदय में। नवोदय की बात को सुनो, नवोदय उर्दू लैंग्वेज में भी होता है। कितने लोग उर्दू मीडियम से? गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे भी नवोदय का एग्जाम दे सकते हैं। 5वीं में होता है, उर्दू में भी होता है, कन्नड़ लैंग्वेज में भी होता है। अगर आपने नवोदय का एग्जाम क्रैक किया, एक डिस्ट्रिक्ट में 100 सीट होता है, एक साल का 72,000 गवर्नमेंट सेंड कर दिया। 72 into 7 करके निकाला मैथ्स। एनीबॉडी कौन बताएगा 72 into 7? 5वीं से लेकर 12वीं तक पूरा एजुकेशन फ्री है। 72,000 रुपीज खर्चा आता है, साबुन का पैसा भी गवर्नमेंट देता है। 5,04,000 रुपया गवर्नमेंट उस बच्चे में खर्चा करती है। हाँ, आई एम टेलिंग यू 5,04,000 रुपीज। डू वी हैव 5 लाख रुपीज टू गिव टू एनी पुअर पर्सन? बट टीच। हमारे गरीब मोहल्ले के, हमारे काम वाली भाई है, हमारे घर में कोई गरीब है, अभी बहुत सारे लोगों को मिला, मुस्लिम ऑर्फनेज चलाते हैं। इन बच्चों को नवोदय का कोचिंग देके एंट्रेंस एग्जाम होता है, उर्दू में भी होता है और कन्नड़ में भी होता है, और वो बच्चों को नवोदय में भेजो। नवोदय का अल्मा मैटर है। हर नवोदय डिस्ट्रिक्ट में अल्मा मैटर ने क्या किया, मेरे से जो क्लासेस चलाते ना उनको उन्होंने हायर किया और अच्छा कोचिंग देते हैं नवोदय में। करेंगे? नवोदय के बाद क्या बोला मैंने आपको? सैनिक स्कूल। कितना सैनिक स्कूल है कर्नाटक में? कहां कहां? बेलगाम और नहीं, बेलगाम में आरएमएस से सैनिक स्कूल 2 है, एक है बीजापुर में और दूसरा कोडग में। हमारे मेजर जनरल साहब थे ना, उन्होंने बीजापुर से पढ़ाई की और रहते किधर? कोडग में। इंडिया के सबसे बड़ा फील्ड मार्शल, मतलब उससे बड़ा ऑफिसर नहीं हो सकता, वो कोडग में रहने को आया था। उसका नाम है फील्ड मार्शल मानिक शाह। क्या नाम है उसका? इंडिया पाकिस्तान वॉर जीतने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद जनरल थिमैया, ऐसे बड़े बड़े जो फील्ड मार्शल थे और मेजर जनरल थे, सब रहने के लिए कोडग में। और कोडग में भी सैनिक स्कूल है और बीजापुर में भी सैनिक स्कूल है। उसका भी एंट्रेंस होता है। कौन सी क्लास में एंट्रेंस होता है? 6th में, 9th में और 11th में। गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज के लिए भी है। और जो बेलगाम की बात करें ना, वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। सैनिक स्कूल तो हर स्टेट में होता है, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पूरे इंडिया में 5 है। 5 में से कर्नाटक में 2 है। कहां कहां है? जोर से। बीजापुर में सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम में और बैंगलोर में, बैंगलोर के कैंटोनमेंट में। बहुत बेहतरीन स्कूल है, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग सब सिखाती है। तो वो बेलगाम की बात करा। इंडिया खड़कवासला किधर है? पूना में। ये चिल्का आईएनएस चिल्का लेक है, वहां पे नेवी का है। यही मला मेरा गांव है केरला, 800 एकड़ में बना है, उनका खुद का बैक वाटर है। अगर आपने यही माला गूगल करेगा ना, आपका दिल नहीं करेगा वापस आने का। पूरा नेवी का पूरा, उनको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ना 7 कोर्स मील मिलता है। आमलेट जितने टाइम में सब बना खिलाते हैं। और ये 12th के बाद माँ बाप का एक पैसा खर्च नहीं होता, सब गवर्नमेंट खर्चा करती है। कल मेरा इंटरव्यू लिया है यूट्यूब पे, आकाश धारवाड़, तो वो कल बात कर रहा था मेरे से। ये ओटी है चेन्नई। चेन्नई कितने लोगों को मालूम है?
हाँ, वो ओटीए का फायदा क्या है, कई लड़कियां जा सकती है ऑफिसर बनने में, और ओटीए में वो लड़कियां जा सकती है जिसको मैथ्स पसंद नहीं है। वो ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम है, उसमें मैथ्स बहुत 10th के लेवल का होता है। नहीं तो एनडीए में जाने के लिए तो मैथ्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ये क्या है? ये इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी ये भी है, एयरफोर्स है, ओटीए गाया भी है। इस पर कुछ पूछना है आपको? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? आई टोल्ड यू बी इंटरैक्टिव। सो अभी सोने का टाइम है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ये मेरे बारे में, मैं मेरे बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, आप गूगल कर सकते बाद में। ये हमारे पास ग्राउंड्स वगैरह है। हमारे यहाँ जो क्लासेस होते हैं ना, देखो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, हमारा स्कूल 180 डेज चलता है। बोर्ड बजाओ ना। मैं तो को प्रॉब्लम बताता सबके लिए, एजुकेटर्स के लिए भी और जो लोग थिंक टैंक है उनके लिए भी। हम लोग सब स्कूल जाते हैं ना। हमारे यहाँ मैथ्स का पीरियड कितने मिनट का होता है? 40 मिनट्स लिखो बच्चा, जल्दी लिखो, टाइम नहीं अपने पास। 40 मिनट्स होता है, बराबर है। हमारा स्कूल कितने दिन चलता है? 365 दिन थोड़ी हमारा स्कूल चलता है, 180 डेज चलता है। कितना चलता है? मल्टीप्लाई करो 180 को 40 डेज से। 40 मिनट मैथ्स पढ़ते हैं रोजाना, 180 डेज स्कूल जाते हैं, तो कितना घंटे का मैथ्स पढ़ते हैं हम? 7,200 मिनट हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, बराबर है। उसको हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड किया तो कितना है बताओ? 120 घंटा, 120 आवर्स हम मैथ्स पढ़ते हैं एक साल में। मेरे जैसा कोचिंग वाले सुबह, मैं खुद सुबह 6 बजे से 10 बजे तक पढ़ा था। कितने घंटे पढ़ा है? 4। अगर 4 घंटा मैंने पढ़ाया, 120 को 4 से डिवाइड करो, तो 30 दिन में कोचिंग सेंटर वाले वो मैथ्स पढ़ाते हैं जो एक स्कूल में कितने साल चलता? 1 साल। कितने लोगों को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं करते, घंटों का काम मिनटों में। दिस इज अ बेसिक प्रॉब्लम, और ये सिर्फ कर्नाटक का प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। बच्चों को 40 मिनट के मैथ्स में कुछ नहीं होने वाला उसका। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, आप ऑफिसर का छोड़ दो, अगर आपको व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए तो आपको मैथ्स अच्छे से आना चाहिए। और अगर हम 180 दिन में ये 40 मिनट के मैथ्स करते रहेंगे ना, तो पीछे के पीछे रह जाएंगे। इसके ऊपर सोचो, इसलिए मैं टीचर ट्रेनिंग करता हूं। तो दिस इज अ बेसिक पॉइंट। हमारे पास जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ओलंपियाड चालू होता है। कितने लोगों को मालूम है? फर्स्ट स्टैंडर्ड से, राइट, ओलंपियाड। फर्स्ट स्टैंडर्ड से ओलंपियाड चालू होता है। ओलंपियाड का एग्जाम दो, मेंटल एबिलिटी पे एग्जाम दो, होबी बाबा का एग्जाम है। कितने लोगों ने होबी बाबा सुना है? नाम सुना है? कितने लोगों को यह मालूम है कि आप ओलंपियाड का एग्जाम देके नासा जा सकते हैं? कोई गया आपके यहां से? कौन गया? हाँ, तो नासा जाना चाहिए, फ्री जा सकते, गवर्नमेंट लेके जाता है। तो ये होना चाहिए। हमारे यहाँ जो क्लास है ना, हम लोग 365 डेज बचते हैं। रेसिडेंशियल क्लासेस है, सुबह से शाम तक टीचर होता है और सुबह से शाम तक पढ़ाने के लिए तैयारी होनी चाहिए। छुट्टियों में भी क्लासेस होते हैं। हजम नहीं होगा, लेकिन ये बात समझो, पढ़ने का तरीका क्या लिखा मैंने ऊपर, देखो क्या लिखा मैंने, 80:20। जोर से बोलो, जोर से बोलो, 80:20। हाँ, देखो मैं वापस बताता, वेयर इज द अदर पेन, ब्लू वन। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा। अगर क्लास में 100 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 20 बच्चों को ही ऑफलाइन समझ में आता है, ऑनलाइन समझ में आता है। ऑनलाइन क्लासेस समझता क्या? कितने लोग समझते हैं ऑनलाइन क्लासेस? 20%। 80% पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड ऑनलाइन क्लासेस। वो 80 बच्चों को फिर दोबारा पढ़ाना पड़ता है एक बार। मैं उसको अमर बोलता हूं। वो 60 बच्चे को क्लास में कुछ नहीं समझता। फिर 20% को मैं अकबर बोलता हूं। फिर उसमें का बच्चा 40 है ना, हाँ, वो एंथनी आएगा, इधर एंथनी आएगा। थर्ड बार रिवीजन किया तो एंथनी आएगा। बाकी बच्चा जो 20 है ना, ये ऐसे नालायक बच्चे रहते हैं ना, जो बाकी 100 को खराब करते हैं। सीरियसली, हर क्लास में होगा। वो बच्चों का टाइम भी बर्बाद करेगा, पढ़ेगा भी नहीं। इनको सेपरेट रेमिडियल क्लासेस होना चाहिए। हर स्कूल का ये प्रॉब्लम है। टीचर्स भी, इनको संभालने में टीचर्स का टाइम जाता, तो ये बाकी जो 20 बच्चे ना, जिसका क्वालिटी बच्चे वो भी आगे नहीं बढ़ पाते। और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है।
सब स्कूल का, तो उसको एलिमिनेट करना जरूरी है। हर 4 घंटे अगर आपने मैथ्स पढ़ा है सिर्फ दैट्स इट, तो आपने 4 घंटे में 1 ही घंटा आपने बाकी का सब्जेक्ट करना चाहिए। 4 hours ऑफ मैथ्स, वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर। सर स्लाइड्स है क्या? पीपीटी का कुछ प्रॉब्लम है क्या? बता, वापिस से बता, मैं वापिस से बोलो, रेशियो क्या बताया? 80:20। 80:20 मतलब ये, अच्छा ये रूल है ना, ये कॉमर्स में, इंडस्ट्री में वर्ल्ड ओवर चलता। 4:1 का रेशियो है, याद रखो। फॉर एवरीथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, अगर वो इंटरेस्ट वाले चीज में आप 4 घंटे देते ना, तो नॉन इंटरेस्ट वाले चीज में आप 1 ही घंटा देना चाहिए। नहीं समझ में आया? अभी औकाफ वाले ने मुझे बुलाया एनडीए पे बात करने के लिए। एनडीए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैथ्स। 8 लाख बच्चे एग्जाम देते। कितने लाख बच्चे एग्जाम देते? 8 लाख बच्चों में से सिर्फ 8,000 बच्चे रिटर्न एग्जाम क्लियर करते हैं। वो 8,000 बच्चे जो रिटर्न एग्जाम क्लियर करते हैं ना, वो 300 मार्क का मैथ्स होता है। कितने मार्क का मैथ्स होता है? और 600 मार्क का गैट होता है। गैट मतलब जनरल एबिलिटी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब। पर ये 300 मार्क का मैथ्स अगर अच्छा नहीं है तो वो 8 लाख में से 8,000 बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, बाकी के बच्चे को पेपर चेक भी नहीं होता। तो मेरा ये बोलना है कि जिस चीज में हमारा पैशन है वो अगर हम 4 घंटा करते हैं ना, तो नॉन पैशनेट चीजें कितना करना चाहिए? 1 घंटा। चाइना में ऐसा होता है। चाइना में एक एग्जाम है, उस एग्जाम का नाम गाओकाओ है। क्या एग्जाम का नाम? गाओकाओ। लिख के लो, ये बहुत कम लोगों को नहीं मालूम। Private Secretary, Ministry of Mujrai and Wakf and Hajj Department, Mr. Chidambar sir has come. Please, we invite you on the stage and accept the token of love. Thank you, sir. Sir, please you can. Sir, Professor, if they can sit in front of the guest of honor so they can see what has been presented, that will be more better. If you don't mind. Thank you, sir. कल थोड़ा पीछे हो रहा, उनको बैठने दो। गेस्ट बैठेंगे ना, ये लोग इम्प्लीमेंट करने वाले जो बताया, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। पीछे बैठ जाओ। जी सर, यो कुछ और बादशाह कटो। तो कहाँ थे बच्चों लोग अपन? जल्दी 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 जल्दी, टाइम कम है। कहाँ थे अपन? गाँव का एग्जाम किधर होता है? चाइना में 6th स्टैंडर्ड में एग्जाम होता है और पूरा चाइना बंद हो जाता है। वो जो कंसेप्ट है ना, टाइगर मॉम और हेलीकॉप्टर डैड, काजोल का एक पिक्चर भी आया था। मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, जब एग्जाम होता है ना, मम्मी डैडी छुट्टी लेते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी का प्रॉब्लम ये है ना कि उनको ये नहीं पता रहता कि उनका बच्चा कौन से क्लास में है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पेरेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं रहता। लेकिन जब ये एग्जाम होता है चाइना में, पूरा चाइना बंद हो जाता, पप्पा मम्मी दोनों भी बच्चों के साथ बैठते हैं और 6th में एग्जाम होता है गाँव। इसका आपको इंटरनेट में भी नहीं मिलेगा, इतना टफ एग्जाम होता है। मेरा ये क्लेम है, इंडिया में एक एग्जाम है जिसका नाम है RMC। क्या एग्जाम का नाम बोलो ना? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये किधर है मालूम? सर ने बताया था सुबह, मेजर जनरल साहब ने बताया था। किधर है स्कूल? ना ना ना, देखो तुमको वापिस बताया था। हर डिस्ट्रिक्ट में होता है नवोदय। डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? नवोदय, वो सबसे नीचे। उससे अच्छा सैनिक स्कूल, वो हर स्टेट में होता है। पूरे इंडिया में 5 RMS और पूरे इंडिया में 1 वो RMC। इंडिया में एक कौन सा? ये RMC देहरादून में। किधर है? इस एग्जाम में 6th का बच्चे को 8 पे लेते हैं। एक स्टेट से एक ही बच्चा जाता है। बोलो ऑफिस से क्या बोला? इतना भारी एग्जाम है और हमारे को उसका हवा भी नहीं लगा। देखो, अगर किसी बच्चे ने RMC क्लियर किया ना, वो दुनिया का कोई भी एग्जाम क्लियर करेगा। गाँव भी, गाँव से टफ एग्जाम है RMC का। तो ये इसके बारे में लिख के लो, पेरेंट्स को बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। तो 6th स्टैंडर्ड में चाइना डिसाइड करता है कि बच्चा क्या करेगा। जिम्नास्ट बनना तो जिम्नास्टिक, स्पोर्ट्स में जाना तो स्पोर्ट्स में। 6th में डिसाइड होता है। ये पढ़ाने का तरीका है। बच्चों का टेस्ट, मेंटरिंग, एक्सप्लेनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टीचर के लिए। बच्चों लोग रैपो क्या इंपॉर्टेंट है? जोर से बोलो। टीचर का पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ कनेक्शन नहीं रहेगा ना तो कुछ चलता नहीं है। ये सारे एग्जाम के बारे में सर ने ऑलरेडी बताया था, मैं उसको वापस नहीं बता रहा। सर ने बताया था ना तुम्हारे को, उसमें गट्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा? ये सर ने छोड़ दिया था, ये सर का छूट गया था, CMP। बाकी तो सर ने सुबह सब बताया। व्हाट इज CMP?
हाँ वुमेन मिलिट्री मतलब लड़कियां भी मिलिट्री में जा सकती है, उसका नया एग्जाम है, वो सर का छूट गया था। मैंने ये बता रहा, ये सारे एग्जाम कोस्ट गार्ड का सिर्फ लड़कियों के लिए, ये सारे। अभी कितने लोग फ्लाइट में गए, फ्लाइट में यहां कितने लोग फ्लाइट में गए? मैं आज भी सोच रहा था, मैं पूना से बैंगलोर आया ना, फ्लाइट में तुमको चेक करते हैं ना सिक्योरिटी वाले, अरे चेक करते क्या सिक्योरिटी वाले, वो लोग एग्जाम देते हैं। एग्जाम का नाम है, पढ़ो जोर से, क्या लिया? हरियाणा के रहते सबके सब। तुम कश्मीर में जाओ, कन्याकुमारी में जाओ, आपको चेक करने वाले लेडीज और जेंट्स सब कहां के रहते हैं? हरियाणा के। एक सिंपल एग्जाम होता है 12th के बाद, वो एग्जाम देते हैं और ऑफिसर बनते हैं। और मालूम इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या? इंडिया का हर वो गवर्नमेंट एग्जाम वो इंग्लिश में भी रहता और हिंदी में भी रहता। ये बात कितने लोगों को पहली बार पता चला? बोलो ऐसा। तो हरियाणा के लोग क्या करते हैं, कोचिंग को जाते हैं, 6 महीना पढ़ते हैं और एग्जाम पास करते हैं, और उनको 46,000 रुपीज का जॉब मिलता है। कितने 1000 रुपीज का? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हम लोग तो उसका फॉर्म भी नहीं भरते, हमको पता ही नहीं रहता एग्जाम के बारे में। ये मैंने बताया, सर नहीं बताया, MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस गर्ल्स, क्रिश्चियन कम्युनिटी केरला के, मैं केरला से हूं, सबके सब नर्स बनते हैं क्योंकि वो खिदमत को खुदा समझते हैं। तो वो नर्स बनना चाहते हैं। पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में आपको केरला क्रिश्चियन मिलेंगे नर्सिंग में। और वो उनका जो ड्रेस है ना, वो भी हिजाब के जैसा रहता, और सिर्फ गर्ल्स के लिए रहता बैच। और जिनको नीट में 600 मिलते हो तो डॉक्टर बन जाते हैं, नीट में थोड़ा कम मिल गया तो MNS का एग्जाम दे सकते हैं। 12th के बाद आपके माँ बाप को 1 रुपया भी खर्चा करना नहीं पड़ता। मैं इसलिए आपके पास आया, मैं वो बताने के लिए आया आपके पास कि आफ्टर 12th आपके माँ बाप के पैसे पे नहीं पढ़ना, उसके बहुत सारे तरीके हैं। बात समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूं? ये सारे एग्जाम्स है। ये थोड़ा स्क्रीन छोटा हो सकता क्या? अपने को लाइव दिखाना है इसके लिए, जहां मैं खड़ा हूं। अब ये एग्जाम है, ये 5th वाला, ये जैग नहीं, इसको पढ़ाई देने दो। 5th वाला एग्जाम है जैग। एनीबॉडी नोज व्हाट इज जैग? देखो जैग वो एग्जाम है जो लॉयर भी मिलिट्री में जा सकता। याद रखो बच्चे लोग, मेरी तरफ से गिफ्ट है लोगों तुम्हारे को। आफ्टर 12th एक एग्जाम है, राइट, क्लैट, CLAT। कितने लोग क्लैट मालूम है? कोई तैयारी कर रहे हैं आप लोग क्लैट का? 5000 सिर्फ कर्नाटक में लॉयर्स की जरूरत है, 5000। ये एग्जाम दे रहे हैं आफ्टर 12th। और ये एंट्रेंस में लीगल एप्टीट्यूड अलग से रहता, बाकी सब इजी रहता। और अगर ये बच्चे आगे तो वो नहीं, ऑर्डर वाले नहीं है, कॉर्पोरेट में आपको लगेगा क्लैट का इंपॉर्टेंस। क्लैट बहुत इंपॉर्टेंट चलने वाला भी। तो लॉ करके भी आप इंडिया के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा सकते हैं। सर ने इसके बारे में बताया था, असिस्टेंट कमांडेंट। ये टेरिटोरियल आर्मी कितने लोगों को मालूम है? टेरिटोरियल आर्मी सुना है? अच्छा जा रहे तो MS धोनी कितने लोगों ने सुना है? MS धोनी टेरिटोरियल आर्मी का ऑफिसर है। आप 42 साल की उम्र तक आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। कितने साल तक? 42। एक बंदे के जिंदगी में 14 बार वो SSB दे सकता है। सुबह सर SSB के बारे में बता रहे थे ना इंटरव्यू, वो 14 बार दे सकता है। SSB के बारे में सर ने सब बताया, उसके लिए मैं बता रहा नहीं, लेकिन ये सारी चीजें आपको रो आना चाहिए। थीमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, SRT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसका अगर आपको पढ़ाई है ना तो आप कोई दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, इंडिया का नहीं, अब्रॉड का भी। इस पर जाना नहीं मैं ज्यादा करके। रीडिंग स्किल अच्छा आना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग अच्छा होना चाहिए, इमेजिनेटिव राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। अच्छा, कितने लोग नीट का JEE का एग्जाम दे रहे हैं? JEE कितने लोग ये मालूम है कि JEE देके भी आप इंडिया का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा सकते हैं? बोलो ऐसा पहली बार हुआ है? जैसे आप नीट का एग्जाम देके AFMC में जा सकते हैं, वैसे आप JEE का एग्जाम देके इंडिया के आर्मी में भी जा सकते हैं और नेवी में भी जा सकते हैं। राइट खदीजा? इट इज कॉल्ड TES, टेक्निकल एंट्री स्कीम। क्या बोलते हैं उसको? तो लोगों को ऐसे दिमाग में नीट देने का, JEE देने का, लेकिन अगर आपने फॉर्म भरा ना तो आपको टेक्निकल एंट्री से भी आप ऑफिसर बन सकते हैं। जाना नहीं है, अटक गया क्या? एक CME करके एक इंस्टीट्यूट है पूना में,
कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। 12वीं के बाद आपको अगर 12वीं के बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिले और अगर आपको JEE में अच्छे मार्क्स मिले, SSB इंटरव्यू होता है। अभी आपको अगर इधर इंडिया कर्नाटक में भी इंजीनियरिंग कर रहा है अच्छा कॉलेज में, तो 1 लाख रुपए तो फीस है ना? 1 साल के 1 लाख है ना फीस, ज्यादा है ना? CME में आपको गवर्नमेंट स्टाइपेंड देगा पढ़ने का। CME में अगर आपको एडमिशन मिला तो गवर्नमेंट आपको पढ़ने के पैसे देंगे। शू का पॉलिश भी गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। आर यू गेटिंग? क्या सो रहे? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अभी आपके पास ये आदमी आया था ना, क्या रैंक था हमारे पास? जो अभी आदमी आया था क्या रैंक था उसका? तो लेफ्टिनेंट बंदा कैप्टन, मेजर, कर्नल और जनरल तक जा सकता है कोई भी एंट्री से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेम ईयर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का तीनों का अलग अलग रैंक्स दिया मैंने। अगर आपको कुछ पूछना है तो बताओ। मेरे यहाँ 4 साल का प्रोग्राम है, 2 साल का, 1 साल का। एक कोर्स का नाम भी है और सब फैसिलिटीज के बारे में होता है। करंट अफेयर्स रोज पढ़ना है, रोज द हिंदू पेपर पढ़ना है। कौन सा पेपर पढ़ना है? द हिंदू। अगर आपको कोई भी जनरल नॉलेज चाहिए तो। ये अलग अलग एग्जाम के बारे में। एक छोटा सा एग्जाम है, एक्स और वाई ग्रुप। क्या लिखा बोलो ना? अभी हर बच्चा ब्रिलियंट नहीं रहता, हर बच्चा ऑफिसर नहीं हो सकता, लेकिन इंडिया के एयरफोर्स में एक एग्जाम है, एयरमैन एक्स और एयरमैन वाई, राइट? एयरमैन एक्स मतलब टेक्निकल और एयरमैन वाई मतलब नॉन टेक्निकल। तो 12वीं के बाद थोड़ा लोअर लेवल बच्चा भी वो सेलेक्ट हो जाता। सेलेक्ट होने के बाद वो 3 साल ग्रेजुएशन करेगा और वापस इंटरनली एक एग्जाम देगा जिसका नाम है ACC। क्या एग्जाम का नाम क्या? जैसा फॉर एग्जाम्पल आप कर्नाटका में एक कांस्टेबल हो गया, एग्जाम देके वो SI होता है, PSI, फिर आगे बढ़ता, तो इंटरनली एग्जाम देके वो ऑफिसर बन सकता। अभी पंकज को लेकर के मेरे पास एक बच्चा है, वो आया था इंडिया के लिए, लेकिन वो SSR का एग्जाम दिया, बाद में ऑफिसर बन सकता। कितने लोगों को समझ में आया मैं क्या बताया? हर बच्चा ऑफिसर नहीं बनता, तो ऑफिसर से लोअर ग्रेड होता है, नॉन ऑफिसर, लेकिन अच्छा क्लास रहता है। वो एग्जाम देके उसको जॉब मिल गया। अभी माँ बाप के पैसे पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं है, पगार मिल रहा है। जैसे एक बच्चा आज पूछ रहा था, तू पूछ रहा था ना अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में, क्या नाम है? शोएब। एक बात याद रखो, अग्निवीर और अग्निपथ है ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। 200 करोड़ का लोगों ने प्रॉपर्टी जला दिया, लेकिन वो लोगों की बात है जिनको उनके खानदान के खानदान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं, उनको पहले से गवर्नमेंट जॉब है। तुमको मालूम बिहार में 3,500 नौकरी के लिए 3.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने वाले में पोस्ट ग्रेजुएट भी था, चपरासी का नौकरी था। तो वो लोग ऑलरेडी आगे। एक स्टैटिस्टिक्स बता था जो आप लोग का दिमाग काम करेगा। पूरे इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट्स है? एनीवन? अरे बाबा, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया, रिमेंबर देयर आर 775 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। कितना? जोर से कितना? 775। उसमें से 175 डिस्ट्रिक्ट के लोग ही इंडिया के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाते हैं। क्या बोला? समझ में आया मैं क्या बोला? 775 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ कितने डिस्ट्रिक्ट के लोग जाते हैं? 600 डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी भी नहीं है, और साउथ में तो बिल्कुल नहीं है। तो ये अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है लोगों के अंदर, तो ये आगे बढ़ सकते। तो ये सारे एग्जाम ऐसा है। सेलर का एग्जाम है, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस है। तो ये सारे जो एग्जाम है ना, ये ऑफिसर लेवल के नहीं होते, ऑफिसर से थोड़ा लोअर लेवल होता है, लेकिन वो एग्जाम देके बाद में आप ऑफिसर बन सकते। लेकिन एक बार आपको 12th के बाद आपका फिजिकल फिटनेस देखा जाता, उसके बाद आपको जॉब मिला जाता। जैसे आज 4 साल में ये बता रहा था कि अग्निवीर, हमारे मोहल्ले के बच्चे क्या करते हैं? टिकटॉक के वीडियो बनाते हैं। टिकटॉक तो बैन हो गया, तो कुछ और करते हैं, या व्हीली करते हैं, या ड्रग्स में मुसल लेते हैं। 12वीं के बाद अगर आपको बॉडी फिट है, आपने अग्निवीर का एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, 4 साल काम करना पड़ता है, 3 साल में आपको वो लोग डिग्री देते हैं, आप ग्रेजुएट हो गए। किसके पैसे पे ग्रेजुएट हुए? गवर्नमेंट के पैसे। अगर उसको आदत लग गई गवर्नमेंट की, वो 100% इंशाल्लाह वो 3 साल में पढ़ के कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करेगा, जो एग्जाम के बारे में मैं बता रहा हूं। ऐसा 17 एग्जाम है। कितने एग्जाम है? वो बैठ के पढ़ेगा, और हर महीने उसको 30,000 रुपए मिल रहे हैं, और खुदा ना खास्ता नहीं हुआ उसका तो उसको 12 लाख रुपए मिल रहा है। वो बाहर आने के बाद कुछ और कर लेगा। लेकिन किसी भी चीज को पॉजिटिव लेना, नेगेटिविटी लाना ही नहीं।
ये हो रहा, करप्शन हो रहा, वो हो रहा, हम लोग को प्रॉब्लम हमारा क्या बन गया, हम जो हमारा एक्चुअल एजेंडा है ना उसको छोड़ के बाकी का सब करते। नहीं समझ में आया? शादी किसके लिए रहता? दूल्हे के लिए। हाँ, तो दूल्हा क्या बाजू में बाकी की चीजें चलते रहते, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए? हमारी पढ़ाई, हमारे कम्युनिटी को नौकरी चाहिए हर फील्ड में। सिर्फ आर्मी नेवी एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा, वो तो आर्मी नेवी एयरफोर्स को सर ने बोला उस पर बात करने के लिए करके बात कर रहा हूं। मेरे पास तो और भी फील्ड है जिसमें मैं बात कर सकता। हमको ये देखना है कि 12वीं के बाद हमारे बच्चे कितने ग्रेजुएट है, कितने लोगों को जॉब मिला, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और वो क्या कर रहा? तो ये अग्निवीर का स्कीम है, तो अग्निवीर बिल्कुल कंट्रोवर्सी नहीं है। मौलाना लोग बैठे थे, चले गए। मैं तो ये कहूंगा कि मस्जिद के ट्रस्टी लोगों को, मस्जिद के मुतोली लोगों को जुम्मा के बयान में अग्निवीर के बारे में बात करो। कितने लोग के बात से एग्रीड है? हाथ ऊपर करो। बहुत जरूरी है, जुम्मा के बयान में इसके बारे में बात करो। जैसा मैंने बोला, नवोदय, सैनिक स्कूल, आरएमएस, इसकी पढ़ाई हमारे मस्जिद सिर्फ जुम्मा में भरती है। कोई मस्जिद के कॉर्नर में एक बोर्ड लगा दो, व्हाइट बोर्ड, और एक मार्कर पेन दे दो, एक टीचर को ट्रेन कराओ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाओ। मैं एक जगह गया था, वानमबाड़ी, मालूम वानमबाड़ी? वहां से मेरे को 60 किलोमीटर अंदर एक छोटे से देहात में ले गया। मैं जानबूझकर इसका नाम नहीं बता रहा था। अंदर जाने के बाद उन्होंने क्या किया, मेरा बोला अनिस कुट्टी आ रहा है पूना से और मैथ्स पढ़ाएगा। उन्होंने मस्जिद के सैन में बोर्ड लगाया और पूरा कम्युनिटी का मोहल्ला है। और असर की नमाज में पहुंच गया मैं, और असर नमाज में एक लड़का इधर उधर देख रहा था। तो नमाज के बाद मैं पूछा, यू कम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मॉस्क? हाउ डिड यू नो? तो बोला हमें मालूम तो पड़ गया, तू इधर उधर देख रहा, तो पहली बार आया। तो व्हाई डिड यू कम? बोला आई हर्ड दैट सम अनीस कुटीज कम टू टीच मैथमेटिक्स। तो वो मैथ्स के नाम पे मस्जिद में आया, पूरा मोहल्ला मुसलमानों का, लेकिन उसको पता ही नहीं क्या चल रहा। तो हमारे यहाँ लाइब्रेरी होना चाहिए, जिम होना चाहिए मस्जिद में, 24/7 मस्जिद आबाद होना चाहिए। देन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक लेयर आएगा। एसएसआर हो गया, ये ना आप क्लर्क भी बन सकते हैं, याद रखो। आप बहुत सारा ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी में भी आप जा सकते हैं। आप समझ रहे, सर ने एक बताया, आपको एयरफोर्स में जाना है तो ग्राउंड ड्यूटी में कॉमर्स किया हुआ बच्चा भी जा सकता है। कितने लोगों ने कॉमर्स किया यहाँ पे? वो लोग भी आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। लॉयर बच्चे भी आर्मी में जा सकते हैं। सोल्जर बन के भी आगे। अभी देखो ये इस एग्जाम का नाम क्या है? जोर से पढ़ो। ये एग्जाम होता है ग्रेजुएशन में। कब होता है? लड़का लड़की सब एग्जाम दे सकते हैं। एनडीए भी अभी लड़का लड़की सब दे सकते हैं। एनडीए कब होता है? बुझा ना बोलो। एनडीए कब होता है? 12वीं के बाद। एनडीए कब होता है? 12th में जब बच्चा रहता है ना तब एनडीए होता है। हाँ गर्ल्स, एनडीए कब होता है? सेकेंड ईयर में जब रहते ना तब एनडीए होता है। सॉरी, ब्रिंग इट, रब द बोर्ड। बोर हो रहे क्या? बता रहा हूं, बहुत काम की बात बता रहा हूं। पढ़ाई कब स्टार्ट कर रहे हैं एनडीए के लिए? 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई स्टार्ट करने का। यहां पे एक ग्राफ ड्रॉ करा, यहां देखो। 10th में आपने पढ़ाई स्टार्ट किया, आप 11th में, आप 11th में इधर है, आप 12th में इधर होता है। हाँ, एनडीए का एग्जाम हर 6 महीने में होता है। तो एक अप्रैल में एग्जाम होता है, एक सितंबर में एग्जाम होता है, फिर अप्रैल में होगा एग्जाम, फिर कब होगा? सितंबर। 19 साल तक एग्जाम दे सकता है। 16.5 साल के बाद बच्चा 11th में होता है, और जब 11th खत्म होता है ना तो सितंबर में उसका पहला अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर सेकेंड अटेम्प्ट, फिर कितना बोला ना, थर्ड अटेम्प्ट। ऐसा 19.5 साल तक अगर एक बच्चा फेल नहीं हुआ या उसको लेट स्कूल में एडमिशन नहीं लिया तो कम से कम 3 या 4 चांस रहता। कितना चांस रहता? अभी हर 6 महीने में तुम उसी चीज को पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक ना एक बार तो एनडीए क्रैक करेंगे नहीं। एनडीए के एग्जाम में क्या क्या आता है बोलो? एनडीए के एग्जाम में क्या क्या आता है? 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 300 मार्क का क्या होता है? मैथ्स। ये हार्ड जाता है। ये 10th, ये 11th और 12th का मैथ्स है, ये हार्ड है। और यहां गैट होता है। गैट में आपको 200 मार्क का इंग्लिश होता है, इजी है ना इंग्लिश। 200 मार्क का सोशल साइंस होता है, और 200 मार्क का सोशल स्टडीज होता है। सोशल स्टडीज पता है ना, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी होता है। 8 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। कितने बच्चे एग्जाम देते हैं? 8 लाख में से रिटर्न एग्जाम कितने पास होते हैं? 8,000। ये पहला स्टेज है हमारा।
8,000 से 800 ही बच्चे 4 दिन के एसएसबी इंटरव्यू में सिर्फ 800 बच्चे ही पास होते हैं। फिर उनका फिजिकल टेस्ट होता है, तो कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? 400 हर 6 महीने में। अल्हम्दुलिल्लाह ये 400 में से 7 से 8 बच्चे मेरे क्लासेस के होते हैं हर 6 महीने में। तो ये हाँ, थैंक यू। मेरा ये बोलने का मकसद है कि बच्चा अगर ये पढ़ लिया, और एनडीए हम लोग नेगेटिव सोचते कि एनडीए पास नहीं हुआ। क्या नहीं पास हुआ? बहुत मेहनत कर लिया, चारों अटेम्प्ट दिया, और वो रिटर्न नहीं पास हुआ, या रिटर्न पास हुआ, इंटरव्यू में रहेगा, फिजिकल में रहेगा, मेरिट आउट हो गया। मेरिट आउट मतलब क्या है? अगर आपका 400 बच्चे ले रहे हैं और आपका रैंक कितना है? 401, तो भी आपको नहीं लिया जाता। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता, सब क्लूच हो गया, लेकिन रिटर्न भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन मेरिट में नहीं बैठा। फिर उसके बाद क्या? इज इट द एंड ऑफ द डे फॉर हिम? नो। अभी वो बच्चा सिर्फ 12 ही हो गया। जब वो ग्रेजुएशन जाता ना, तो ग्रेजुएशन का नाम क्या, एग्जाम का नाम क्या बोलो ना? सीडीएस। 100% इंशाल्लाह वो सीडीएस का एग्जाम क्रैक करता, 100%। रेलवे के एग्जाम क्रैक करेगा। क्या एग्जाम क्रैक करेगा बोलो ना? रेलवे का आजकल मेट्रो का अलग एग्जाम होता है, एक गवर्नमेंट का एग्जाम आता है एसएससी सीजीएल, मालूम है क्या एग्जाम का नाम बोलो? वो एग्जाम भी क्रैक करेगा। तो जो बच्चा 10th 11th 12 में पढ़ाई करता ना, उसके बाद उसको माँ बाप के पैसे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 ही साल अच्छे से पढ़ना है। कौन सा साल? 10th 11th 12th। अगर उसके बाद अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, उधर लेके जाओ। आई होप यू अंडरस्टूड मैं क्या बता रहा। सर के ऊपर से आ रहा क्या? एफकैट क्या होता है? एफकैट, एनीवन व्हाट इज एफकैट? एयरफोर्स में एंट्री करना है ना, तो एफकैट का एग्जाम देना पड़ता है। क्या एग्जाम देना पड़ता है? एयरफोर्स, समय तो रहेगा। हाँ, देखो ये सब उसका एज लिमिट है। ये वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड है ना, जनरल अवेयरनेस, ये पढ़ाया जाता नहीं स्कूल में, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो देयर आर थिंग्स व्हिच इज नॉट टॉट इन स्कूल, पहले से पढ़ना पड़ेगा। कितने लोगों को नीट के बारे में बताया? क्यों मैं नीट के बारे में क्यों बात कर रहा हूं गर्ल्स? नीट से क्या संबंध आता आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का? हाँ, अरे नर्सिंग तो गया, और एक है ना, एक कॉलेज है लिख बोर्ड पे, एएफएमसी। क्या कॉलेज का नाम? जोर से बोलो बॉयज, तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारे लिए 100 सीट है, गर्ल्स के लिए 20 सीट है। एएफएमसी में अगर 600 मार्क्स मिलेंगे नीट में, कितने? तो तुम्हारा एमबीबीएस का खर्चा पूरा गवर्नमेंट लेता है। तुमको एमबीबीएस पढ़ने का रहेगा तो फीस भी गवर्नमेंट ही भरेगा। 4 साल के बाद तुमको डिग्री एमडी करना है तो भी गवर्नमेंट करेगी। तुमको यूरोप में जाके पढ़ना है तो भी गवर्नमेंट देगी, और तुमको पगार भी मिलेगा। 4 साल स्टाइपेंड मिलेगा, 4 साल का डॉक्टर मिलेगा तो तुमको पगार भी मिलेगा, और तुम्हारा आगे का पढ़ाई का खर्चा भी गवर्नमेंट उठाएगा। कितने लोगों ने पहली बार मालूम पड़ा? हाँ, ऐसा उसका नाम है एएफएमसी, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। किधर है ये? किधर है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज? पुणे। इसके अंदर एडमिशन काय के बेसिस पर होता है? नीट के बेसिस पे होता है। काय के पर बेसिस होता है बोला ना? अच्छा, कितने लोगों को मालूम है अभी नीट को कोई एज लिमिट नहीं है? मालूम है ना, आप बीएससी करके भी नीट का एग्जाम दे सकते हैं। देयर इज नो एज लिमिट नाउ। इंडियन कोस्ट गार्ड, याद रखो, पूरा का पूरा गर्ल्स का बैच होता है। ये केरला में एईमला है ना, वहां चलता है। 12वीं के बाद एक कोस्ट गार्ड का एग्जाम होता है। कौन सा एग्जाम होता है? कोस्ट गार्ड। उसके अलग अलग टाइप है। ये बता ना मैं, एसीसी आर्मी कैडेट कॉलेज, हर वो सोल्जर, हवलदार या लोअर रैंक का बंदा रहेगा, उसको अगर आगे चल के बड़ा ऑफिसर बनना है तो इंटरनली एग्जाम दे सकता। उस एग्जाम का नाम है एसीसी। अभी तुमको मालूम है हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ था कोयम्बतूर में, कितने को पता है? सीडीएस रावत का डेथ हुआ था, मालूम है? अरे मालूम है कि नहीं मालूम है? तो वो कहां जा रहा था? वो कोयम्बतूर में एक जगह है वेलिंगटन, क्या जगह का नाम? वहां पे भी ट्रेनिंग होता है आर्मी ऑफिसर्स का। तो पढ़ाई कभी छुट्टी नहीं है, उधर कम ट्रेनिंग होता है, और प्रमोशन के लिए वो एग्जाम क्लियर किया तो भी प्रमोशन होता है। ओके, नाउ ये एग्जाम मैंने बता ना, सचिन तेंदुलकर नाम सुना है सबने? सचिन तेंदुलकर ने भी टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम दिया है। क्या क्या एग्जाम दिया है? कौन से एज तक दे सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम?
42। उसका भी पेपर होता है, उसका भी सिलेबस होता है, और वही चीज रहता है मैथ्स। और 4 चीज आएगा ना तो स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। राइट मीप, राइट मीप, MEEAP। कौन बताएगा 4 चीज क्या है? ये 4 चीज आए तो स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। पुणे में बहुत सारे बच्चे कोविड का स्कूल जाते ही नहीं है, IT वाले नहीं जाते, वो लोग म्यूजिक सीखते हैं, संस्कृत सीख सकते हैं, गुरुकुल का प्रोग्राम करते हैं, कुरान सीखते हैं, कोई स्पोर्ट्स में जाता है, स्कूल जाते ही नहीं। उनको घर में आके ये 4 चीज सिखाया जाता है। व्हाट डज M स्टैंड्स फॉर? मैथ्स। व्हाट डज E स्टैंड्स फॉर? इंग्लिश। एलॉन मस्क, कितने लोगों का नाम सुना है? एलॉन मस्क का नाम सुना है ना? एलॉन मस्क भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता, उसने अपना खुद का स्कूल चालू किया। उस स्कूल का नाम एनीबडी? एलॉन मस्क अपने बच्चों को, कितने बच्चे उसके? 2 नहीं है, 6 बच्चे, एक मर गया, 5 बच्चे, और वो 5 बच्चों को स्कूल चलाता है। स्कूल का नाम है एड एस्ट्रा। एलॉन मस्क को पहचानते ना? हाँ। E stands for English, A stands for? हाँ, A for? एलॉन मस्क E से आता है। A stands for aptitude, लिखो aptitude। A stands for and P stands for psychology। P stands for? कितने गर्ल्स साइकोलॉजी करना चाहते हैं? देखो, इंडिया के SSB सेंटर है पूरे इंडिया में 19, और मिलिट्री के जितने भी SSB सेंटर है, सारे SSB सेंटर में 12 लोग का पैनल बैठता है इंटरव्यू में। उसमें एक साइकोलॉजिस्ट बैठती है। साइकोलॉजिस्ट बैठती क्यों बोल रहा? क्योंकि उन्होंने सब लेडीज को हायर किया। नया एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उस पॉलिसी में कंपल्सरीली हर स्कूल में एक MA क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रखा जाएगा। तो अगर आप किसी को इंटरेस्ट है साइकोलॉजी पढ़ने में, तो बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अरे करेंगे ना साइकोलॉजी? टेल मी अबाउट मी वंस मोर। क्या 4 चीज आना चाहिए जिससे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है? एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड में सब आया रागा। बोलो रागा, जोर से। रा गा। व्हाट इज रागा? रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग एबिलिटी और क्या बोलो ना? स्कूल में नहीं पढ़ाते। कितने लोगों ने BSF सुना है? कितने लोगों ने पैरामिलिट्री फोर्स सुना है? पैरामिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स में BSF आया, CRPF आया, ITBP आया, CISF आया, SSB आया, असम राइफल आया, NSG आया। ये जितने बड़े प्राइम मिनिस्टर के साथ में कमांडोज घूमते हैं ना, अरे घूमते क्या नहीं घूमते? हाँ, उनके पास एक ब्लैक कलर का बैग रहता है, आगे पीछे घूमते। उनके साथ वो सब जॉब के लिए अलाउड है। वो सारे एग्जाम आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, और वो NDA से इजी एग्जाम होता है। अगर एक बच्चा NDA के लिए पढ़ता ना, हाँ बराबर, सलमान खान बॉडीगार्ड, लेकिन वो प्राइवेट बॉडीगार्ड है, ये गवर्नमेंट का बॉडीगार्ड। हाँ, देखो ये सब सर का छूट गया था, सर को मैंने याद दिलाया। पढ़ो क्या लिखा? कमीशन वर्ती स्कीम एंट्री। अभी गवर्नमेंट में नया आया कि अगर आप सोल्जर है और ऑफिसर्स कम है, तो अगर आपको कमीशन को लगता कि यू आर वर्ती, तो आपको SSB का बुलाएंगे। जैसे मैंने बोला ना, जितने भी औकाफ वाले स्कूल में कंपल्सरीली ये चालू करना चाहिए। मुस्लिम ऑर्फनेज में NCC का क्या फायदा? अगर 3 साल बच्चे ने NCC पढ़ लिया तो NCC का C सर्टिफिकेट मिलता है। C सर्टिफिकेट में उसको डायरेक्ट कॉल आता है, चाहे लड़का हो लड़की हो। वो जो अभी जो सर आए थे सुबह, वो NCC से ऑफिसर बने। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? तो NCC हैज टू बी इंप्लीमेंटेड राइट इन द ऑल स्कूल्स। ऑल स्कूल शुड हैव NCC। ये कमीशन वर्दी स्कीम है ना, ये केरला में चल रहा है, एहीमला, कन्नूर। अपने स्कूल के बच्चों को बोलो पिकनिक के लिए ऐसे सेंटर में लेके जाओ, घूमने के लिए भी अच्छा है। और जब देखेंगे ना, अभी ये December 4 में नेवी वीक आ रहा है, नेवी वीक। तो नेवी के जितने भी कमांड एरियाज है ना, वो आपको नेवी के बड़े बड़े शिप दिखाते हैं, तो उससे हमारे बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे। फील्ड ट्रिप एहीमला केरला में है। अगर आप इंस्टीट्यूट अगर मेल करेंगे ना, तो दे अलाउ यू टू सी द एंटायर कैंपस। एक बच्चा भी गया तो बहुत फायदा होगा। ये इंटरनेशनल कंसेप्ट है, ये पढ़ो जोर से। व्हाट इज दिस खदीजा? व्हाट इज एप्टीट्यूड एंड क्या बोलो ना?
अभी बोलो अमर, अकबर और एंथनी, जोर से बोलो। अमर क्या लिखा? अमर। अकबर क्या लिखा? और एंथनी? ये इंटरनेशनल कंसेप्ट है, कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता, हम बच्चे को बुरा बनाते। क्या लिखा? जोर से पढ़ दो, क्या लिखा? नीचे नीचे का लाइन। इट इज ऑलवेज क्या? हमारे पढ़ने के जमाने में हमको कोई मेंटर नहीं मिला, अच्छा टीचर नहीं मिला, हमको किसी ने करीब नहीं किया करके हमारा प्रॉब्लम है। तो जितने भी लीडर्स है उनका काम है कि जिनके अंडर में जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल्स है, टीचर ट्रेनिंग का स्पेशल वर्कशॉप लेना। और मैं एडीसीए की तरफ से बोलता हूं, मैं फ्री पढ़ाता हूं टीचर्स को, मैं फ्री ट्रेन करता हूं। अगर आप मेरे पास उनको भेजते हैं, उनको खाना पीना खर्चा आप देना, पढ़ाने का जिम्मेदारी मेरा, और सर्टिफिकेशन भी देते हैं। बोलो वापिस से बोलो, अमर, अकबर, एंथनी। क्या लिखा ऊपर? पढ़ो ऊपर क्या लिखा? कब हो सकता? जब तुम रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, रिप्लेनिश करेंगे, रिपीट करेंगे, रिवाइव करेंगे, रीएनफोर्स करेंगे। हम उसको क्या बोलते हैं? क्या मरे हुए, जो मरे हुआ आदमी है ना, कब्र से गाड़ के उसको बाहर निकाला, ईसा अलैहिस्सलाम ने किया था, उसको रिजुवेनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो ना, मरे हुए मुर्दे में जान फूकना। ये 7 काम से हो सकता है। और एक तुमको समझाता मैं क्या है। तुमने देखा क्या कार्निवोरस एनिमल घास खाता है ना, गाय बकरी खाते रहती खाते रहती खाते रहती, फिर क्या करती रात में? नहीं, जो खाया ना उसको बाहर निकालते हैं और उसको निकल के खाते हैं, उसको कुछ ही नहीं है। यही पढ़ने का सही तरीका है। नॉलेज मिला उसको बटोरो, उसको रूमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अगर तुम्हारी जिंदगी में रूमिनेशन नहीं है तुम आगे नहीं बढ़ सकते। व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? बोलो ना। हमारा प्रॉब्लम क्या है बच्चों का? एक बार पढ़ लिया बस खत्म। हमको पुराना सबक ही याद करने का, आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बच्चे ने 10th 11th 12th अच्छे से पढ़ लिया ना, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं उसको। 24/7 पढ़ना, 7 days a week पढ़ना, 365 days पढ़ना। हमारा कम्युनिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या लिखा मैंने वहां पे? लिखा नहीं, ये हाँ बोलो ना, ये वर्ड पढ़ो। क्या लिखा? पढ़ो, वर्ड का मतलब तो बताओ। प्रो, जोर से। प्रोक्रास्टिनेशन बोलो क्या है? क्या प्रोक्रास्टिनेशन? आज करने का ना, नहीं कल करेंगे ना। कल आए तो, परसों आए तो, वो नहीं चाहिए, कंटिन्यूस करना चाहिए, प्रोक्रास्टिनेशन निकलना चाहिए। और अभी है ना, अभी कोई ऊपर नीचे नहीं है, अभी इक्वालिटी नहीं है, अभी क्या है बोलो? इक्विटी है, सबको एक बराबर चांस है। अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे नहीं जा सकते। आई एम फिनिश, थैंक यू। व्हाट ऑफ सेकंड? एनी क्वेश्चंस? नो? फिर तो मैं जाने वाला नहीं है। Yeah, you can go. Clap for her. Thank you, sir, for interacting with our student and guiding them to take the exams for the defense forces. And for only 10, 11 and 12 standard, we need to study with our parents' money, and after that need to study with your own money with the government. That very nicely he has taught everything. Thank you, sir. And now Mohsin sir, IAS, Commissioner Revenue Department. Sir, please share your experience and guide our student. I have a small modification I have done at my level. Recently I have attended one program with CELABS. It's an institute in Cochin. I was a trainee in there, one of the participants there. So I just show because it covers all the services, IAS, IPS, Navy or Air Force
army, everybody was there as a participant. I was one of them. So 2 IAS officers and other all Navy, everybody officers were there. So just you can have a look how it is. यारों जी भर के झीले पल लगता है आजकल दौर अपना na 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 यारों जी भर के झीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा यारों जी भर के झीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा है जुनू सा सीने में 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 na 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 na
और ऑप्शन नहीं है। उससे अगर कहीं बच गए तो सबसे अच्छा MBA कर लो, और MBA करने के बाद 99% लोग जो है वो बेरोजगार ही रहेंगे। मैं गलत कह रहा हूँ अनिश साहब? तो मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, उसको भेड़ चाल को छोड़कर अगर हम अपनी चाल चलने लगेंगे कि मेरा बच्चा किस चीज में फिट होता है, उसको अकाउंटिंग अच्छी आती है, उसको कॉमर्स अच्छा आता है, उसको आर्मी में जा सकता है, नेवी में जा सकता है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और अनिश कुट्टी साहब शायद एक बात से अवेयर नहीं हो, जैसे वो कह रहे थे कि अगर आप 10th 11th 12th में 3 years आपने अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कर्नाटक गवर्नमेंट में एटलीस्ट आई हैव बीन सेक्रेटरी ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट, and for some time even social welfare department. From start to finish till PhD, the government is supporting the students. For every step there is a scholarship, fee reimbursement program. You study medical, you study engineering, you go to Indian Institute of Management, you go to any national law college, government is going to support you. Even if you want to do PhD, I think 25,000 we are giving a scholarship for PhD also. So all respects, we are very fortunate in Karnataka that government is supporting in all respects. But सबको हम कहते हैं, आम लोगों को पता है कि नॉलेज इज पावर। जिसके पास पावर नॉलेज है वो उसका फायदा उठाता है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, मैंने देखा है कुछ, मैं आई कैन से फ्रैंकली, नॉन डिजर्विंग लोग, मान लीजिए मदर फादर दोनों टीचर हैं और गवर्नमेंट जॉब में हैं, तभी स्कॉलरशिप उठाते हैं। और गरीब बच्चा जिसको स्कॉलरशिप की सही में जरूरत है, उसको पता ही नहीं है कि स्कॉलरशिप कहाँ से निकालना है, कैसे एप्लीकेशन डालना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना है, तो उसका फायदा नहीं उठाता है। तो अगर हम अपने बच्चों को, अगर हमारे टीचर, हमारे एनजीओ जो है, नवीद साहब भी हैं, काफ़ी बड़ा इदारा है, और भी बहुत सारे एनजीओज हैं और सोशल वर्कर्स हैं, अगर हम बच्चों को बता दें कि आपको ये पढ़ना है, इसके लिए ये फैसिलिटीज मौजूद है, यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकता है। गर्ल्स के लिए जो है मौलाना एजुकेशन फाउंडेशन से स्कॉलरशिप मिलता है। बहुत सारी स्कीमें हैं, स्टेट गवर्नमेंट की सारी स्कीमें हैं, उसका अगर हम फायदा उठा लें तो जो भी कैरियर के जो ख्वाब होता है माँ बाप का, उसको पूरा करने में कोई, मुझे लगता है कोई दुश्वारी नहीं होगी। क्योंकि मैं बताता हूँ, हम लोगों ने जब थे तो इवन वी सेट वट एवर इंडिया में टॉप 20 इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंकिंग हिसाब से, उसको हमने कहा कि हम ऐसे, पता नहीं स्कीम जारी में है कि नहीं, मुझे नहीं पता हाल में, लेकिन हमने कहा कि ऐसे बच्चे अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जाएंगे तो हम उनको 2 लाख रुपए स्कॉलरशिप देंगे, ताकि उनकी फीस हो सकती है, उनकी और भी कुछ ज़रूरतें हो सकती हैं, उसको वो पूरा कर सकें। तो इस तरह से बहुत सारी स्कीमें हम लोगों ने जारी की थी और अभी भी हैं, उसमें कुछ में मॉडिफिकेशन हुआ है मैं जानता हूँ, लेकिन अभी भी सारी स्कीमें हैं। उसका फ़ायदा उठाना अब किसकी जिम्मेदारी है? पहले तो हमारे एनजीओस, टीचर्स हजरात जो हैं, जो समाज के लीडर हैं, और जैसा अनिश कुट्टी साहब ने बताया कि मस्जिदों में भी ऐलान होना चाहिए। हमने भी बहुत कोशिश की कि मस्जिदों में जुमा खुतबे के बाद इस तरह की जो मान लीजिए राइट टू एजुकेशन एक्ट है या स्कॉलरशिप वगैरह की स्कीम आती है, उसकी अनाउंसमेंट भी की जाए। लेकिन मसला ये होता है कि हमारे मौलाना हजरात थोड़ा इसको बहुत शॉर्ट में ले लेते हैं। या स्कॉलरशिप बट रही है, जाके आप वक्फ बोर्ड से कांटेक्ट करें, थोड़ी सी अगर 2 मिनट आप वक्फ इस पर दे देंगे, उसकी जो मालूमात अगर आप दे दें, उसके बाद कहें कि हाँ भाई फलाने जगह वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, अखबारात में देख सकते हैं, तो अगर हम वो करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि हमारी जो है कम्युनिटी को जो है, जो सेंटर ऑफ, हम कहते हैं कि सिर्फ नमाज के लिए हम जाते हैं, और वो सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। क्योंकि आप बाहर में कहीं भी जाइए, मस्जिदें ऐसी नहीं होती हैं, सिर्फ नमाज के लिए नहीं, वहाँ पर कम्युनिटी का सारा काम जो है वो मस्जिदों से होता है। आप लंदन जाइए, अमेरिका जाइए, वहाँ मस्जिदों का काम ही होता है कि वो सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन होती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कम्युनिटी की। आपको कोई लीगल हेल्प चाहिए, आप मस्जिद जा सकते हैं, आपको कोई मेडिकल हेल्प चाहिए, आप मस्जिद जा सकते हैं, किसी भी तरह का आप कोई प्रॉब्लम होती है, कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम होती है, आप मस्जिद जाकर उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। वहाँ पर एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो आपको गाइड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो मैं ही कहना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड का ये जो कदम है बहुत खुशाइन कदम है, और ज़रूरत इस बात की है कि जो है वक्फ बोर्ड जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे वक्फ के इदारे हैं, उनके पास बहुत सारे शादी महल हैं, बहुत सारे चीज़ें फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। बल्कि एक वक्त में हम लोगों ने वक्फ बोर्ड के जरिए भी करीब 100 मसाजिद को भी कंप्यूटर्स भी हम लोगों ने डोनेट किए थे, ताकि वहाँ पर जाके वो अपनी जो है स्कॉलरशिप के फॉर्म भर सकते हैं। आरटी में एडमिशन बच्चों को चाहिए, उसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जो है वो जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। तो बच्चों को चाहिए कि थोड़ा व्हाट्सअप देखते हैं, लेकिन उसके साथ जो कम्युनिटी के लिए क्या जो यूजफुल चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें, और अपने कैरियर पर बच्चों को ज़्यादा ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि वो कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, मैं खुद भी, मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ कि मेरे वालिदैन बिजनेसमैन थे, लेकिन मैं अखबार पढ़ता रहता था, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी, जो भी रेगुलर टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है या और भी पेपर्स हो सकते हैं। पढ़ते पढ़ते मुझे ले आया कि नहीं, मुझे IAS बनना चाहिए।
तो उसके लिए मैंने तैयारी की। मेरे वालिदैन ने मुझे इससे कभी नहीं कहा कि तुम IAS बनो। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई जॉब करना ठीक अच्छी बात है, कभी उन्होंने नहीं कहा कि IAS बनो। लेकिन मेरा यह था कि नहीं, मुझे करना है जिंदगी में तो एक टॉप जॉब पे जाना है। तो उसके लिए मैंने उसकी तैयारी की। और जैसा अनीस कुट्टी साहब बता रहे थे कि आपको 7 डेज 365 डेज पढ़ना है, वैसे पढ़ना होगा फुल डेडिकेशन के साथ। तो मुझे लगता है कि आप जरूर कामयाब होंगे। आप ये नहीं कर सकते कि हाँ मैं दुनिया के टॉप पे जाना चाहता हूं, लेकिन मेहनत जो है वो बिल्कुल 1 घंटा करूंगा, स्कूल से पढ़ लिया, मेरा काम खत्म, मेरी तैयारी पूरी हो गई। तो उस तरह से तैयारी नहीं होती है। जब तक अपने आप को आप डेडिकेट नहीं करेंगे कि भाई स्कूल में क्या पढ़ाया गया उसको आप रिवीजन कर लें, कल क्या पढ़ना है उसको आप थोड़ा सा एक नज़र डाल लें, अगर आप उतना काम कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको एग्जाम के टाइम में जो होता है कि नहीं मैं रात के 2 बजे तक पढ़ूंगा और 2 बजे तक पढ़ूंगी, वो नहीं होगा। कल क्या पढ़ना है उसको एक बार देख लिया, आज क्या पढ़ाएगा उसको रिवीजन कर लिया, उतना कर लिया तो आपका काम आसान हो जाता है। तो मैं ही कहना चाहूंगा कि बच्चों को आप बिल्कुल, आपके अंदर बिल्कुल काबिलियत है, आपको सोचना चाहिए जैसे अभी सुबह से शाम तक जो बताया गया है। और एक चीज बताता हूं, ये सारे कहीं भी आपको ये हो कि नहीं उसको लिए इन्फ्लुएंस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह से शाम तक जो आपको बताया गया है उसमें सिर्फ मेरिट और मेरिट ही काम आता है। आपके पास मेरिट है, सलाहियत है, आप वो उसको उजागर करेंगे तो 100% कामयाब होंगे। और मैं जानता हूं, बताता हूं कि देखिए इसमें देखिए आपने इतनी तैयारी कर ली तो मैं जानता हूं कि आप 100% सक्सेसफुल होंगे। चाहे आपको सीडीएस में कामयाब नहीं होंगे, एनडीए में कामयाब होंगे, एनडीए में नहीं होंगे आप एसएससी में होंगे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में होंगे, उसका फायदा होता है। मैं खुद जानता हूं, मेरे साथ आईएएस की जितनी लोग तैयारी कर रहे थे, अगर उनको आईएएस नहीं मिला या आईपीएस नहीं मिला, जॉब नहीं मिली, जिस प्रोफेशन में वो गए हैं वो कामयाब रहे हैं। मैं बहुत से अच्छे आपको बैंगलोर की एक मिसाल दे सकता हूं कि बैंगलोर में निहाल खदवई रहते हैं, आपने शायद सुना होगा, एनडीटीवी के रिपोर्ट यहाँ पर करते हैं। वो मेरे बाद के एक बैच में थे, वो हमदर्द में थे। तो उसके बाद वो आईएएस की तैयारी नहीं हुआ, आज वो आप एनडीटीवी के बैंगलोर पूरे कर्नाटका में समझिए कि नंबर 1 रिपोर्टर निहाल खदवई हैं। तो इसी तरह से मैंने देखा है, और भी लोग मैं जानता हूं अमेरिका में जो है वो अच्छे अच्छे बैंकर्स हैं। मेरे दोस्त जो आईएएस में काबिल नहीं हो सके वो वहां पर न्यूयॉर्क में बैंकर हैं, कोई दिल्ली हाईकोर्ट में बहुत अच्छे एडवोकेट हैं। बहुत से लोगों मैंने देखा है कि कोई मैं जानता हूं बहुत से मेरे दोस्त हैं वो सऊदी अरब में बैंकिंग प्रोफेशन में गए, वहां पर अच्छे टॉप बैंकर्स में वही माने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप इसकी तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है कि जिस फील्ड में भी आप उसके बाद भी जाएंगे उसमें कामयाब होंगे। मैं ख्याल जैसे अभी अनीस कुट्टी साहब तो अपना डिटेल में नहीं गए, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि आपको एक मानना चाहिए कि आपका करियर जो है कोई जीने की तरह होना चाहिए। मुझे टॉप पे जाना है, टॉप पर मैं नहीं पहुंच पाया तो मैं दूसरे जीने पर रहूंगा, दूसरे जीने पर नहीं तीसरे जीने पर रहूंगा, लेकिन मैं कामयाब होऊंगा। ये नहीं कि टॉप नहीं तो कुछ भी नहीं। एक जो नाउमीदी वाली बात होती है वो गलत होता है। मैं आईएएस की तैयारी करूंगा, आईएएस न सही एटलीस्ट आईपीएस बन सकता हूं, आईपीएस न सही ग्रुप बी सर्विसेज आती हैं, कोई सेंट्रल पुलिस सर्विसेज की आती हैं, आर्मी की आती हैं, रेलवे की आती हैं, उसमें कामयाब रहूंगा। तो अगर आप इस बात को लेकर चलेंगे कि नहीं मुझे अपनी जिंदगी में कामयाब होना है, अपने वालिदैन का जो ख्वाब है उसको पूरा करना है, अपने पास पड़ोस को और दूसरे की मदद करना है। तो जैसा वो कह रहे थे कि हम जो है आजकल इक्वालिटी की बात नहीं करते, इक्विटी की बात है। तो हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में हर एक फील्ड में हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए, चाहे जज का काम हो, एडवोकेट का काम हो, मीडिया में काम हो, या गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो। बहुत अच्छे, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, उसमें मेरे साथ कई लोग जो थे, एक जीशान एक लड़का था आर्मी में, ही वाज फ्रॉम कश्मीर रूरल एरिया बट ही इज नाउ लाइक मेजर। सो there is very much good chances that he will become tomorrow, maybe if his career progresses, he can be Major General of India also. So if you get into a young age of entry, I think you will be top at any point of time. That's what I can say. So I wish all the best to all of you for inviting me and giving this opportunity. But a lot of youngsters are there. If they have any questions from me, my side, I can maybe share some my thoughts or what this. If you have any question. Any questions? Mike, please.
Sir, I am Janatul Firdaus of 10th standard from Knowledge Youth Public School managed by Muslim Orphanage. Sir, I want to become a IAS officer, but I know it's too tough, but I want to work hard for it. But what all the preparations I can do from now to become an IAS officer? See, I'll tell you one thing. First of all, you should remove the myth, it's too tough. It's achievable. If I am standing here, coming from maybe from Patna, 2,500 kilometers far off from this place, on my merit only. If I thought कि भाई ठीक है ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे वालिदैन कोई नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो मैं कैसे आऊँगा? हो सकता था पॉसिबल? No, sir. तो मैं किसी भी चीज को है हिंदुस्तान, देखो कोई भी होता, अगर हमारे दिल में अज़्म है, विल पावर है, तो हम कर सकते हैं. I think I have forgotten one girl name. She has climbed Mount Everest after amputating her leg also. I have forgotten her name. One climber, Arnima. So she has climbed Mount Everest even after amputating both her legs. So how it's possible? You tell me. हम लोग हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग नहीं जा सकते हैं. लेकिन after even cutting her legs, उनका किसी एक्सीडेंट की वजह से कुछ हो गया था. Even then she has climbed Mount Everest, जो highest peak है, जहां पर सांस लेना मुश्किल होता है. तो how it's possible? Will power was there that I can do it. So she has climbed that mountain. तो मेरा ही मानना है कि उसकी देखो, मेरा ही कहना है कि अगर आईएएस आप बनना चाहती हैं तो आपको सबसे मैं नॉर्मली मैं यंगस्टर को ही कहता हूं जनरली कि 10+2 तक आप साइंस पढ़िए. उसके बाद आपको जिस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं वो आपको अच्छा रहेगा. 10+2 के पास साइंस पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा आपको? फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब चीजें, मैथ वगैरह अच्छी आ जाएगा. जो बाद में जैसे अनिस कुटी साहब ने बताया कि आपको मैथमेटिकल एबिलिटी वगैरह जो आगे पढ़ना होता है वो आपके लिए आसान हो जाता है. तो अगर 10+2 अगर साइंस स्ट्रीम से लेके चलें आप, तो बाकी चीजें जो है किसी भी फील्ड में आईएएस भी बनना है तो भी बन सकते हैं. आप 10+2 साइंस पढ़िए, उसके बाद आपको लगता है कि आई एम गुड एट मेरी पॉलिटिकल साइंस, आई एम गुड एट हिस्ट्री, आई एम गुड एट साइकोलॉजी, आई एम गुड एट एंथ्रोपोलॉजी. यू सेलेक्ट अ सब्जेक्ट, do the graduation in that subject, and then you can opt for the UPSC exam or CDS exam or forest exam. So you can do it. Only thing you have to do, devote your full time. See that 3 to 5 years I am doing tapasya, only studies with whatever normal routine. I'm not saying that you have to remove everything. So if you do it, I think it will be easier for you to get to your dream into IAS. Okay, sir. Thank you so much, sir. देखो एक चीज मैं कहूँ, ये कभी शर्म नहीं करना चाहिए कि सवाल पूछने में. अगर सवाल पूछ लिया तो आप 1 मिनट के हो सकता है आपको लगे कि अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आपके जहन में कंफ्यूजन रह गया तो जिंदगी भर आप कंफ्यूजन में रहेंगे. तो 1 मिनट के लिए बुरा बनना अच्छा है या जिंदगी भर के लिए बुरा अच्छा है, आप डिसाइड कीजिए. तो उसी को इसलिए कह रहा हूँ, कहीं भी क्लास में भी मैं ये कहता हूँ बच्चों के साथ कि अगर क्लास में आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप टीचर से पूछिए. आप जब ये आप आदत डेवलप कर लेंगे ना तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और यू विल बी इन ए राइट डायरेक्शन. तो सवाल के लिए शर्माना नहीं चाहिए. शर्म किस बात की है? मैं खुद बताता हूं, मैं आईएएस अफसर हूं, मेरी सर्विस ऑलमोस्ट 26 ईयर्स हो चुकी है, लेकिन मैं दुनिया में हर चीज को नहीं जानता हूं. आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, आई एम स्टिल लर्निंग. फ्यू ईयर्स बैक आई हैव डन MBA. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लर्निंग. मैं अभी भी कहता हूं बहुत सी चीजें आप हो सकता है आप मुझसे पूछे, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे जिस बात का पता नहीं है उसको पूछने में मुझे शर्म नहीं आती है. मैं इतना तो जानता हूं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. My name is Azma. I'm studying in 9th standard. I'm from Knowledge at Public School, managed by Muslim Orphanage. Sir, I want to ask one question. Sir, in what age you passed your IAS exam? It was 27. Okay, sir. Thank you. Okay. My name is Muhammad Hanif. I am studying in 8th standard section, Qatil Islam High School, managed by the Muslim Orphanage. What should we do become IAS?
तो देखो अभी देखो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि देखो अभी तो मैं पहले एक साइंस स्ट्रीम से 10+2 कीजिए, मेरा अपना है, हो सकता है गलत किसी का हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि 10+2 आप साइंस स्ट्रीम से कीजिए। जब आप मतलब साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ अगर आप BA ग्रेजुएशन अच्छे सब्जेक्ट में लेके किया, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आप अच्छा पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको UPSC का एग्जाम देना पड़ेगा। फिर जैसे उन्होंने बताया कि आपको मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग है, इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, फिर इवैल्यूएशन वगैरह है। और एक चीज़ और है, UPSC में एक फर्क होता है, जनरली लोगों को लगता है कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया वो सब है। आप नॉर्मल एग्जाम में क्या होता है, अगर BA में पढ़ रहे हैं, आपने जो पढ़ा है, जो बुक में पढ़ा है, उसको हम एग्जाम रूम में वॉमिट कर देते हैं। डोंट माइंड इट, आई एम टेलिंग यू, वॉमिट। जो पढ़ा है उसको सिर्फ हम उगल देते हैं। लेकिन UPSC के एग्जाम में जब हम लिखते हैं, जो फाइनल मेंस एग्जाम होता है, उसमें वॉमिट करना नहीं होता है, उसमें दिमाग से सोचना पड़ता है, इवैल्यूएट करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। जब वो हम कर पाते हैं तो अच्छे मार्क्स आते हैं। बहुत से लोगों को होता है, मैंने देखा एग्जाम UPSC में देखा उस लोगों को, आप उनको 2 पेज दे दीजिए, वो आपको 1 घंटे में वर्ड बाय वर्ड आपको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन UPSC इस तरह के जो एग्जाम होते हैं उसमें आपको उस पर मार्क्स नहीं मिलते हैं। किसी भी सब्जेक्ट पर आप उसको कैसे एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग से सोचते हैं, ये इंपॉर्टेंट होती है। तो वो अगर आपको बचपन से आदत आ गई कि हाँ हम क्रिटिकल थिंकिंग कैसे है, ये है तो क्यों है, ये कैसे हुआ, कब हुआ, थोड़ा सोचेंगे, इस बारे में गौर करेंगे तो अच्छे से पहले तो आपको 10+2 पढ़ना है, उसके बाद ग्रेजुएशन अच्छे से करना है, और उसके बाद आप जो है एक एम रखना है कि मुझे इस सब्जेक्ट को लेना है एग्जाम में। तो अगर एम रख के चलेंगे तो आप सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे। आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप पहले से तैयारी करते हैं ना कि भाई दिल्ली जाना है तो मुझे ट्रेन से जाना है, ट्रेन में जाना है तो मुझे बैंगलोर स्टेशन जाना पड़ेगा, बैंगलोर से दिल्ली का टिकट लेना पड़ेगा, एडवांस में रिजर्वेशन करना पड़ेगा। तो पहले तैयारी करनी पड़ती है ना, वरना आजकल अगर आप 60 डेज के पहले आपने बुक नहीं किया तो ट्रेन का रिजर्वेशन भी नहीं मिलता है। तो पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे कि भाई मुझे IAS बनना है, UPSC के एग्जाम में बैठना है, तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक। सर हम बच्चों को, पहले बच्चों की एजुकेशन की हालत आर्फनेज की बहुत ही ख़राब थी। अल्हम्दुलिल्लाह द पास्ट फ्यू ईयर्स इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। आज हमारे पास बच्चे, कई बच्चे अबाउट 17 to 18 बच्चे जो है दे आर डूइंग इंजीनियरिंग, मेडिसिन में है, नेम द स्ट्रीम, आवर चिल्ड्रन आर देयर। And also we will motivate them for the public service examinations. And that's the reason they're asking all these questions. And we have tried also in the past few years बच्चों को साइंस स्ट्रीम PUC दे के फिर उनको BA कराए, फिर BA का पूरा आर्ट्स का स्ट्रीम दे के BA कराए। उसके बाद में we put them in IAS के कोचिंग क्लासेस में also in Bangalore. Some of them may not be that reputed institutions. So I want the guidance, because we motivate them, they have got that passion and that interest has come in them. So I just want to know which is the better institution, which is a good institution when after graduation, if they can put, we can put them for 1 year or 2 years of the course so that they can come out with colors. देखिए इसके लिए कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बल्कि चेन्नई में एक मैं जानता हूँ क्रिसेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर एक दे रन ए कोर्स कॉल्ड BA पब्लिक पॉलिसी। तो उनका भी एम यही है कि इस तरह से हमारे बच्चे जो हैं वो सिविल सर्विसेज में आए, तो उसके लिए उस तरह के कोर्स चलाते हैं। फिर बैंगलोर में 1-2 कई इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, तो उसमें कुछ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बल्कि सबसे आप कर्नाटका गवर्नमेंट में आप लकी हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट इज स्पॉन्सरिंग कोचिंग प्रोग्राम। तो उसमें आप कोचिंग प्रोग्राम में आप उनको बिठाएं, उसके बिठाने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी फ़ीस जो है, लिविंग एक्सपेंडिचर जो है, वो सब कुछ जो है डिपार्टमेंट बेयर कर लेगा। तो आपको इस सिलेक्शन करने की प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जो है 4-5 अच्छे इंस्टीट्यूशन आते हैं जो बेंगलोर में हैं या दिल्ली में हैं या धारवाड़ में भी हो सकते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं वो, और बच्चे खुद सेलेक्ट करते हैं कि मुझे मतलब वाजीराम रवि फॉर द नेम से कि भाई उसमें जाना है। तो उसमें अगर सेलेक्ट हो गए तो वो वहाँ जा सकते हैं। बेंगलोर में जैसे कि यूनिवर्सल कोचिंग है या IS बाबा है, इस तरह से 4-5 इंस्टीट्यूशन हैं, वो उसमें लिस्ट में आते हैं। तो उसमें आप उसमें एडमिट कर दें। तो देखिए
कोचिंग में क्या होता है, वो सिर्फ आपको एक बेसिक गाइडेंस देते हैं, बच्चों के अंदर अपनी क्या सलाहियत है उस पर जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। आपको सिर्फ बताएंगे आपको चैप्टर 10 में और एनसीईआरटी की बुक से ये पढ़नी है, उसमें से ये आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन जो बच्चों की अपनी काबिलियत उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। वो गाइडेंस दे सकते हैं, उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर उनका बेस मजबूत है तो उनको कामयाबी ज़्यादा आसानी से मिल सकती है। Yes, sir. There are so many institutions all over India. They're reputed. We don't mind even spending money on them. Private institutions maybe. And हमारे बच्चे totally they come out with दीनी backgrounds आते बच्चे. So we just don't want to put them in some of the institutions where they don't. I mean they're not secured. अभी एक institution है हज कमेटी ऑफ इंडिया बॉम्बे में, तो वहाँ का how is the progress of that institutions? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। देखिए बैंगलोर में नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुंबई में हज कमेटी ऑफ इंडिया है, जामिया में रीजनल जामिया मिल्लिया इस्लामिया में है, हमदर्द पब्लिक स्कूल है, हमदर्द यूनिवर्सिटी वो भी करती है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसमें मोर और लेस देखिए इंडिविजुअल कैपेसिटी पे होता है। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको एक फिट फार्मूला है। कभी क्या होता है, हज कमेटी ऑफ इंडिया में कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, सीईओ आ गया, तो ही इज़ वेरी एक्टिव, तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो लेकिन वो परमानेंट नहीं है। तो इसलिए बच्चों को अगर अच्छा बेस है और उसके बाद एक मॉरलेस एक ठीक ठाक इंस्टीट्यूशन में बिठा दिया तो बच्चे कामयाब हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया इज द बेस्ट और जामिया इज द बेस्ट। बच्चों की अपनी जो कैपेसिटी है वो भी इंपॉर्टेंट होती है उस पर। थैंक यू सर। हाँ, बच्ची को माइक दो। I'm Ummi studying in 9th standard. Sir, I have doubt in IAS. Totally, how many we should exam clear? See, IAS में देखो फर्स्ट स्टेप में होता है प्रीलिम्स एग्जाम। आपने एक फॉर्म फिलअप किया, आपको प्रीलिम्स का जो है जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, उसमें पास करना होता है। उसमें पास कर लिया तो उसके बाद मेंस एग्जाम होता है। मेंस में आपको जो है आपको जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, इंग्लिश पेपर होता है और भी कई सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मेंस एग्जाम आपको सेकेंडरी लेवल होता है, मेंस एग्जाम उसमें पास करना होता है। मेंस के बाद फाइनली जो है आपको पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। तो आपको समझिए कि 3 स्टेजेस में आपको एग्जाम पास करना होता है। प्रीलिम्स का पास करना है पहले, उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट का एग्जाम होता है। उसको क्लियर कर दिया, लेकिन उसमें नॉर्मली बताता हूँ, आपको घबराना नहीं चाहिए। हर साल नॉर्मली 5 to 6 लाख स्टूडेंट्स दे अप्लाई फॉर द यूपीएससी एग्जाम्स, लेकिन एक्चुअली उतने अपेयर होते नहीं हैं क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होती है। उसमें से 2 से 2.5 लाख वो अपेयर होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। उसके बाद 2.5 लाख से मान लीजिए कि 10 से 20,000 जो है नॉर्मली जो है वो मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। 20,000 में से तकरीबन फिर वो नॉर्मली मेंस में पास होने के बाद 2,000 लोग बचते हैं जो पर्सनालिटी टेस्ट में आते हैं। उसमें से करीब 1,000 स्टूडेंट जो होता है वो फाइनली यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। उसमें जो है मान लीजिए कि 100 से 200 सीट कभी आईएएस की होती हैं, 200 आईपीएस की होती हैं, 10-20 जो है वो इंडियन फॉरेन सर्विस की होती हैं, फिर उस तरह से अलग अलग सर्विसेज होती हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज होती हैं। तो उसमें कामयाबी मिल सकती है, लेकिन वही है कि आपको कैसी तैयारी है। मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई कैन जस्ट शेयर यू माई एग्जाम्पल। इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैव टेकन 2 attempts and I got qualified. My first attempt I took in say 1995. Serious attempt I was doing in Delhi. I started in month of January. June I appeared for the prelims exam, but my name was not there in the list. So I went out of my coaching institute because there's a condition in that institute that if you don't qualify, you have to go out. So I went out. But again they gave me that year UPSC brought a second list. In that list my name was there. So I said okay, I'll prepare for the mains exam. I appeared for the mains exam for just preparation of 2 months. I appeared and Allah की मेहरबानी थी, सब कुछ गाइडेंस अच्छे से था. I qualified for the mains exams also. लोग बहुत खुश हुए, कहते you have done very miracle job. कितने short span में 2 months में you have cleared the mains exams also. उसके बाद फिर I went for the personality test. और अल्लाह की मेहरबानी थी कि I qualified in that job also. So within say 1 year and with short span of time, I have cleared all the levels of examination. That was a record. Nowhere they have, at least that institute, this type of thing has happened. But अल्लाह की मेहरबानी थी और कुछ में भी लगता है कुछ preparation was right. तो बहरहाल all those subjects were new. Although I have done MCom,
But I have taken that time in the mains, there were 2 subjects were there, history and Urdu literature I have took. I qualified for this thing. I got a job, but I got a job of Group B services, not in the IAS IPS list. Fine, no issue. In the first year, if you get a job, your confidence is built over. Again, I prepared the same way. Second year, I got the 169 rank in all India. I got Karnataka cadre. So second attempt. But normally for UPSC, they said 3 to 4 years is the average time you should take it. But within first year, I got qualified. Second year, I got the IAS. Huh? Thank you, sir. Okay. So if 1 or 2 questions, because I think other dignitaries they have come, I don't want to waste their time. Assalamu And I am alaikum, here. sir. Naveed Saab, you can call me. I'll be happy to come and discuss with you. No issue. Assalamu alaikum, sir. One. You attended coachings or you studied by yourself? See, in Delhi, Hamdard study circle is there. It's not a regular coaching. They give you a room. There's a food arrangement, boarding and lodging is there, and library is there. They don't give you a regular coaching. You have to do self-study. Because there around 40 to 50 students are there, girls, boys, both are there. You stay together. If you are having dinner or lunch, then also you discuss the same subjects. You are studying in library, you are discussing same subjects. So it's not regular coaching. It was just self-study. और उसमें एक माहौल होता है. If 40-50 students are there, what my fellow student is studying, how I am studying, how I am behind, I am discussing. If I can take guidance from him or he can take guidance from me. So that type of atmosphere was there. So it was not regular coaching. I have never gone for regular coaching. I was there in Hamdard Study Circle and self-preparation. That's what I can say. Sir, in which primary school you studied? I studied in the government primary school. Thank you, sir. I think last question. Yeah. My name is Mohsina. I'm from 10th standard. Yeah. Sir, IAS officer, what work they do? It's very difficult. See, in short, I can say, tell you, in a regular setup, in any district, your birth certificate or income certificate, whatever, or your land records or your development of the cities, everything is done by IAS officer. Your municipal commissioner will be IAS officer, your SDM or assistant commissioner will be IAS officer, your district magistrate or deputy commissioner is IAS officer, Zilla Panchayat, you must have heard Zilla Panchayat, Karnataka we have system, CEO of Zilla Panchayat is IAS officer, and at high level, see, like I was Secretary of Minority Welfare, the whole of Karnataka is my jurisdiction. I can decide what is there for good for minorities or backward classes, or I am in revenue department. The whole of Karnataka, all 30 districts, whatever 31 districts are there, the whole administration, part of it, we control it. So, IAS is called steel frame of India. Politician may come and go, but permanent structure of the administration is run by IAS officer at any level. That's it. So I think. Okay, sir. Thank you so much. One more. I just wanted to share thing, because many of the students are asking how to become an IAS officer, what work IAS officer do, and all that. For your kind information, you know the condition of our community. There is no proper politician or a leader we have in our community. So actually, IAS officers are the people who rules the state. Who rules the state. Because once you become an IAS officer, you will remain there for about 30 to 33 years or even sometimes 35 years. And you will be stick on to that place. As Sir says, the politician comes for 5 years and they goes. There is no guarantee for them. But IAS officers, the guarantee for 30 to 35 years by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. So all prepare for your IAS, rule the state, rule the country. So just to finish off my speech or whatever thing is there, I can give you one small couplet, I can give it to you as a मशालिरा. I can say कि वो हम नहीं हैं कि सिर्फ अपने ही घर में शमे जला के बैठे हैं, वो हम नहीं हैं कि सिर्फ अपने ही घर में शमे जला के बैठे हैं, वहाँ वहाँ रोशनी करेंगे जहाँ जहाँ तीरगी मिलेगी, जहाँ जहाँ अंधेरा है. As a Muslim person, as India responsibilities of this country, we are the person who are going to
light the homes everywhere, wherever there is darkness. So that should be our aim in our life. और तभी हम अच्छे हिंदुस्तानी शहरी हो सकते हैं और एक अच्छे मुसलमान हो सकते हैं. So all the best to all of you, and I am thankful to Karnataka Wakf Board and CEO Parvez Khan and all the team. Chairman Saab is also there, Shafi Saab is also there. I am thankful to all of you for inviting me and giving this opportunity to speak a few words. Thank you. Jai Hind, Jai Karnataka. I just wanted to add, you asked him, na? He said he studied in Hamdard. How many of you know who came first in IAS this year? वो लड़की का नाम क्या जो फर्स्ट आई IAS में? हाँ? देशमुख. Sir, excuse me, sir. Sir, excuse me, sir. I request all the dignitaries to please come on dais. I request Shri PM Chidambaram, Private Secretary to the Minister for Muzrai, Waqf and Hajj, to please come on the dais. I request Honorable Chief Executive Officer Shri Khan Parvez to come on the dais. Sir, thank you very much, sir. Mohammed Mohsin. I request Shri Yaqub, sir, Honorable Member KSBA, to please come on the dais, sir. Yes, sir. Secretary Central Waqf Council is joining us with online. Shri Shadan Zeb Khan. Sir, over to you, sir. I request our guest speaker, Shri Anis Kuti sir, to also join us on the dais. मैं माफी चाहूंगा कि कनेक्टिविटी की वजह से ये तरीका बोलने का अपनाना पड़ा है। इज्जत
चेयरमैन कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड। सर जूम म्यूट कर दीजिए, सिर्फ फोन में बात कीजिए। सीईओ कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड, हमारे इंस्पायरर और मोटिवेटर मोहसिन भाई, यहाँ मौजूद एस्पिरेंट्स जो मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में एक गाइडेंस के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं, और दीगर हाजरीन, मैं इनॉग्रल सेशन में भी मैं मौजूद था और सुन रहा था सारी बातें। वहां ये लगा था कि डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या तरीके और रास्ते हैं, और उस पर बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस हुए। और उस वक्त भी मुझे यही महसूस हो रहा था कि बिल्कुल सिर्फ फोकस करके डिफेंस फोर्सेस की तैयारी कैसे करें, से बेहतर ये होगा कि जब हम तैयारी करने बैठे हैं बच्चे, तो वो सारे इम्तिहानों के बारे में उनको जानकारी मिले। जो अभी मैंने मोहसिन सर को सुना, और ये फिर अच्छा बहुत महसूस हुआ कि सारी इम्तिहानों के बारे में सर ने जिक्र किया बहुत अच्छे से। और यही हकीकत है कि जब आप और हम तैयारी जब करते हैं तो सामने हमारे ये होना चाहिए कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सारे के बारे में हमें जानकारी हो। 2 लेवल्स हैं, एक 10+2 के बाद कौन से एग्जाम्स हैं, और एक फिर ग्रेजुएशंस के बाद क्या क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो आपको अच्छे जॉब्स दिला सकते हैं, अच्छा करियर दिला सकते हैं। सिविल सर्विसेज पे डिटेल बात हुई, बात डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए जो जो चैनल्स हैं उसमें भी बहुत अच्छी बात और डिटेल बात हुई, आप सब ने सुना। जो दूसरे एग्जाम है जो मैं देखता हूं कि थोड़े से कम पब्लिसाइज्ड है, ग्लैमर कोशेंट कम है उन एग्जाम्स का, लगता है वो बहुत अच्छे चैनल्स है वो सरकार में काम करने का और अच्छा करियर बनाने का। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता है, गालिबन हमारे पहले लोगों ने जरूर बात की होगी इस पे, मैं मौजूद बीच में नहीं था, तो इवन एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग रिपीटेटिव मैं बताऊंगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है उनका CGLE बहुत शानदार चैनल है। मेरे दसियों दोस्तों को मैं जानता हूं जो उस चैनल से आकर और फिर ग्रुप बी सर्विसेज में आए, सिविल सर्विसेज ग्रुप बी का स्टेटस लिया, और मतलब फॉरेन सर्विसेज में बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, काफी जगहों पर पोस्टेड है, 12-13 मुल्कों में पोस्टेड है ये लोग, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के CGLE एग्जाम से आए। तो हर जब आप तैयारी करें तो इतनी बात का हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत ईमानदारी वाली तैयारी चाहिए। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है और जताने के लिए किसी को नहीं पढ़ना है, एक बार इन्वेस्ट करना है बस। एक बार अगर अच्छे से हमने मेहनत कर ली, लगभग कॉमन चीजें हैं, वो जनरल नॉलेज है, वो मेंटल एबिलिटी है, वो इंग्लिश लैंग्वेज है, एक कॉमन सी चीजें हैं जो हर एग्जाम में आपको पूछी जा रही है। सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स आप ले लें, CSAT और जनरल नॉलेज ले लें, GS ले लें, आप ले लें PCS के एग्जाम ले लें, आप CGLE ले लें, आप आर्म फोर्सेस के एग्जाम ले लें, एंट्रेंस, NDA, CDS, यही चीजें हैं जो हर जगह आपको स्क्रीन आउट करती हैं। तो ये इतनी तैयारी हमारी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि आप को चॉइस करना पड़े कल कि अब मैं 3 जगह सिलेक्ट हो गया हूं या हो गई हूं और अब मैं डिसाइड करूंगा कि कौन से सर्विस मुझे करनी है। इस तरह की तैयारी करने की जरूरत है जो ईमानदारी से हो सकती है, जो कंसिस्टेंट रहकर हो सकती है। कि आप ये नहीं कि 1 महीने तो खूब अच्छे से पढ़ लिया आपने, 12 घंटे 15 घंटे पढ़ लिए, और उसके बाद आपने कहा कि चलिए 1 हफ्ते का ब्रेक लीजिए। वो ब्रेक तो साल में लिया जा सकता है, लेकिन ये हफ्ते और 10 दिन में ब्रेक नहीं लिया जा सकता। तो ये बहुत डिटर्मिनेशन की तैयारी है, बहुत परसिवियरेंस की तैयारी है, बड़ा फोकस रह के पढ़ने की तैयारी है। और कहा जाता है कि हार्डवर्क का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि हार्डवर्क आपके बदले कोई और पढ़ लेगा। तो पढ़ना, कहा जाता है कि लिखेंगे अगर आप तो आपको याद ज्यादा रहेगा,
तो इसलिए कहा जाता है कि नोट्स बनाना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप नोट बनाए जनरल नॉलेज पढ़कर, या वो फॉर्मूलों का नोट बनाए आप, तो नोट्स बना लेना। और आज के दौर में एक अच्छी बात क्या है, मैं लर्निंग की बात से आपको बताऊं कि इंसान ने जब अपनी तहजीब, अपनी सिविलाइजेशन की जब शुरुआत हुई है, तो हम सुनकर सीखते थे। प्रेस का इजाद जो है, आप जानते हैं कि ये 600-650 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ है। उससे पहले आपको प्रिंटेड फॉर्म में चीजें नहीं मिलती थी, मतलब पढ़कर नॉलेज लेने का कम रिवाज था और सुनकर नॉलेज लेने का रिवाज ज्यादा था। तो आप ये समझिए कि जो हम सुनते हैं वो ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं, और अगर हम जो देखते भी हैं और सुनते भी हैं तो और ज्यादा आपका रिटेंशन और ज्यादा है। आज आप एडटेक के दौर में जी रहे हैं, जब सारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए आपको मुहैया है, बेहतरीन मतलब आपको मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल है, सिर्फ आपको गाइडेंस कहाँ चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। जब अबंडेंस ऑफ सोर्स हो आपके पास, तो ये डिसाइड करना मुश्किल होता है एक नोवाइस के लिए, एक वो जिसने अभी तैयारी शुरू की है कि क्या पढ़े और क्या छोड़ दे। इस बात के लिए आपको जरूर एक गाइडेंस चाहिए कि कौन सा वेबसाइट सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन सी कोचिंग या कौन सा यूट्यूब चैनल आपको सही बातें बता रहा, किसका कंटेंट अच्छा है, कौन सी किताब पढ़ना बेहतर होगा। क्योंकि समय कम है, आप ये समझिए कि जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास 2-3-4 साल का एक वक्फा है, इसी में उन्हें कुछ करना है। उतना ही सपोर्ट फैमिली कर पाती है आपको, या और भी कोई सोर्स आपको कोचिंग कर रहे हैं आप किसी स्कीम में, इतने ही मौके आपको दिए जाते हैं। तो आप अपने सोर्स, जो नॉलेज के सोर्सेज हैं वो डिसाइड करें, ऑडियो विजुअल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करें, सही किताबें चुनने में वक्त लगाएं और सही गाइडेंस, पूरा इंफॉर्मेशन पूरी रखें कि आप ये तैयारी कर रहे हैं, इसी से आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी देंगे, इसी से आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी देंगे, इसी से आपका सीपीओ का एग्जाम भी कवर होगा, इसी से आपका पीसीएस भी होगा, इसी से आपका सिविल सर्विसेज होगा। एक ऐसा अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि आप 3-4-5 चीजों के लिए अप्लाई करें, एग्जाम दे, डेट्स मालूम हो आपको, डेडलाइंस क्या है मालूम हो, ये नहीं हो तैयारी में कि हाँ डेडलाइंस निकलते चले गए। कई जगह वैकेंसीज ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो 3-4 सालों में एक बार आती है। अभी एक हफ्ता पहले ही मैं कश्मीर बात कर रहा था सिविल सर्विसेज पे, तो 4 साल के बाद कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की वैकेंसी अब आई। तो हर साल मौके नहीं आते, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो आप अलर्ट रहने की जरूरत है, सही गाइडेंस की जरूरत है आपको, जो यहाँ आपको मिल पा रही है और जिसका एश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल पा रहा है। और एक अच्छा सर्किल बनाइए। जो मोहसिन सर ने बात कही, बहुत पते की बात की सर ने कि हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमने नहीं पढ़ाई की। हमदर्द स्टडी सर्किल कोई कोचिंग नहीं है, मैं भी वहीं से मुस्तफीद हुआ, तो वो कोचिंग नहीं देता। लेकिन जो सर्किल था हमारा, जो चीजें हम 10 महीने साल भर में कोचिंग में सीखते, वहां हमारे साथ रहने वाले हमें मतलब 10-12 सिटिंग्स में समझा देते थे। तो ये फायदा है आपको ग्रुप स्टडी का, साथ बैठकर पढ़ने का। तो ग्रुप स्टडी करें, अपना अच्छा ग्रुप बनाएं जिनका मकसद एक हो और कोई डिस्ट्रैक्शन वाले लोग नहीं हो। बस सही प्लान करें आप और एग्जीक्यूट करें। मुझे लगता है कि कामयाबी आपके हाथों में होगी, आपके हाथों में चॉइस आएगा आपके पास कि कौन सी नौकरी आप ज्वाइन करें और कौन सी छोड़ दें। इंशाअल्लाह जब आप ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ और अल्लाह की रस्सी को पकड़े हुए, क्योंकि उसकी रजामंदी चाहिए, जब जो आपको कामयाबी होनी है उसकी चाबी वहीं से लगनी है। तो कहीं पर वालिदैन का हक नहीं मारा जाए, किसी का हक नहीं मारा जाए इस तैयारी के दौरान। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, एक बैलेंस डाइट लेते हुए, अपने फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखते हुए आप एक बिल्कुल अगर ये तैयारी का तरीका अपनाएंगे तो बहुत शानदार तैयारी अल्लाह आपको नसीब फरमाएगा। और जहां पर भी, जिस मौके पर, जिस मरहले पर हमारी जरूरत होगी, हम का मतलब ये सारा जो ग्रुप फैला हुआ है, जो हमदर्द से और अलीगढ़ से जो मुस्तफीद होकर एक ग्रुप फैला हुआ है, वो इस बात का हमेशा इस बात के लिए हाजिर है और तैयार मिलेगा आपको कि जहां आपको जरूरत है गाइडेंस की, सपोर्ट की, तो मौजूद मिलेंगे। उनमें से ही एक हम भी हैं, मैं भी हूं, तो आपको मिलूंगा हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने ये मौका दिया मुझे, और बहुत खुशाइन ये काम है। बच्चों के करियर को बनाने से रिलेटेड
मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने से मुताल्लिक ये काम आप कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को, शुक्रिया, जय हिंद। Thank you very much, sir. It's very nice of you. Thank you very much, sir, for your guidance and encouragement to the students. Now we are nearing to the closing ceremony. I I welcome Honorable Chairman Shri Safi Sadi to this closing ceremony of this workshop. I welcome Shri Mohammad Mohsin IAS, Special Commissioner and Secretary, Revenue Department. I welcome Shri PM Chidambaram, Private Secretary to the Minister Muzrai Wakf and Hajj Department. I welcome Shri G. Yaqub, Member, Karnataka State Board of Wakf. And our beloved guest lecturer, Shri Anis Kuti, sir. And see you, sir. And I welcome our Honorable Chief Executive Officer, Shri Khan Parvez, sir. I further request CAO Srimati Shabina Madam to submit the report of the day. Assalamu alaikum. Today, it's a great opportunity for all of you to attend this career guidance program. It is the initiative and brainchild of our chairman and CEO and the team effort of our all Wakf staff, so that this program we have conducted with a great success. In the morning, we started the program with the Kirat, and then inauguration by the honorable dignitaries. Our inauguration was done by M.A. Salim sir, Additional Director General of Police and Special Commissioner Traffic, Bangalore, and Shri Sarfaraz Khan, KCAS, Director Cooperative Audit Department, Bangalore. And Salim sir addressed the gathering, and he commended the Wakf initiative regarding the paradigm shift in the Wakf. Usually, Wakf board is concerned about mutawallis and formation of committee and other things. This is the very pristine initiative, so that our community student can get the career guidance and excel into different fields, especially defense forces. And sir has talked about the uniform services, so that we can enter into uniform services. There are paramilitary services, Karnataka State Police Service, and he has asked about what is the purpose of life. The purpose of life should be make a world better living place. That is the pursuit of happiness. Then he has advocated joining civil services. Then Director Sarfaraz Khan sir also, he told about bringing our student to the mainstream. What Sir Syed Ahmed Khan has did, in the same way, we need to bring our students into the mainstream by excelling into various fields, like entering into NDA exam and other defense forces and uniform services. He said, we need to strengthen our country. Matrabhumi is very pujaniya. We have to, and he has told about the Kurgi. Kurgi people always, everybody is ready to join as defense services. They are, in their heart, they are Sipahi. Like that, we have to join our services. Then our chairman, our beloved chairman,
spoke about Rabbi Zidni Ilma. What Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam has said, Rabbi Zidni Ilma. Islam also propagate that we need to take education and excel into various field. Our Imam is Iman Bhaga Helidru. Iman is ಹುಟ್ಟಿದ ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜಿಸುವುದು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು. After Makkah and Medina, Janma Bhumi is very important, what our chairman has said. Then our resource person, Major General Muttanna sir, he took this lecture and he delivered the lecture on defense services, entering into defense services with the slides. He said, it is not the job, it is the passion to enter into services. Army is mainly about passion and there is no reservation, and it is the development of comradeship. And there is, after the joining into services, after retirement or after the short service commission, you can enter into KS or other services by reservation also. KS provides reservation, KPSC. Then our next resource person, Anis Kutti sir, who is called by the student community as a mathematician. He told about us about how mathematics is important to excel into to enter into the services like defense services. After 12th standard, you can take up CDS, SSC, Technical, JAG, CLAT and other services like Territorial Army also. After JEE NEET exam, technical entrance scheme is also there. So after that, our Mohsin sir, he also spoke about how to excel into the services, enter into civil services, be an IAS officer. Our masjid should be an information center. In London and other countries of the world, masjid is used as a information center, so that our student can get to know how to prepare for the exam and other things. So after that, our CWC, as you have heard, CWC secretary also spoke you about and motivated you people how to prepare for the examination. And now with this, I'm going to conclude my report, and private secretary, Ministry of Mujrai and Wakf, Hajj and Wakf Department. He is a KS officer. He is private secretary to Chairman, Minister Mujrai and Wakf. He has done his MSc from Mysore University, and basically he is a Deputy Commissioner of Commercial Tax, was a PS to Education Minister, and now he is PS to Mujrai, Hajj and Wakf Minister. We would like to ask sir to share his experience and few words. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅನಂತರ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯುವಜನರ ಹಾಗೆಯೇ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಜನತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಯುವಜನತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯು ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಜನತೆಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಜನತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ತಾವು ಬಹಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಸಭೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದವರೇನೆ, BS ರಾಜು ಅಂತ. ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಕಮಾಂಡ್, ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್. ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಅನೀಸ್ ಕುಟ್ಟಿ ಸರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್. ಸೊ BS ರಾಜು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಜನ. ಆ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ದಿನ ಆ BS ರಾಜು ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹುಚ್ಚನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಂತವ್ರು. IAS ಮಾಡಬೇಕು, KAS ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ, IASಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ IAS ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರೆಗೆ ಹೋದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದೆನ್ ವಿ ರೋಟ್ KAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಸಮಾಜವನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಎದುರು ತೊಡರುಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಹಸಿನ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ, ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೀರಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ತಾವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಬರೀ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮುದಾಯದ ಯುವಜನತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ CEO ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಈ ತರ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ. ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, CEO ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ UPSCಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ರು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ರು, there are various fields like KS ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಸರ್ UPSCಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ರು KS ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು UPSC ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ದೆನ್ SSB ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಹ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋದೆ. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್
to have this career guidance program. ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ career guidance program ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ would have been a different thing ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So we are very thankful to our chairman and CEO so that this opportunity ನಿಮಗೆ ಈ opportunity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So we are thankful to sir. ಈಗ ನಮ್ಮ MP ಸರ್ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Honorable MP Shri Nasir Hussain sir, Honorable MP Rajya Sabha Shri Nasir Hussain sir is joining us online. Sir, over to you, sir. अपने आप को ये
Thank you very much, sir. Our guest speaker, Shri Aris Kuti sir, wants to share some views. Actually, the one point, sir, Parvez sir was talking about, I just wanted to miss. मेरा एक advice है सबके लिए कि जब डिग्निटरीज बैठे ना, क्यों ना हम लोग जैसा हमदर्द है, जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक सेंटर औकाफ में स्टार्ट करें, औकाफ बोर्ड में, and we can name it as APJ Abdul Kalam Center. My suggestion, and there will be a lot of people who can help to form a career counselor center. And just like ma'am, you were saying, you missed out SSB. Even APJ Abdul Kalam missed out SSB, but his teacher, who was an astrophysics teacher, he helped him to become an astrophysicist. So career guidance ये बहुत important है, जो hand hold करके लोगों को आगे लेके जाएगा. जैसे सर ने बताया ना, मैं उस क्वेश्चन पूछ रहा था कि IIM कौन टॉप किया, who topped UPSC? A lady called Sharma, क्या नाम था उसका? And where did she pass from? Jamia Millia. The Jamia Millia center में she was studying. So we want to make a circle where all good teachers, good faculty, good students can come, and they will study for all competitive exams. And one more competitive exam I forgot. किसी ने अगर कॉमर्स लिया हो, आफ्टर 12th एक बोर्ड है IIM. How many of you know about IIM? SSC CGL तो मैंने बताया था. IIM किसी को मालूम है IIM क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. इंदौर में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, जहां हम 12th के बाद अगर एग्जाम देंगे ना, तो 4 कंट्री का डिग्री मिलेगा. कितने कंट्री का? हाँ, IIM इंदौर का मिलेगा, BBA MBA प्लस US UK एंड जर्मनी. अभी मैं दुबई में था, कल मैं शबीना मैम से भी बात कर रहा था. सिर्फ इंडिया में नहीं, अब्रॉड जाने के लिए भी बहुत सारे एग्जाम्स है. GRE, GMAT, TOEFL और ये अभी एसेट करके एक एग्जाम है, SAT, MAT. इन सबकी तैयारी जो है ना, औकाफ बोर्ड के सेंटर से होना चाहिए. इसलिए मेरा क्या भी कंट्रीब्यूशन है, मैं तैयार हो जाने की. चलो, और उसका एक बुनियादी रस्म डालना चाहिए. Once again, thank you very much, sir. I request G. Yaqub, member Karnataka State Board of Wakf, to share his views. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ CEO ಸಾಹೇಬರು, ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬರೀ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ವಿವರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಟೈಪು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆರಿಸ್ ಕುಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತಿದ್ದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಕ್ಫ್ ಮಸೀದಿ, ದರ್ಗಾ, ಈದ್ಗಾ, ಖಬ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಬರೀ ಇದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 4-5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಶ್ರೀ ಶಾಫಿ ಸಾದಿ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದಂತಹ ಮುಹಸಿನ್ ಸಾಹೇಬರಿದ್ದಾರೆ. CO ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅನೀಸ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ನೇಹದ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಚಿದಂಬರ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆದಂಥ ಯಾಕೂಬ್ಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ पूरे हमारा स्टूडेंट्स, ये तो बहुत अच्छा एक प्रोग्राम था. उसके साथ साथ हमारा अनीस कुटी साहब अभी एक ये बता रहे थे एक कोचिंग सेंटर का बारे में. ऑलरेडी हमें
लालबाग का बड़ा मकान में कोचिंग सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का संघीय बुनियाद भी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 30,000 स्क्वायर फीट में IAS, CDS, NDA, IES, CAP, IFS, CISF, ESI, CMSC, CGSC ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है अभी जो हमारा हजरात ने आपका सामने रखे, ये पूरा एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक पहली बार हमारा कर्नाटका वक्फ बोर्ड का तहत इंशाअल्लाह उसका काम भी जो प्राइमरी काम होना है वो को भी शुरू हो गया। अल्लाह का फजल से इंशाअल्लाह मुकम्मल होने का आप सब दुआ करना भी है। हमारा जियाउल्लाह शरीफ साहब एक 15 करोड़ रुपए, हमारा वक्फ बोर्ड का भी पैसा नहीं, बोर्ड और गवर्नमेंट का भी पैसा नहीं है, जियाउल्लाह शरीफ साहब एक 15 करोड़ रुपए इसके लिए वो कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने खर्चा करेंगे। उसके साथ साथ एक 5 साल 10 साल उसको चलाने का 10 करोड़ अलग भी रखो उसका। एक अभी हमारा हर एक जगह में भी क्या हो रहा है बोले तो स्कूल कॉलेज वगैरह सब हमें बनाते तामीर करते हैं, लेकिन तो उसका वो फंक्शनिंग करना है उधर वो चलाना है, वो बहुत बड़ा जिम्मेदार है। मुझे भी हमारा मैं भी याकूब साहब बहुत हमारे मदरसे में सब एक 1200 स्टूडेंट्स इधर बेंगलोर में है, उनको 12 लाख रुपए एक मंथली हमें एक्सपेंस करना एक्सपेंडिचर है, बहुत भारी होता है वो मंथली 12 लाख रुपए खर्चा करना। वैसा 72 लाख हमारा कर्नाटक पूरा कर्नाटक मदरसा का हमें अभी तो खर्चा करे, लेकिन तो बहुत बड़ा ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಅದು। ಬರೇ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 72 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಖರ್ಚು ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ। ನಾನು ಈ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸೈದೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ, ಖರ್ಚು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಮ್ದೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ। ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ जियाउल्लाह शरीफ और कोटिदार अल्लाह ಅವರಿಗೆ दीर्घायुष्य आफियत ಕೊಡಲಿ, अल्लाह कबूल अता फरमा। दुआ भी करना जरूरी है, इसलिए मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ, कर्नाटका वक्फ बोर्ड ऑलरेडी वो शुरू करे इंशाअल्लाह, एक 1.5 साल का अंदर इंशाअल्लाह हमारा पूरा बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाता इंशाअल्लाह। पूरे हमारा कर्नाटका जितना स्टूडेंट्स का पूरे का ख्वाब थे, वो मेरा भी ख्वाब थे, पूरे कर्नाटक का 90 लाख मुसलमानों का भी ख्वाब थे इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, हमारा मोहसिन साहब हमारा एडमिनिस्ट्रेटर थे वक्फ बोर्ड का और बीजापुर का DC थे, हर एक जगह में भी DC भी बन चुके हैं। मैं आपको एक मोहसिन साहब का सामने बताना ज़रूरी है, अभी हमें IAS IPS जो KS ऑफिसर्स पूरे हमें बनते, लेकिन तो हमना IAS IPS बनने से ज़्यादा हमारा काम में खुलूस और नियत होना सख्त ज़रूरी है। खुलूस और नियत के साथ करना है, खुलूस और नियत का बीच हमें ये पब्लिसिटी का ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं मोहसिन साहब जो वक्फ बोर्ड के लिए और हमारा कम्युनिटी के लिए कर चुके हैं, खिदमत का अंजाम दे चुके हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह में सब अप्रिशिएट करना है, आपका सामने में इज़हार करना। ये टाइम में मैं आपका सामने नहीं चाहूँगा, लेकिन तो अल्हम्दुलिल्लाह उतना बेहतरीन काम उनका पीरियड में भी होगा। DCO के भी जो करना है वो करें इंशाअल्लाह, अल्लाह उनको खैर जज़ा अता फरमा। मैं दुआ भी करता हूँ। ऐसा IAS IPS KS आप ಯಾವುದೇ ನೀವು ಆಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು। ನಾನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಸಂಪ್ರೀತಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು। आप आज इधर से निकलने का टाइम हमारा CO साहब बहुत वाक़ा पढ़ के एक प्रोग्राम करे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं CO साहब को बहुत दिल का गहराई से मैं शुक्रगुजार था, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं था कल से क्या है करके। मैं चिदंबर साहब को परसों ಒಂದು 20 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, 20 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಏನೋ CO ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು। ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದರು, ಏನೋ CO ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು। ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು, 3 ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ
ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಬರೇ CO ACO ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ನಾನಿಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೆನೆದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು CO ಸಾಬ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿನ SEO ಇರಲಿ, CAO ಇದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ASಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಾವು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಡಿವಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊಹಸಿನ್ ಸಾಬ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೊಹಸಿನ್ ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಮೊಹಸಿನ್ ಸಾಬ್ರಾಗಿ IAS ಆಗೋಕೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ CO ಸಾಬ್ರು ಮತ್ತು ಚಿದಂಬರಂ ಥರ KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗೋಕೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಅನೀಸ್ ಕುಟ್ಟಿ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಒಬ್ಬ ಏನು ಟ್ರೈನರ್ ಆಗೋಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಯತ್ ಮತ್ತು ಹುಲೂಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ತಲುಪ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೀವು ನಾನು IAS ಆಫೀಸರೇ ಆಗಬೇಕು, IPS ಆಫೀಸರೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಯತ್ತು, ಛಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಚಾಲೆಂಜಿನೊಂದಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೇರಾ ಕನ್ನಡ ಮಾಲೂಮ್ ಹುआ क्या? क्या मालूम हुआ? उसका उर्दू बोलो. नियत पाक रहा था. हम इधर से बाहर जाने का टाइम क्या प्रतिज्ञा को क्या बोलते हैं? इरादा ना, ये कच्चा उर्दू वर्ड बोलो करके इरादा करके मुझे मालूम. शपथ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು. ओत लेते ना उसको क्या बोलते हैं? नियत. अच्छा, एक नियत के साथ इधर से निकलना. अज़ाइम. ओह माशाल्लाह, अज़ाइम लेके जाना है. जाएंगे ना इंशाल्लाह. नियत और खुलूस से साथ आप IAS बनो, IPS बनो, आलिमा बनो, आलिम बनो, हाफिज बनो, जो भी बनो, पुलिस इंस्पेक्टर बनो, लेकिन तो नियत और खुलूस के साथ ये कम्युनिटी का साथ मैं रहूंगा. इंशाल्लाह करेंगे ना वैसा? इंशाल्लाह हम कामयाब अल्लाह देते इंशाल्लाह. ये पूरे देखने वाले करने वाला ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕಾಮಯಾಬ್ ದೇತೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಕಾಮಯಾಬ್ ಬತಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ CO ಅವರ ಮತ್ತು ಟೀಮಿನ ಒಂದು ನಿಯತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ. ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ, ಯಾರು ಬಾರದವರಿಗೆ ನಷ್ಟ, ಬಂದವರಿಗೆ ಲಾಭ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ನಿಯತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. हमारा मीडिया वाले से मेरा गुजारिश है, बहुत अच्छा हाईलाइट करना है ये प्रोग्राम को इंशाल्लाह. ओके, आपको भी शुक्र अदा करता हूँ, मोहसिन साहब को और हमारा ಚಿದಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ರಿಯಾಜ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಜ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಟಾಪಟಿಯೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೆಯೋಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ಅವರ PS ಆದಂತಹ ಚಿದಂಬರ್ ಅವರು. ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿದಂಬರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಇವರೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ PS ಪ್ರಪೋಸಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮೂಲ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿದರು, ಓಕೆ ಅದು ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಹಳೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು. ರಿನಿವೇಷನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 1 ಕೋಟಿ ಕೇಳಿದೆವು, 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ರಿನಿವೇಷನ್ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಕೆಲಸನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಇನ್ನೂ 1 ಕೋಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಒಂದು PS, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಚಿದಂಬರ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಿಗಾಗಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಯಾಕೂಬ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ, ನಮ್ಮ CO ಮತ್ತು ACO, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ವಾಖಿರ್ ದಅವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋರು ತಾವೇ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆರ್ಫನೇಜ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ತಮಗೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿರವರಿಂದ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀ ನವೀದ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆರ್ಫನೇಜ್. ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಕೋರ್ಕೊತೀವಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾ ನಾಮ? ಶ್ರೀ ನಜೀರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊತೀನಿ. इधर है सर. कौन सा आपका? मौलाना आजाद स्कूल KR पुरम. श्री निसार. ನಿಸ್ವಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಹಜರತ್ ಮುಹೀಬ್ ಶಾ ಹಮೀದ್ ಶಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮುಹೀಬ್ ಶಾ ಹಮೀದ್ ಶಾ ಕಾಲೇಜ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಇಬ್ರು ಬನ್ನಿ. ಶುಯೇಬ್ आओ. मैडम कौन हो? मौलाना आजाद स्कूल KR पुरम. बनी मैडम. अभी कौन? ಬಾಕಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟಕ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀ ಖಾದರ್ ಶಾ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈಗ 6 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ಫುಲ್ ಓಲ್ ಡೇ ಇಷ್ಟು ಈ ನಡೆದಂಥ ಈ ಬಹಳ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೇರಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾನು ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ಆಯುಕ್ತರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹಸಿನ್ ಸಾಹೇಬ್ಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ, 4 ಅಡಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ ವಕ್ಫ್ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ ಸಾಹೇಬರು ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ.
ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಯಾಕೂಬ್ ಬಸ್ನಗರ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ತರಬೇತುದಾರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅನೀಸ್ ಕುಟ್ಟಿ ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಖಾನ್ ಪರ್ವೇಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಚೇರ್ಮನ್ಗಳಿಗೂ, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೂ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೋಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು, ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಡೇ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. National anthem inquiries begin. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. जय हिंद. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೇವಿಸಬೇಕು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. All students to come near the dais. All students to come near the dais, please.